Odisha. Electronics and IT, Government of India, Ashwini Vaishnavji. May I request the host team of NCI, Shri Shrikant Shekhar Sahu, to escort onto the dais. As a guest of honor, we have Honorable Minister Forest, Environment, Panchayati Raj, Drinking Water, Information and Public Relations, Shri Pradeep Amad, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Mananiya Mukhya Atithi, Samasta Sammanita Atithi Manu Konurod Karibi. Kadashchit Kalindi Tata Vipina Sangita Karavo Bodabhini Nari Badana Kamala Swada Madhupa Rama Shambhu Brahma Surapati Ganeshaya Chitapado Jagannatha Swami Nayana Pathagami Bhavatume Jagannatha Swami Nayana Pathagami Bhavatume. A moment of absolute pride and honor as the Honorable Chief Guest, Honorable Union Minister Shri Ashwini Vaishnav. Nirvikhnam kuru me deva sarvakaryesu sarvada lambodara namastubhyam satatam modaka priya nirvikhnam Deepan Jyoti Param Brahma Deepan Jyoti Janardana Deepan Jyoti Harit Papam Puja Deepan Namastute Puja Deepan Namastute Puja Deepan Namastute. Thank you for the beautiful rendition. May I request Chief Executive, NCI, Shrikant Shekhar Sahuji, to please escort all the dignitaries onto the dais. Can we have a big round of applause for the Honorable Chief Guest and our guest of honors? A red letter day for NCI family to have such distinguished dignitaries for the National Summit on Climate Change and Developing Resilience in Odisha. Presenting bouquets of fresh flowers and Angavastra is an age-old practice of the land, especially when you have such special guests on the dais. Monrut Karibi volunteers Mananku, bouquets of Angavastra ni Manchakwasibe, and may I request Shrikant ji to please do the honor of presenting bouquets and Angavastra to all dignitaries. A truly special day, some very special guests on dais, and we are presenting fresh flowers. Chief Executive NCI, Shrikant ji presenting Angavastra and bouquet to Chief Guest and Inaugurator, Shri Ashwini Vaishnav ji. And to Honorable Guest of Honor, Honorable Minister, Shri Pradeep Amad ji. To Honorable Member of Parliament, Shri Sujit Kumar ji.
and to Honorable Advocate General Odisha, Shri Ashok Kumar Parijaji. We cannot thank the esteemed dignitaries enough for being here and making this day truly special and successful for NCI family. Thank you, Shrikant Shekhar Sahu, for doing the honors to the safe existence of 7 billion humans and countless species of this planet. That is the reason NCI family has curated, designed this national summit, where we have thought of bringing together all major stakeholders whose dedicated collective efforts may restore the ecological balance we so need. Time for the formal welcome address, and may I request Advisor, NCI family, and MD Breathe Green, Durga Prasad Mishra ji, to do the honor, please. Good morning, ladies and gentlemen. At the outset, on behalf of Nature Care Initiative family, I take this opportunity to welcome all of you to this August gathering. As the program title suggests, the National Summit on Climate Change and Developing Resilience in Odisha. Friends, you will all agree with me that each and every organism created in this earth by Mother Earth is only to protect the interest of one organism, that is the supreme creation of Mother Nature, that is human being. But we, as a human being, have been instrumental for destroying the nature, eliminating the ecological issues, and creating all sorts of problems. In turn, the Mother Nature returned with the wrath of climate change. And hence we are having the cascading effect we are facing in day in and day out. Friends, we are sitting in a clicking time bomb. Time is slipping away from our hand. Therefore, it is urgent to sit, discuss, deliberate, and take drastic steps, yet effective steps to counter this menace. Under this emergent situation, we at Mother Nature Care Initiative, which is a national level volunteer organization, conducting this program involving people from all walks of life. I have been entrusted to welcome the guest who does not require any introduction, because all of them are respected personality in public platform. However, still for the benefit of one and all, I take this opportunity to welcome our esteemed guest one by one. First, let me welcome our chief guest and inaugurator who required no introduction in Odisha. Though he hails from Jodhpur, he always been the boy next door to the people of Odisha. His service to the people of Odisha during his tenure as a district magistrate of Balasore and Cuttack is being remembered by the people of all walks of life. He is an IIT Kanpur alumni. He has completed his MTech in Electronic Communication Engineering before securing 27th rank in All India Administrative Service. He is also an MBA from the Wharton School of University of Pennsylvania. You'll be surprised. During super cyclone days, he is the man who managed to collect the data related to the real timing and place of cyclone. Very few people knew this. By collecting data, the government of Odisha took safety measurement and protected huge number of people from the wrath of Mahabatya. He has one more feather to his cap. At the young age of 33, he became the Deputy Secretary of PMO under the Honorable former Prime Minister Sri Atal Bihari Vajpayee. After a successful career as a civil servant, he successfully saved his career in corporate sector and reached to the pinnacle of success. His exposure to public, private and corporate sector made him multifaceted, flexible yet proactive professional who believes in delivering the success. His pleasing personality, astounding capabilities and Midas touch made him a man with substance, and that catch the imagination of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji like a warrior
in sabbatical. He was called to join the Member of Parliament in 2019 as Rajya Sabha, almost unopposed. And in the year 2021, the Honorable Prime Minister again reposed faith in him and given him responsibility to have heavyweight ministry in Government of India, that is Cabinet Minister of Railway as well as Communication and IT and Electronics. His presence, deliberation will definitely help our organization as well as attendees to take the message to the grassroots regarding the climate change. Ladies and gentlemen, join your hands to welcome our very own Sri Ashwini Vaishnav, Honorable Cabinet Minister, Government of India. Our next guest, the guest of honor, requires no introduction. He is our beloved Pradeep Bhai. He is one of the most capable minister and politician who has the capability to turn his political rival into friend. He is a man from Bauh district, completed his post-graduation LLB under Vanja Bihar University, Barampur, and a lawyer by profession. He was so popular in his constituency that since 2000 till now, he is continuously being elected from the same assembly seat. His grasping power of subject matter, his knowledge in all sphere, and his acceptability to all the people across the party line made him a Speaker of Odisha Assembly in year 2007, almost unopposed. With his capability of handling critical issue, Honorable CM Sri Naveen Patnaik reposed faith in Sri Amat, and he was inducted as a Minister of Finance and Public Grants in 2014. In the year 2022, he was inducted to the cabinet in an important portfolio. He was inducted in cabinet as a Forest and Environment, Panchayat Raj, Drinking Water Information Public Relation Officer. Now being a Minister in Climate Change, he has a greater responsibility for the state of Odisha, and we are confident that his knowledge in all spheres will help our organization as well as our state to tackle the climate change issue more predominantly. Ladies and gentlemen, please welcome Honorable Sri Pradeep Kumar Anar Amat, Minister of Cabinet, Government of Odisha. Amongst our guests, I welcome Sri Sujit Kumar, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha. Sri Kumar has been a source of inspiration to our organization since our inception. He has an impeccable track record as an engineer, a lawyer, bureaucrat, as a policymaker. He loves to work silently, without the glare of media. Yet his footmark was visible in most of the policy-making steps by the government. His footprints were quite visible in almost all the fields, be it sports. Sri Sujit Kumar spearheaded SDC Cup 2020, inaugurated by Sri Naveen Patnaik, to bring together indigenous youth of Odisha to play competitive football at the district and state level, involving over 10,000 tribal youth and women category in the 9 tribal districts. He has many feathers to his cap, which includes child-friendly constituency with UNICEF, Kahandi dialogues. His contribution to legislative engagement is also noteworthy here. But the most important contribution to Sujit Kumar is developing startup ecosystem in the state of Odisha. Sri Kumar has been at the forefront of the state, helping foster entrepreneurial spirit amongst the youth, especially women, encouraging them to pursue entrepreneurship. To promote the startup culture and the ecosystem of Odisha, he continues to engage, train, mentor the students and entrepreneurs in the area of ideation, business strategy, startup laws, and entrepreneurial finance. As a multifaceted technocrat, politicians, moreover, as an astute environmental lover, he always been the guidance factor for our organization, and I'm sure we all will be benefited during his deliberation. Please join hands to welcome Sri Sujit Kumar, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha. Last but not the least, I take this opportunity to welcome Advocate Ashok Kumar Parija ji, the Advocate General of Odisha, as a distinguished speaker. Sri Parija is amongst very rare breed of legal luminaries who understand the law, not only helping the government but helping the common man. We all have seen his distinguished career as a chairman of Bar Council of India, in the apex regulatory body for the legal profession in 2011 and 2012.
member of Bar Council of Indian Delegation to United Kingdom and Australia, as a senior advocate of Orissa High Court, as an Advocate General of Government of Orissa. Everybody knows Advocate Parija as a legal practitioner, superb orator, but very recently one more feather added to his cap. He joined as a new Chancellor of KIT Deemed University in the month of September. I hope this August gathering will take the benefit of Advocate Ashok Parija's presence in this summit and get some clarity on the climate change law as is being implemented and changing day by day. I once again welcome all of you esteemed guests, policymakers, eminent scientists, industry leaders, and all the contributors without whom the summit would have been a distant dream. Thank you everybody. Thank you. Thank you much, Shri Mishra, for the wonderful words of welcome. Since 2014 till date, NCI, that is Nature Care Initiative, has been working relentlessly, collectively, to ensure that our planet is safe. And this national summit, where we have so many distinguished dignitaries on the dais, and we are all waiting to hear from them, speaks about the success of this family and the result of our efforts. May I now request Chief Executive, NCI, Shri Shrikant Shekhar Sahu, to set the context and address the House. Thank you. Shri Pradeep Amma, Sammanita Atiti, Shri Sujit Kumar, Sammanita Atiti, Shri Ashok Parija, ଓ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରକୃତିର ଡାକରାରେ ଆସିଥିବା ଏ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଅଭିନନ୍ଦନ। 2014 ମସିହା ସ୍ଥାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମାଜସେବୀ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କର ମାନସ ମନ୍ଥନରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ନାମକରଣ ଦିଆହେଲା ଶିଶୁର ପ୍ରକୃତିକି ସିଏ ଭଲ ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାର ଆନନ୍ଦରେ ନାଁ ରଖିଥିଲେ ନେଚର କେୟାର ଇନିସିଏଟିଭ। 2014ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ମହାନାୟକ ଏବଂ ଏ ସଂସ୍ଥାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 2013 ମସିହାରେ ସଂସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବା 14ରେ 13 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ହାତୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଆବେଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଥିଲେ କି କିଭଳି ହାତୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ରେଳ ଚଳାଚଳରେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ, ସେଭଳିଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶକକୁ ମୁଁ ଏଠି ନମନ କରୁଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଥିବା NCI ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଭାବିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ମଦର ନେଚର ପାଇଁ ଆମେ ମା ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନେଉଥିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାଗଜ, ତା ପାଇଁ କେତେ ଗଛ କଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନେଚର କେୟାର ଇନିସିଏଟିଭର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ କି ଆମେ ଯାଇ ଭେଟିବା ଏବଂ ଯେତେ ଆମର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉଠି ସବୁ ଆମର କାଗଜର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ। ସେ କାଳରେ ଆମର ଯିଏ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା ମହାଜନ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଗ୍ରହ ବ୍ୟକ୍ତ ବି କରିଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା ମହାଜନ କି ଡିଜିଟାଲ ପେପର କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେବ ଏବଂ କାଗଜର ସଂଖ୍ୟା କମିବ। ଆପଣମାନେ ତା ଏବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ସେ କାଳର ପ୍ରୟାସ ଆଜି ବୋଧେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ NCIର। ପ୍ରଦୂଷଣ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସହମତ ହେବେ। ଆଉ ଜଳ ଯଦି ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ କେବେ ବି ଆମେ ତାକୁ ସହିପାରିବା ନାହିଁ। ନେଚର କେୟାର ଇନିସିଏଟିଭର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଗୋଟେ
सामाजिक नैतिक बोधता थिबा एक दल प्रतिष्ठा कले जो 16 जणिया गोटे दल गठन हैला एवं भारतर विभिन्न कोण अनुकोण रे जल प्रदूषण को रोकिबा पई छोट छोट प्रयास करा गला एवं स्थानीय लोक माने जल प्रदूषण को केमिति रोकी पारिबे एवं जल प्रदूषण कम केमिति हेबो ता पई हमर प्रयास से दिन रु आज पर्यंत जारी रही सेति पई मध्ये मु समस्त कर्मकर्ता को अशेष अशेष धन्यवाद दूची। आजिकाली केंद्र सरकार राज्य सरकार समस्त मिलित उद्यम रे आपण माने देखुथिबे हमर दूरदर्शन रे प्रचार समिति प्रचार प्रसार होउची जे बाह्य मलत्याग को समस्ते धीरे धीरे घृणा कलेनी एवं आमर पंचायत राज समिति किछि सरपंच भाई एवं भौणी माने आस्थिबे से माने निश्चय अनुभव करथुबे जे किछि गां वर्तमान विभिन्न उपाधि पाइलन जे बाह्य मलत्याग मुक्त ग्राम सेही ग्राम एवं सेही स्वप्न थिबा आमर स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छ भारत अभियान को सुदृढ़ करूची आमर एनसीआई रो जो कर्मकर्ता माने अछथि से माने अनेक परिश्रम करिकी बाह्य मलमुक्त केमती करा जिवो गां मानकु से भलिया कार्यक्रम आमर होउची। विश्व परिवेश दिवस जून 5 तारिख समस्त जानिथिबे किंतु नेचर केयर इनिशिएटिव पई एहा थिला बहुत खास रो दिन कारण जून 5 तारिख 2022 रे आमर स्वेच्छासेवी एवं कर्मकर्ता मिसिकी पारादीप बंदर ठारे आमे गोटे परिवेश दिवस पालन करथिलु समस्त तो परिवेश दिवस पालन करचंदी ताले कोन या नियारा थिला आपण माने जानिले खुशी हेबे कि आमर जेते स्वेच्छासेवी अछंती समस्त मिसिकी कहले नाही आमे गोटे नाटक परिवेषण करिवा आमर ए जो पिला मानको देखुचंती आपण सब नील वस्त्र परिधान करिसंती नेचर केयर आमर जो स्वेच्छासेवी अछंती से माने आज्ञा दुईटा चरित्र हेले जणे प्लास्टिक हेला आउ जणे आज्ञा सुक्ता मुनि हेला सुक्ता मुनि कहूची मु महान प्लास्टिक कहूची जा तू कोन महान मोर भाषण चली एबे देख मते केते व्यवहार करूछंती एई भलिया परिवेशन रे आमे प्रत्येक स्थानीय लोकन को बुझेइथिलु एवं पाखा पाखी आपण जानिले खुशी हेबे 3000 सुक्ता मुनि बा आपण जाको कॉटन बैग कहउछंती परिवेश को सुरक्षा प्रदान करिया को आमे बांटीथिलु यार संध्या अधिवेशन रे गोटे उच्च कोटीर परिवेश दिवस रे आमे एक आलोचना चक्र रखिथिलु ए आलोचना चक्र रे बहुत दूर जेमिति आमर प्रकृति को भल पाई आज आम पाखरे सर अश्विनी वैष्णव जी अछंती सेमती प्रकृति की आउ जने मनीष भल पाउथुवा श्री शांतनु ठाकुर आपण माने ताको जानिथिबे नौका चलाचल एवं जहाजर जे अछंती मंत्री सी आसीथिले एवं सेही दिन अध्यक्ष पारादीप पोर्ट बंदर से घोषणा कले कि आगामी 5 वर्ष रे आज ठारू 10 लाख गछ ओडिशा सारा लगा दिबो ता संभव होइतला परिवेश दिवस पालन आपण माने बोधे समस्ते मो संगे सहमत हेबे आजिर शिशु कालीर भविष्य जेतेबेले भी आमे जोठी आलोचना किंबा सचेतनता कार्यक्रम रखीचु सेठी सबु बेले आमे चाहिचु जे छोट कोमल मति थिबा शिशुटी आम कार्यक्रम रे अंश ग्रहण करू भारतर विभिन्न राज्य रे आमर स्वेच्छासेवी माने बस्ती रे विभिन्न बस्ती रे थिबा शिशु माननकु प्रथमे आचार विचार प्रदूषण एवं परिवेशर सुरक्षा ज्ञान बंटन करछंती एई बंटन रे पाखापाखि एमिति किछि आपण पिला मानकु देखिबे जो द्वारा से माने बहुत उपकृत होइचंदे तांकर आचार विचार रे एबे बहुत परिवर्तन हेइछि शेष रे परिवेश को भल पाउथुबा एवं मां प्रकृति द्वारा एठी टाणी हेइ आसीथिबा समस्त मान्यगण्य व्यक्ति एवं समस्त अतिथि वृंद को मो हृदय शुभेच्छा जनाउछि धन्यवाद। श्रीयुक्त साहू महोदय आपणकर उद्बोधन आम समस्त को प्रेरित कर परिवेश आमर दायित्व को सुचारू रूपे संपन्न करने। As a senior advocate of the country who has the highest sense of law, order and justice, as a senior advocate of Odisha High Court, was always fearlessly fought for what is just and right,
And as the Honorable Advocate General of the state, whose prime duty is to ensure lawfulness in the state, I think our guest of honor is the right person to speak about what our duty should be when it comes to climate change. May I request Sri Ashok Kumar Parjaji to please address the House. Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Minister Railways, Communication, Electronics, IT and Government of India. You have already told MTech from IIT Kanpur, Collector of Cuttack where I reside, ex-collector, Collector of Balasore, MBA in Wharton. So he is not just another minister. And let me tell you, when Shakti Babu called me and said that you have to come on a Sunday morning, I said very difficult for a lawyer to get out on Sunday because Monday is a cold day. And then he said that your favorite minister, Sri Ashwini Vaishnav ji, is coming. So I really had no choice but to accept the invitation. Shri Pradeep Amar ji, Minister of Forest and Environment, Panchayat Raj, Drinking Water, Information and Public Relations, Government of Orissa. Shri Sujit Kumar ji, Honorable Member Parliament, Rajya Sabha. Shri Srikanta Sahu, which just gave a brilliant introduction of this organization. And of course, Mr. Shakti Naik, for whom I am standing for you this morning. Dignitaries on and off the dais, ladies and gentlemen. It's a wonderful topic, National Summit on Climate Change and Developing Resilience in Orissa. This meeting is running about half an hour late, and I'm told the Honorable Minister is catching a flight in the afternoon. So I had a word with Shri Pramad Amarji to say, let you speak of Orissa and I speak of the rest, so that we can make him go back the flight he wants to go back. Friends, in 1896, Anton Chekhov said, forests grow ever fewer, the rivers parch, the wildlife is gone, the climate is ruined, and with every passing day, the earth becomes uglier and poorer. These words, penned for a Chekhovian character over a century ago, aptly describe the current state of earth environment. Imagine a poor country already grappling with political instability and economic crisis. It is suddenly hit by the worst flood in recorded history. The disaster is caused by a combined fury of unseasonal and incessant rain and glaciers melting due to unprecedented heat waves prior to the rains. It caused 1,700 deaths, including 600 plus children and over 12,000 injuries, with almost 5.5 lakh people having been displaced, an economic loss over 40 billion US dollars, approximately 3.1 lakh crore rupees was estimated. The loss is equal to about 10% of the country's GDP. Not difficult to guess, it was Pakistan's turn this time, a country that is among the least emitter of greenhouse gases, less than 1% of the global emission, yet has the maximum vulnerability to the impact of unfolding climate crisis. What we used to refer as the problem of global warming causing climate change is now being properly and almost universally referred to as climate crisis or even climate catastrophe. At the other end of the world, in the most powerful and prosperous nation on the earth, the United States of America, a category 4 hurricane named Ian hit only last week. Ian caused widespread damage across the western Cuba and southeast United States, especially in the states of Florida and South Carolina. It caused more than 120 deaths. 22.4 million residents lost their power supply. Most of the deaths occurred when one of the countries in the path of the hurricane did not move its residents to safer locations, as the hurricane seemed to change its path beyond the cone of prediction at the last stage. It is unacceptable by large number of casualties in a national disaster to be recorded in a developed country.
It was the deadliest hurricane to strike the state of Florida since 1935, Labor Day hurricane. It was the 9th named storm, 4th hurricane, and the 2nd major hurricane in the 2022 Atlantic hurricane season so far. It is known that the provinces of Sindh and Balochistan received more than 784% and 500% average rainfall in the month of August respectively. Higher than the average monsoon rains were also recorded in India, Bangladesh this year, as indeed we also witnessed in Odisha. The Indian Ocean is one of the fastest warming oceans in the world. It is warming by an average of 1 degree compared to oceans in general, at around 0.7 degrees Celsius. The worldwide temperature rise is now almost 1.2 degrees Celsius over pre-industrial temperatures. The rise in sea temperatures is believed to increase monsoon rainfall, make cyclones, typhoons, and hurricanes increasingly more devastating. No wonder the latest report suggested by the Intergovernmental Panel for Climate Change in its 6th assessment report released in August has been termed as code red for humanity by the UN Secretary General Antonio Guterres. The report highlights, among other issues, the fact it is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean, land. Widespread and rapid changes in atmosphere, ocean, and psychosphere, biospheres have occurred. Human impact has warmed the climate at an unprecedented rate in at least the last several years, more particularly in the dawn of the Industrial Revolution some 150 years ago. Except for a few die-hard climate skeptics or fossil fuel lobbyist funded consultant, no one disputes it. Human-induced climate change is already affecting many weather and climate extremes in every region of the globe. However, the impact is far more devastating in regions that have least capacity to withstand while having made the least contribution in causing problems in the first place. Odisha is a prime example of what is one of the central issues of climate crisis, that is climate justice and climate equity. The Indian Constitution under Article 21 ensures environmental right to all citizens, that is right of enjoyment of pollution-free water and air. Article 47 and 48 articulate the duties of the state with respect to public health and environmental protection. The Supreme Court has propounded the following 4 principles under environmental law. Precautionary principle, that is to anticipate, prevent and attack the causes of environmental degradation. The second is the polluter pay principles, namely you pay for the damage you have done and you pay for repairing the damages. The doctrine of public trust, which is equivalent to intergenerational equity. And let me tell you, there's a beautiful book written by one Korea author, professor in IIT, California, called the Circadian Code. And he says that there's a body clock in each of us. He says there's a body clock in each cell of us, and that is connected to sunlight. And I remember when we were in school, early school, let's say 68, 69, 70, and we used to go to a village, we really depended upon this body clock. He says the body clock is a cell clock, it's a gene clock. Now what that clock tells you is that you rise at sunrise, there was no electricity, there were lanterns, and you sleep a little after sunset. You never ate after sunset in a village. So we used to go for vacations. And he writes this, and he writes that the body was tuned to the sun clock. And therefore, he says that this process, if you adhere to, it supercharges your energy and you sleep well in the night. The point I'm trying to make is, by following this, our previous generations really contributed to intergenerational equity. Together, these principles are considered inseparable ingredients of our environmental jurisprudence, are intended to breathe life into the environmental rights in India. The concept of climate change
climate justice encompasses a set of right obligations where corporations, individuals and governments have towards those vulnerable people who will be in a way significantly affected by climate change. On the other hand, climate equity is made up of 4 principles: the principles of corrective justice, the principles of distributive justice, the principles of procedural equity, and last but not the least, the principle of intergenerational equity. Now, as a lawyer, I have told you the legal principles. All of you know Odisha has been hit and is continuously being hit by national calamities, and there's some wonderful people on the dais. As we have told, the Honorable Railway Minister was the collector of the time when the super cyclone hit Odisha. I could speak more about it, but we have shortage of time. I can only tell you that Odisha has managed cyclones in the last few decades extremely well. The Honorable Chief Minister's emphasis on zero life loss has been a great motivating factor for administration to gear up calamities of these kinds. I will not take more time. I'll only conclude by saying this: in the G20 summit held in Rome before COP26, the usual politics amongst the most powerful nations were in full display. While there were no new significant commitments on climate front, there was plenty of blame game between the developed countries and developing large economies. A viral video, and this is interesting, of a dinosaur addressing the UN General Assembly asks a rhetorical question: at least we had an asteroid, what excuse do you have? It ends by saying, don't choose extinction by investing in an asteroid, breed fossil fuels. Billions around the world are hoping that our world leaders are listening. Thank you for your patience. For those extremely thought-provoking words that reflects experience, expertise, and love for the planet. Can we have another round of applause for Honorable Advocate General Shibaija? Thank you, sir. As a young and influential politician who believes in driving positive change, and as a fierce parliamentarian who believes that only changing the law will not bring in the desired changes, but instilling a sense of awareness and enforcement will surely do. He is the right person to speak about where we lack and what we should do. May I request Shri Sujit Kumar to please address the House. मंत्री भारत सरकार अश्विन वैष्णव जी, माननीय मंत्री ओडिशा सरकार प्रदीप अमात महोदय, माननीय एडवोकेट जनरल ओडिशा अशोक परिजा महोदय, उपस्थित बंधुगण, मीडिया भाई भौणी मैंने समस्त को मो नमस्कार। सर्वप्रथम धन्यवाद देवी नेचर केयर इनिशिएटिव शक्ति बाबू को, श्रीकांत बाबू को मत आज ये आमंत्रण कर जून 5 रे पारादीप रे जो होता सेमिनार से भी मुझे भाग नवर सौभाग्य पाई आ बहुत किसी शिखी तेणु आज भी बहुत किसी शिखी ये आशा रखी मुझे श्रीकांत बाबू। नेचर केयर इनिशिएटिव विषय में अल्प किसी जानी या पूर्व जड़े वक्ता कही PIL जो एलिफेंट कॉरिडोर विषय आप शुणी ओडिशा रे सबुठु बेसी हाथी मृत्यु होता गोटे PIL फाइल होता सुप्रीम कोर्ट रे आउ Honorable Supreme Court had given certain directions to the Government of India and to the state governments. Our Nature Care Initiative was the pioneer of that PIL. और तांकरी प्रचेष्टा जो आज एलिफेंट करके तेणु तांकर ये प्रचेष्टा समस्त तरफ मुझे अभिनंदन और धन्यवाद जनाऊँगी। आज जो जातीय कर्मशाला क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपिंग रेजिलिएंस इन ओडिशा आज ये भुवनेश्वर होची, it can't be more apt than that because the person leading the state, none other than the Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik, is known as a man of nature. He is globally acclaimed as a nature lover, and you can see the footprints of climate adaptation and climate mitigation in all the policies of Government of Odisha. And I'll speak briefly about some of these policies. आज सौभाग्य आम सहित अच्छा माननीय मंत्री अश्विन जी, ओडिया गोटे कथा अच्छी खजुरी गचर कि गुण गायबी मूलू पाहाच पाहाच। अश्विन बाबू आपंकर कि गुण गायबी आ कथा से निजे पार्लियामेंट स्पीच कहते
parliament speech mu anichi. We are truly blessed to have a minister like him. He is truly the pride of the country. या पूर्वरु अशोक परिचय कहते पाकिस्तान फ्लड विषय आपने जानी पाखापाखि 2000 मृत्यु होता बिलियंस ऑफ डॉलर्स the scale of devastation is unimaginable. United Nations has said that it's the worst ever natural disaster of the 21st century. And almost every observer believes that it is the climate change which is responsible for that flood. World Economics Forum गोटे अच्छी स्विट्जरलैंड जेनेवा रे जोटी मु 3 वर्ष कार्य करिवार सुयोग पाइथिली तांकर गोटे सर्वे आसे प्रति वर्ष every year they conduct a survey as to what are the 3 major challenges of the globe से 2005 रु प्रत्येक वर्ष terrorism and climate change are invariably the 2 most identified challenges facing humanity since 2005 तेणु climate change उपरे जो कर्मशाला अछि this is extremely timely and particularly in a state like Odisha which is so vulnerable to natural disasters. As you all know, starting I at least do not know about the cyclones pre-99 and the man who led the restoration effort in the 99 super cyclone is here with us. So since 1999 until 2021 we have had 8 cyclones including 2 super cyclones. 20 वर्ष रे आमर राज्य रे 8 सुपर साइक्लोन आमे फेस करछु including 2 super cyclones. Our coastline is 480 kilometers. We are extremely vulnerable to flood, to heat waves, to drought conditions in western part of Odisha. So if there is one state in this country which should discuss the resilience to climate change, it is this state. And if there is one state which has proven that it can come up to the expectation of its citizens in adapting and mitigating the climate, the adverse impact of natural disaster, it is Odisha. आपण सब जानी नीति आयोग नहीं जातिसंघ नहीं वर्ल्ड बैंक पर्यंत समस्ते ओडिशा सरकार द डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट को प्रशंसा करछंती. थैंक्स टू द एफर्ट एंड थैंक्स टू द एफर्ट एंड लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ओडिशा. नाउ you know it's strange that we are Odisha is at least not as developed as Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra, which are traditionally developed. We are on that path of development. But the per capita emission of carbon dioxide in Odisha is 2.35 metric ton, which is much higher than the national average. I was actually surprised to note this. And as I've told, we have had many natural disasters in the last 20 years, which are fresh in my memory. Now, what are some of the steps which government of Odisha has taken? What are some of the effort of the state government in tackling this? There are many. Honorable Minister Pradip Amath is with us. He is well versed with all the efforts and steps because he himself has been part of all of this as one of the the leading light of Odisha politics. So he will definitely share more light, but I'll just briefly touch on some of them. Apna jani thibe, we were the second state in the country, only the second state in the country to go for a digital budget. And the honorable former finance minister is himself here. So that tells us when most other developed states were not even thinking of having a digital budget, we had the audacity to go for a digital budget to save tens of thousands of trees rather from being cut. Now it's the first state in the country to formulate a climate change action plan way back in 2010. Today climate change has become a buzzword. Everyone is speaking of climate change. समस्ते आज climate change कथा कहते हैं. मने पकंद 2010 में कितने लोग climate change कथा जानी थी. How many states, how many people, how many thinkers, how many politicians were talking of climate change? We were talking of climate change way back in 2010. And not only that, we had a dedicated green climate fund for this. Again, the first state to have a dedicated GCF, Green Climate Fund, of course supported by many multilateral bodies. We are one of the very few states even today to have a dedicated PMU cell to monitor the implementation of the SDG goals. SDG stands for Sustainable Development Goals. So basically, there was something called MDG, Millennium Development Goal, formulated by United Nations.
Then that was succeeded by SDG. So there are 17 SDG goals, and our policy today in state of Odisha, the state government's policies are almost aligned with the SDG goals. And one of the very few states in the country where a separate dedicated cell headed by the additional chief secretary, planning and convergence, to look after the SDG goals. And most of the SDG goals revolve around the climate change and its adverse impact, and how do we mitigate and adapt to climate change. So that's the seriousness of the state government in responding to climate change and developing resilience. OREDA is a state government agency which has, almost saturated the state with biomass plants throughout the state. Massive afforestation. Just last year alone, there was 537,000 hectares of plantation in the state. Again, our afforestation is more than the national average. We have been talking of cyclones. Coastal Odisha, 480 km our coastline. आपण जानतु जेकोसी ब्लॉक को जानतु कोस्टल ओडिशा रे आपण देखिबे ओडी साइक्लोन सेंटर, वर्ल्ड क्लास साइक्लोन सेंटर. आज हमरो पाखपाखी 900, more than 900 we have cyclone shelters dotting the landscape of coastal Odisha. 92,000 volunteers in all these villages and panchayats of coastal Odisha who have been trained to cater to any natural disaster. Okay, I did mention that we were the first state to start a climate change action plan way back in 2010. Did we stop at that? No. Again, the first state to have the second phase of the climate change action plan in 2018, which has a period of 10 years to completely make the state climate resilient by 2030. And then some of the activities under the second phase, please allow me to just read them out. Restoration and conservation of water bodies. We have many water bodies that were lying defunct, but under the second phase of the climate resilient plan, we have the motivation to restore the water bodies, increase the water efficiency. पश्चिम ओडिशा आपण जानिचंती पानी जो सबटी शॉर्टेज रहउची. आज आपण जानतु मु कलाहांडी जिल्ला आउची, आपण जानतु कलाहांडी 63% of the irrigated land in Kalahandhi is today 63% of the agricultural land today is irrigated through a complex network of efficient irrigation system. Swachh Bharat, in my view, is one of the finest examples of public policy initiated by Government of India. We often talk of incremental change when we talk of policy making, but there are certain policies which truly transform the nation, and Swachh Bharat, in my view, is one of those policies. 3 कोटी परिवार, 3 कोटी घरे टॉयलेट तैयारी करिया गोटे छोट कथा नुहे. IHHL लोक सत हसुते जेतले IHHL हेतला माने मन अछि माननीय प्रधानमंत्री जेतले अनाउंस करथिले लालकिल्ला IHHL प्रति घरे गोटे टॉयलेट हबो. I had read in Washington Post, they were literally mocking प्रधानमंत्री देश को संबोधन करछथि लालकिल्ला टॉयलेट कथा कहछथि. Just imagine what a game changing initiative it was. 3 crore toilets, individual household toilets. Yes, बहुत जगह से टॉयलेट यूज होनी, but that's a cultural thing. It will take time. Development always is an ongoing process. It takes time. धीरे धीरे चेंज हबो, किंतु 40% 50% लोक आज यूज करना स्टार्ट करछन. आज अधा गां हमर ओपन डेफिकेशन फ्री गलानी. So that is the kind of change. And in Odisha, we have 70% of our villages open defecation free. We are on the path to be 100% open defecation in the next couple of months. Gotte katha mu kahibi aute self-help group. Odisha is one of the few states which has actively engaged its formidable network of self-help group. आपण मैं जानी थी हमरो 70 लाख मां माने आज मिशन शक्ति रे हम सहित जोड़ी के अछंती. One of the finest again example of women empowerment across the country. माननीय मुख्यमंत्री कर प्रचेष्टा जो आज 70 लाख मां माने पाखापाखी 8 लाख मिशन शक्ति ग्रुप तैयारी करी आज आइसंती कलाहांडी आइसंती नुआपड़ा जिला आइसंती मु जानि किसी महात्मा को एति आसंती से मानकु आज क्लाइमेट सोल्जर हिसाब रे से माने हेले आज ये जो क्लाइमेट चेंज तार ओडिया कोन जानि किंतु जहाँ भी उतासी पाई आज से माने सेनापति ही कि आज बाहरी चंती 80 70 ରୁ 80 लाख मां माने आज क्लाइमेट चेंज वारियर्स ही कि बाहरी चंती. एटा होचे ओडिशा सरकार तो बहुत सुंदर पदक्षेप. समय नहीं मु आउ शेष रे खाली एतिकी कहबी गुटे आ कथा पूर्व कहबी मिलेट मिशन आपण जानि थिबे
this year is being celebrated as the International Year of Millet. Millet is the most climate resilient crop. Odisha Millet Mission आरंभ करते माननीय मुख्यमंत्री 2007 मसीह Aji say Odisha Millet Mission has become a model, not only for other states of India, but for 42 countries. 42 countries have studied the Odisha Millet Mission model and have implemented in their respective countries. It's a matter of great pride, not only for us here in Odisha, but for the entire nation, that a model from a state in the country has been implemented by 42 countries. Aji Odisha re pakapaki 2 lakh chashi bhai mane millet chasa karchonti, pakapaki lakhe hectare deho chasa hochi, pakapaki 150 block aji millet cultivation heki pura aji desha ko pura duniya ko aji gote model ame tayari kariki dekhei parchu. And millet is the most climate resilient crop. Aji jetebele Odisha has become one of the most preferred and attractive destination for investment and for industry, I think time has come for us to ensure that while we grow at a rate of 11%, which is again higher than the national average, India is growing at 7.2. As per IMF, we are growing at over 10%. So as we grow at a much faster pace, I think we should ensure that the growth is not at the cost of our ecosystem, our environment, which is always fragile. So let's all pledge that as citizens of this state, citizens of this country, will ensure that we take care of the environment. और धन्यवाद देवी नेचर का इनिशिएटिव को आज केवल एटा को गोटे थियोरेटिकल सेमिनार सारे करिनांती आज से माने पाखापाखि 150 जन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सरपंच भाई माने भौणी माने जिला परिषद मेंबर मन आसी चंती they invited stakeholders from the industry as well, from the academia, from the political field, from the legal field. The doyen of one of the doyens of the legal fraternity, Mr. Parija is here. So what a great aggregation of people from different walks of life, and I'm sure there will be a lot of learnings from today's workshop. Again, thank the Nature Care Initiative for inviting me and for organizing this wonderful seminar on a very timely topic. Thank you. Sharing your enlightening thoughts with us. परिवेश सुरक्षार जो चर्चा आम ही पंचतारका होटेल रे करिछु ताकू सफल करिवार प्रक्रिया जोठी आरंभ हुए ताकू कहती ग्रास रूट लेवल एवं जहाँकर वार्ता जहाँकर संबोधन जहाँ मार्गदर्शन रे ओडिशार 30 जिल्लार जनता वॉलंटियर्स परिवेश निजर दायित्व तोलिबा प्रस्तुत हेबे इंस्पायर्ड हेबे से आम सहित अच्छा ओडिशा सरकार माननीय जंगल एवं परिवेश मंत्री जे निजर सांगठनिक दक्षता एवं राजनैतिक परिपक्वता बहु परिचित अनुरोध करेंगे श्रीजुक्त प्रदीप कुमार अमार महोदय को से निजर संबोधन रखेंगे। Esteemed Sri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Minister, Railway, Communication, Electronics and IT, Government of India. Honorable Member of Parliament, Sri Sujit Kumar ji, Honorable Guest, Sri Ashok Kumar Parija, Advocate General, Sri Srikant Kumar Sahu, Chief Executive, Nature Care Initiative, guests in front of the dais, participants, media friends. Odisha is exposed to several climate hazards including flooding, cyclones, heat waves and drought. With 480 kilometers of coastline and extensive network of rivers with high rates of siltation and 80% of annual rainfall concentrated in a narrow 3 months period, Odisha is particularly prone to cyclone, drought and flood. Flooding affects both the coastal districts and inland adjacent to river. The state has experienced several severe floods and cyclones over the last
30 years. The frequency, intensity and extent of drought in Odisha are also gradually increasing. Western Odisha is prone to moderate drought every 2 years and a major drought in every 5 to 6 years. The impact of drought is predominantly felt by rural communities working in agriculture who have less access to arable lands, irrigation, drinking water as a result of drought. To create more lasting development solutions against climate change for the rural poor urban slums, the government of Odisha has taken many initiatives to challenge the multifaceted risks posed by climate change. Some of them are as follows: increase and protect existing mangrove cover and coastal biodiversity along the coast. Mangrove can serve as excellent barrier against climate-induced extreme weather events such as cyclone storms. They also can act as a blue carbon sock, and they have proven to be most effective for carbon sequestration. Odisha has 221 square kilometers of mangroves in the district of Kendrapada, Bhadrak, Jagsingpur, Baleshwar and Puri. The integrated coastal zone management program in Odisha, with a primary objective of biodiversity conservation plan to establish mangrove zones across its project areas for Gopalpur to Chilika and from Paradip to Dhamara. During the period 2019-2021, mangrove forest cover has been increased by 8.38 square kilometers in the state. Secondly, increase in the forest and green coverage. Likewise, the forest and green coverage in the state has increased by 893 square kilometers during the period 2019-2021. At present, the forest and green coverage constitute 36.71% of the total geographical area of the state, where only the forest area constitute 33.50%. Conserve and regenerate bamboo forest. The state government has constituted the Odisha Bamboo Development Agency to address all aspects of bamboo development in the state, planting under the Odisha Bamboo Development Project 1,000 hectares per year, and under the National Bamboo Mission 700 hectares per year. The state government's initiative granting land rights to thousands of slum dwellers under the Odisha Livelihood Habitation Mission or Jaga Mission won the World Habitat Award. The annual award is given by World Habitat in partnership with UN Habitat in reorganization of innovative, outstanding and revolutionary ideas, projects and programs across the world. Odisha is the first state in the country to receive Green Climate Funds project, a project on groundwater recharge and solar
micro irrigation to ensure food security and enhance resilience in vulnerable tribal areas of Odisha was approved by GCFO. GCF provided a grant of 34 million US dollar to Odisha government through NABARD. The project has been granted for 6 years. The project impacts 5.2 million vulnerable households in 15 priority districts with high level of food insecurity, water scarcity, high climate stress, and high proportion of SC/ST population, which accounts for 12% of the entire population of the state. The Odisha government's effort on emergency response for distressed people faced with natural disasters has been recognized in a national forum. Odisha has bagged the third prize in poster presentation of ASA Gaon Kalyan Samiti led community activities during Cyclone Fani at the 6th National Summit on Good and Republic participation and innovations of public healthcare system in India. The United Nations appreciated Odisha government's handling of Cyclone Fani and hit Odisha in October 2013. The international body also announced that it would highlight the state's efforts as a model of disaster management program globally. The technology-driven, citizen-friendly bus service of the capital region urban transport on Odisha government initiatives has been awarded as the best city bus service project in the country. This award for CRUT was declared Urban Mobility India Conference and Expo organized by Urban Development Ministry, Government of India. These initiatives directly reduces carbon dioxide emission and also focus to achieve Prime Minister's commitment on carbon dioxide on net zero emission by 2017. Our beloved Chief Minister Honorable Shri Naveen Patnaik is a great lover of nature. Under his leadership, government is taking many important steps to make the state climate resilient. So our government is ready to take any implementable suggestion by this forum. I thank the organizers for organizing such a meaningful event. Thank you all. Vande Utkaram. Thank you very much, Honorable Minister Shri Amarji, for sharing your thoughtful insights with us. From being the brightest bureaucrat who always believed that small yet steady steps can bring in unbelievable changes, to becoming the kind of head of global corporate giant who would go out of the way, break barriers to set the standard really high and set the highest example when it comes to corporate social responsibility, to becoming the most motivational, inspiring leader, union minister, who would bring in game-changing initiatives to simplify the lives of millions and zillions when it comes to commuting
and communicating and making technology accessible and affordable to all. Our honorable chief guest and inaugurator has so many stories to share and guidance to give. May I request you, sir, to please honor us with your applause. धन्यवाद. मंचासीन ओडिशा सरकार को अति सम्मान्य मंत्री श्रीयुक्त प्रदीप अमात साहेब पार्लियामेंट रे जहां को अति टाणुआ किंतु वाइज एमपी मानती से भली हमर भाई सुजीत हमर ओडिशा रो अति धीर गंभीर एडवोकेट जनरल साहेब श्रीयुक्त अशोक कुमार परिजा जी श्रीकांत भाई उपस्थित शक्ति भाई को किया चलती थोड़ी शक्ति भाई हाथ टिके तो शक्ति भाई हाँ पड़े ऐसे पछरे रहे केमती आपण मत ये डाकती अति खुशी कथा आज समस्ते आम एकाठी होती समिट गोटे वर्ष वर्ष जदि आम करूए गोटे गोटे स्टेप नेले बहुत बड़ कामटा हुए यही समिट आउ नेचर केयर इनिशिएटिव विषय में बहुत वर्ष है जानी बहुत भल काम आप विशेषकर ग्रामांचल जहाँ भाई मान को आज ये डाकचंती भाई भौणी मान डाकचंती गोटे नुआ नेशनल लेवल रे इंटरनेशनल लेवल रे केमती कौन काम होची कौन सब चिंताधारा होची से सब जानिबार आज गोटे भल सुजोग मिलुची केजन आछंती सुंदरगढ़ रु संबलपुर बलांगीर बालेश्वर बालेश्वर मो घर किस करवा खाटी ओडिया रे जदी कहबा बालेश्वरिया कहबे किस करवा कौन करवा कहबेनी ठीक कथा विशेष करी उत्तर बालेश्वर साउथ रु किए आछंती एठो हमर बरहमपुर साइड रु किए आछंती तांके तांके दे अति सुंदर भाषा ओडिया भाषा महाप्रभु जगन्नाथ जो भली भाव रे ओडिया भाषा को गढ़ी छंती आउ कौन सी भाषा दुनिया रे से भली ना ए विश्व रे जेते जहा भाषा सबु मनीष गढ़ी छंती ये कौन सी भाषा नहीं ओडिया भाषा केवल गोटाए भाषा जहाँ को ठाकुर गढ़ी ठाकुर गढ़ी की आमन को समस्त को देइछंती महाप्रभु जाओ भाई एटा तुम्हारा प्रसाद यही सुंदर मीठा भाषा से मु मंचासी अतिथि मान रिक्वेस्ट करुची जे अवश्य एटा नेशनल सेमिनार इंग्लिश किंबा हिंदी रे कथा हेबा कथा किंतु आपनकर परमिशन नै कि केवल ओडिया रे बहुत धन्यवाद मो विशेष कथा कोई भी नहीं 3-4 कथा आपन सहित शेयर करी स्नेह सहित ग्रहण करिवे प्रथम कथा मो रखिबी आपन को पाखरे जे आमे ओडिया भाई माने आम माने प्रकृत रे मूलरू निजर स्वभाव रे निजर दैनंदिन जहाँ आम कार्यकलाप जमती आम रोचे से प्रकृति को सबुदिन प्राथम्य देउछि सेटा सत्य ना भूल ठीक सेटा एकदम ठीक माने आमे मु सुंदरगढ़ रे काम करिछि सुंदरगढ़ जदि आपण अति डीप इंटीरियर को जीवे बणई विषय केत लोग जानी देखते केते डीप फॉरेस्ट बणई भितरे मध्य जीवे जदि आओ गुरुंडिया आड़ को जीवे किंबा मौलिया आड़ को जीवे
कितने डेंस फॉरेस्ट से डेंस फॉरेस्ट को किए बचाई के रखिछंती वर्षे वर्षे धरिकी शताब्दी शताब्दी धरिकी हजारे हजारे वर्ष किए बचाई के रखिछंती कलाहांडी रो आछंती भाई भाई को भाई ताली बजाते जोर से और को जिला रो आछंती जे कि निजर नाटा नहीं कि ताली बजाइबा चाहिए बलांगीर कोरापुट पूरी पूरी पाई ताली बजाते खुशी हेबा कथा भद्रक भद्रक पाई पाई ताली वर्षे वर्षे हजारे हजारे वर्ष जे प्रकृति को भलो पाई की आमर जंगल को बंचाई की रखछंती कई बाहर आसी की बंचाई नाहंती आमर ही आदिवासी भाई भौणी होंतु ग्रामीण अंचल रे रहउथिबा भाई भौणी होंतु से माने ही बंचाई की रखछंती एटा होची आमर संस्कृति एटा होची आमर कल्चर एटा होची आमर जेमिति आमे रहुचे आम दिन आम 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 निजर नेचर रे नेचर अछि आम निज नेचर रे नेचर अछि से होची ओडिसा रो सबठारु बड़ गुण एई भली आमर संस्कृति को नहीं कि जदि आमे सेतरे साइंस टिके मिसाइबा सेतरे जदि इंटरनेशनल नॉलेज टिके मिसाइबा हेले आमे निश्चित भावे वर्ल्ड लीडर हे पारिबा आजी एई समिट रो उद्देश्य से है जे आमे विश्व गुरु आमे थॉट लीडर हेबा ओडिसा रो जहा जो भावना जन्म होबो सेही भावना विश्व सारा समस्ते जानंतु समस्ते सेटा को सुनंतु समस्ते सेटा को पढ़ंतु या पई मो नेचर केयर इनिशिएटिव को बहुत बहुत साधुवाद देउची बंधुगण मो द्वितीय कथा कोई भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व मंच रे की परि भावरे विश्व सारा भारत रो प्रकृति प्रति जहा कमिटमेंट अछि नेचर प्रति जहा कमिटमेंट अछि से कमिटमेंट को रखिछंती पंचामृत रे कौन सेटा पंचामृत पंचामृत रे कौन सबुठारु प्रथम अमृत हैला सबुठारु प्रथम कथा हैला सेटा भारत वर्ष रे 2030 सुधा 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी क्रिएट होगा लोग के बहुत प्रश्न करले 500 गीगावाट बहुत बड़ कथा मोदी जी समस्त को मने पकैले जे 6 वर्ष तळे जेते बेले हम टारगेट नहीं थिलु आगे 50 गीगावाट तापर टारगेट नेलु 100 गीगावाट सेही बली लोक माने समस्त हसुथले किंतु विद इन एग्जैक्ट टाइम फ्रेम 100 गीगावाट टारगेट अचीव जहाँ टारगेट नहीं की जाइथिले कामरे लागिथिले समस्ते से टारगेट अचीव होला एबे 500 गीगावाट टारगेट नहीं छंती 2030 सुधा द्वितीय कथा आमर जिते जहाँ एनर्जी रो रिक्वायरमेंट अच्छी लाइट चलो रेलवे रो इंजन चालू जे कौन सी आमर गाड़ी माने बस टा चालू जे कौन सी कामरे जोथरे एनर्जी दरकार थाए तार एंटायर एनर्जी रो 50% 2030 सुधा रिन्यूएबल सोर्स रो आसीबो बहुत बड़ा टारगेट है रेलवे एथरे कौन सब सहयोग करुछंती टारगेट को आनिबा रेलवे टारगेट नहीं छथी 2026 सुधा कंप्लीट रेलवे रो मेन लाइन जाओ छी से सब इलेक्ट्रिफाई हे माने बिजली रे ही चलिबो डीजल इंजन आउ चलेबोनी से सब जगह रे साइड लाइन अच्छी ब्रांच लाइन अच्छी सेटा को भी धीरे धीरे सेटा को भी इलेक्ट्रिफिकेशन करिबा तत्सहित बिजली कोठे आसीबो बिजुली जोठे आसीबो सेही सोर्स मध्य रिन्यूएबल हेबा कथा सोलर हो हाइड्रोजन हो विंड हो एही सब वाटर रे आसी तृतीय कमिटमेंट विश्व मंच रे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत वर्ष रुदेले कार्बन एमिशंस
1 बिलियन टन कमाइबा कार्बन एमिशंस केमती कमाइबा कार्बन एमिशंस कमाइबा को हेले गुड़ाए नुआ सोलर प्लांट लगाइबा को पड़िबो गुड़ाए जहाँ एनर्जी एफिशिएंसी आनिबा को पड़िबो जोटी आम एयर कंडीशनर 22 डिग्री रे चलाई कि थाओ सेटा कम माने चेंज करी कि 26 डिग्री करबा कथा ए बड़ी गुड़ाए इनिशिएटिव्स गुड़ाए छोट छोट गोटे बाटटा चलिले पहुंची पारिबा मंजिल। फोर्थ हैला 2030 सुधा कार्बन इंटेंसिटी को कमाइबा 45% कमाइबा अति महत्वपूर्ण आ तापरे लास्ट और सबुठारु बड़ टार्गेट निया गला 2070 सुधा भारतवर्ष नेट जीरो कार्बन एमिशन देश रे सामिल हो बहुत बड़ा ये सब कथाटा हुए तो हमर भाई माने जे माने आछंती आपण को डिफिकल्ट लागि पारे किंतु एटा निहाती दरकार ता सही तो कहले लाइफ मूवमेंट लाइफ माने लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट रो माने कोन हमर जहाँ हमें दिनो दिन जहाँ हमर लाइफ स्टाइल अछि से लाइफस्टाइल रे आमे सब दिन प्रकृति को मूल रे रखी की काम करिबा प्रकृति को मूल रे रखी की काम करले आमे निश्चित भाव बहुत किछ कर परिबा से सब विराट बड़ प्रण विराट बड़ यज्ञ से यज्ञ रे आमे समस्त काम करिबा आ निश्चित भाव विश्व सारा भारत रो ओडिसा रो आमे गर्व सहित कहि परिबा आमे विश्व रे सबुठारु बिगेस्ट नेचर लवर्स भितर अच्छु मु आसीबी तृतीय कथा को आप माने समस्ते जानी छिंती जे मोदी जी ओडिसा को बहुत भल पाती आ ओडिसा पई जे कौन सी स्कीम हो रेलवे हो टेलीकॉम हो एनर्जी हो प्रत्येक स्कीम रे हाईवे हो प्रत्येक स्कीम रे सबुदिने ओडिसा पई विशेष ताकर हृदय रे स्थान थाए आपण समस्ते जानी छंती ओडिसा रो सबु दिने हमर डिमांड रहउथिला जे रेलवे पाई सफिशिएंट एलोकेशन हो रेलवे पाई सफिशिएंट फंड्स आसु केबे फंड्स आसु नथिला 2014 पूर्व प्राय 800 कोटी ओडिसा भली एडे बड़ो राज्य 4.5 कोटी जनसंख्या एते विराट बड़ राज्य तापय 800 कोटी कौन किछि नहीं कौन से अल्पटे की किछि स्टेशन ठीक हे पारिबो किछि गोटे नुआ अल्पटे के कामटा हे पारिबो बड़ कामटा हे पारिबो कि हे पारिबो मोदी जी आसिले 2014 आसिले मात्र से 800 कोटी टंका को बढ़ाई की करले 4000 कोटी टंका गुड़ाए प्रोजेक्ट जहाँ वर्षे धरिकी जहाँ पेंडिंग थिला से काम आरंभ हैला आपण माने समस्ते स्टेशन देखि छथि केते साफ सुथरा स्टेशन अछि स्टेशन साफ सुथरा अछि कि नहीं अछि ट्रेन गुडी को साफ सुथरा अछि माने एटा गोटे परिवर्तन आसीला गोटे चिंताधारा बदलिला गोटे माइंडसेट चेंज हैला ता परे गत बजट रे जेते बेले मोदी जी दायित्व देले ओडिसा रो 3 जन मंत्री को जाओ ओडिसा पाई काम करो पूर्वोदय मिशन पूर्वोदय काम करो रेल बहुत बहुत वर्ष पर ओडिसा खाता रे आसीला आपनकर अश्विनी भाई को डाकी की कहले जे ओडिसा प्रोजेक्ट पाई सबुठारु विशेष ध्यान देबे फंड्स देले केते 10,000 कोटी टंका 10,000 कोटी टंका कोठी 810 कोटी टंका आसुथिला आज 4000 कोटी तापर बड़ी बड़ीला एबे 10,000 कोटी टंका प्रत्येक प्रोजेक्ट हो जे कौन सी प्रोजेक्ट हो प्रत्येक प्रोजेक्ट रो रेगुलर रिव्यू चली फील्ड रे जे कौन सी काम
ଫିଲ୍ଡରେ ଯେକୌଣସି କାମ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଅଟକୁଥିବ, ଯୋଉଠି ହେଲେ ଅଟକୁଥିବ, କିଛି ଇଗୋ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସକୁ ବି ଯିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତହସିଲଦାର ଅଫିସକୁ ବି ଯିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଥାନାକୁ ବି ଯିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଟକିବନି ଭାଇ। ସେଇ ଭାବନାରେ କାମ କର, କୌଣସି भेदभाव नहीं, कौनसी चिंता विशेष माड़ी चली जावा, काम करू चली जावा, केबे भाविबानी, केबे चिंता करबानी जे राति हैला दिन हैला काम करू चली जावा। बहुत किछि दरकार पड़े राज्य सरकार को सहयोग। जमीन राज्य सरकार देती, फॉरेस्ट रो स्टेज 1 परमिशन राज्य सरकार देती, ट्री कटिंग राज्य सरकार परमिशन देती, गुड़ाए परमिशन राज्य सरकार ठारू आसे। मो मान्यवर मंत्री जी अछंती श्री अमित साहेब, आपण को रिक्वेस्ट करूची आपण निश्चित भाव सहयोग करिले। एटा ओडिसा रो गर्व, ओडिसा रो लोकंकर आकांक्षा, समस्तंकर जहा एक्सपेक्टेशन, से एक्सपेक्टेशन को आम समस्ते मिसिकी पूरण करबा। आ ओडिसा पई जहा फंड्स दरकार पड़िबो फंड्स आनिबा, जिते जहाँ शक्ति दरकार पड़िबो काम करिबा, आ काम करिकी ओडिसा रो एक्सपेक्टेशंस को समस्त को प्रत्येक क्षेत्र को आमे प्रोजेक्ट पहुंचाइबा। आपण जानि छंती एही भितरे जहाँ नुआ प्रोजेक्ट सैंक्शन हेछि, तारि भितरे अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सेला जयपुर नवरंगपुर, जयपुर मलकानगिरी, रायपुर झारसुगुड़ा, संबलपुर गोपालपुर पई काम चलछि, कोरापुट जगदलपुर साइड, राउरकेला झारसुगुड़ा, आपणकर जूनागढ़ रु नहीं कि जूनागढ़ भवानीपटना नहीं कि नवरंगपुर, माने जे कौन सी अंचल हो ना पछे, राउरकेला बंडमुंडा नुआ प्रोजेक्ट एठी बुरामुरा चाकुलिया, बांसपाणी बरबिल, माने जे कौन सी डिस्ट्रिक्ट नियंत्रण पछे आज किछि ने किछि नुआ प्रोजेक्ट सैंक्शन हेछि। एबे लागी कि मिसी की काम करिबा, जेमती ओडिया ढग गुडी को डबल एच भी हेई थाई पारे। सेतपे भाई जेमती सुजीत भाई पहिले खजुरी गच्छ की गुण गाइबी, तार मान्यटा अलगा ना, ठीक अमर साहेब मान्यटा अलगा, किंतु सुजीत भाई बोधवे जानी अति मोर भलो माने सांग से अलग भाव कहले आपणकर भावना से नथिबो निश्चित भाव। थैंक यू भाविली भाई क्लियर कर देबा कथा, काले भाइबे जे कोन पई कहले आ गोटे ओडिया ढाग कही थांती किंतु रही जिबे। अंटा बिड़ी की काम करेगा, ठीक बहुत रेल हो किंबा टेलीकॉम हो, जोगाजोग हो, प्रत्येक क्षेत्र रे जेमिति ओडिसा को जहा दरकार से मिलू, सेति पाई पाखा पाखी टेलीकॉम रे 10,000 नुआ टावर ओडिसा पाई सैंक्शन है। एते सैंक्शन कौनसी और राज्य रे नहीं, सेते मोदी जी ओडिसा को देछि। आज सकाळे एठी पहुंचबा को टिके देरी होला, क्षमा करिवे। आगे बीएसएनएल जाइथिली आ जते जहां हमको टावर मोदी जी देछंती, केते शीघ्र तार कामटा आरंभ हो, सेही रिव्यूटा आज सकाळे हम करथिलु। खुशीर कथा नवंबर मासरु आरंभ हो जिवो, गोटे गोटे जगह रे टावर रो माने सिग्नलटा मिलिबा आरंभ हो जिवो। आउरी गुडाय जगह रे जोठी जमी पाई परमिशन दरकार, सेठी निश्चित भावे मु निवेदन करबी माननीय मंत्री जी एठी अछंती, आपण टिके इनिशिएटिव नै कि जदि आपण रिव्यू करंते हेले आपणकर बहुत सहयोग मिलिबो। जदि जागाटा मिली जाए हेले हमें खूब शीघ्र लागी पड़ी की काम कर देबा। मो लास्ट कथाटा कहबी जे टेक्नोलॉजी विषय रे आमे ओडिसा को सब दिन
आगे नहीं की जीवा को पड़ो यही भावना रे जेते बेले माननीय मंत्री मोर बड़ भाई श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय कहले जे आईआईटी भुवनेश्वर रे सेमीकंडक्टर और 5G लैब लागिबा कथा तांकर आदेश हेले सांगे सांगे विदिन फ्यू वीक्स आमे आईआईटी भुवनेश्वर रे और एनआईटी राउरकेला रे सेमीकंडक्टर रो गोटे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सैंक्शन हेछि नुआ टेक्नोलॉजी विषय रे हमर छात्र माने हमर नौजवान माने समस्त शिखंतु जानंतु विश्व कुआडे जाउछि से बड़ी नुआ स्किल्स ग्रहण करंतु आ विश्व सारा जहा आज इलेक्ट्रॉनिक्स रो जुग एई जुग रे हम ओडिया भाई माने भी समस्ते एथरे सम्मिलित होंतु जोड़ंतु सही भावना रे 5G लैब आईआईटी भुवनेश्वर रे आ सोआ यूनिवर्सिटी रे दुईटी जगह रे आरंभ होउछि मु रिक्वेस्ट करिबी हमर वेस्टर्न ओडिसा रो गोटे यूनिवर्सिटी रो नाटा आपण माने देंतु जो यूनिवर्सिटी रे हमें 5G लैब तैयारी करिबा निश्चित भावे गोटे वेस्टर्न ओडिसा रे रहइबा कथा गोटे एठी रहइबा कथा समस्त जानिबा कथा जिते मैक्सिमम पॉसिबल लोगों को यही बेनिफिटटा मिलेबा कथा आपण माने गोटे सजेस्ट करिवे आज सबमिट पर आपण डिस्कस करले जदी सेथरो जे कोनसी गोटे यूनिवर्सिटी को आपण नॉमिनेट करिवे से यूनिवर्सिटी रे हम फैसिलिटीज चेक करबा चेक करी कि सेठी टेक्नोलॉजी विषय रे 5G रो लैब आनिबा सबमिट रे डिस्कस कर बस था बस केते दिन या सबमिट तो गोटे दिन अच्छी भाई आराम से कथा है बहुत भल कथा लास्ट कथाटा कहबी स्टेशन विषय आमर ओडिशा रे जहाँ वर्ल्ड क्लास आम स्टेशन करवा से काम आरंभ हो जाइए महाप्रभु को भूमि रे पूरी स्टेशन रे काम आरंभ हो जाइए भाविली जे कोठ आरंभ करबा बेले बेले हुए कैपिटल रो आरंभ करबा अन्य कौन से करबा करी नहीं जहाँ प्रथम काम करबा सेटा महाप्रभु को चरण रे हमें समर्पित करबा हेले पूरी आरंभ करलो हम फर्स्ट अति सुंदर डिजाइन है के माने तार डिजाइन ता सोशल मीडिया रे देखछंती यदि देखि नांती देखिबे डिजाइन निश्चित भावे एते सुंदर डिजाइन है महाप्रभु को मंदिर बढ़िया डिजाइन है महाप्रभु को आशीर्वाद नहीं कि से स्टेशन कामटा शीघ्र सरी जाओ कंप्लीट हो से हम प्रार्थना करेंगे तापर भुवनेश्वर रे बहुत गुड़ाए प्रॉब्लम्स थिला आगे गोटे जॉइंट वेंचर कराई थिला स्टेट और सेंटर मिसी की जॉइंट वेंचर करबो ये होबो से सब बंद है कि लास्ट ईयर डिसेंबर मास रे राज्य सरकार हमको पुणी स्टेशन फेराई देले तापर तुरंत सेतरे काम आरंभ हैला एबे भुवनेश्वर स्टेशन रे मध्य काम आरंभ हैला तापर जहाँ स्टेशन आमे हाथ रे नेइछु संबलपुर झारसुगुड़ा राउरकेला भद्रक रायगढ़ बरहमपुर जाजपुर केउंझर खुर्दा रोड ऑलरेडी काम सरी जाइछि बालासोर बरहमपुर कोइली भद्रक कोइली ढेंकानाल अनुगुल तालचेर और तालचेर रोड पारादीप बालूगांव मंचेश्वर केउंझरगढ़ जयपुर पार्लाकी मुंडी टिटलागढ़ जंक्शन बोलंगीर कोयली आगे केसिंगा बरगढ़ रोड कंटाबांजी संबलपुर सिटी भवानीपटना झारसुगुड़ा रोड रैराखोल बारीपदा जलेश्वर बरबिल रायरंगपुर झारसुगुड़ा जंक्शन और ब्रजराजनगर एते सबू स्टेशन ओडिशा रे निया जाइछि वर्ल्ड क्लास करिबा कौन सी राज्य रे एते स्टेशन रे काम हो कौन सी राज्य करिबा ना सब गोटे वर्ष रे कर देबा कि आपण मते 2 वर्ष रे समय दैछन्ते एमपी हिसाब रे 2 वर्ष अछि निश्चित भावे नेक्स्ट ईयर और जोड़ीबा बहुत भल कथा आपण मानकर एई बड़ी स्नेह मिलु थाए अश्विनी भाई
मोदी जी को पाखरे आपणकर कथाटा सबुदिन नहीं जाऊए और काम करूए से आशीर्वाद सबुदिन रखती मो सहित टिके दुईटा हाथ टेकिबे मुट्ठी टिके जोर से टाणिबे कहबे जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ वंदे 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 बहुत धन्यवाद Thank you very much, sir, for those words of wisdom. निज राज्य निज भाषार प्रशंसा निज प्रिय केन्द्र मुख्य मंत्री शुणा से पुणी आम निज भाषा ताठू बड़ तृप्ति और आनंद किसी ना मुझे चाहिए माननीय केन्द्र मंत्री गोटे जोरदार ताली हो जाऊ ये भल पाइबा चिरदिन पाखे ऋणी रहूँ. We have small tokens of gratitude and love for all the dignitaries on dais. May I request Shrikant Shekhar Sahu to please do the honor. जहाँ आम ओडिया प्रीति उपहार कहूँ ये विशेष अतिथि मानक आम आज मंच में पाइछु एनसीआई सौभाग्यर विषय गर्वर विषय. May I request Shrikant ji to please present a small token of gratitude to our chief guest and inaugurator, Honorable Union Minister Shri Ashwini Vaishnav ji, for those wonderful words that will stay in our hearts forever. ओडिया को पाई ओडिया भाषा पाई जगन्नाथ को पाई माननीय केंद्र मंत्री जो भल पाइबा यही संबोधन आज दिवस को समस्त विशेष कर देछि. थैंक यू सर. May I request Shrikant ji to present a small token of gratitude to Honorable Minister Shri Pradeep Kumar Amad ji जे आमको कथा देइछंती परिवेशर सुरक्षा रे से एवं सरकार सब बळे आम संगे रहिबे. To Shri Sujit Kumar ji, Honorable Member of Parliament, जहाँकर कथा जहाँकर मोटिवेशन सब बळे आमको क्लाइमेट चेंज विरुद्ध रे जो हमर यात्रा सेथरे सहायक हेबो. And to Honorable Advocate General Odisha Shri Ashok Kumar Parija ji, जहाँकर अनुभूतिर कथा जहाँकर अभिज्ञतार कथा हमको मन पकई देव कि ए प्लानेट आम परिवार एवं जो भाई भाव आम परिवार सुरक्षा पाई निजर कर्तव्य करूछु प्लानेट पाई मध्य करिबो. थैंक यू सो मच Shrikant Shekhar Sahu for doing the honors. And may I request Shrikant Parida, member of NCI family, to please join us on the stage and propose a word of thanks. Thank you. वृंद और उपस्थित समस्त बंधु मान को मोर सादर प्रणाम. जय जगन्नाथ. धन्यवाद देवी मते वोट ऑफ थैंक्स चांस देथिवारु मु विशेषकर भोट ऑफ थैंक्स पूर्व गोटे कथा कहवाई चाहूँगी. आपण मैंने जो मैंने आम ओडिशार कोस्टल बेल्ट जो 480 किलोमीटर से जो कोस्टल बेल्ट अच्छी ता भर जो मैंने जो लोक मैंने रोचे से जानी द कोस्ट ऑफ ओडिशा इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट फॉर द अर्ली फ्रेंडली फॉलोड बाय द कोस्ट ऑफ मेक्सिको एंड कोस्टारिका. माने आमे माने भाग्यवान जे ओडिशा रे आमे रोचे. ओडिशा रे जो कोस्ट लाइन अच्छी पृथ्वी पृष्ठ रे सबुठु अधिका ऑलिव रिडली टर्टल से माने आसिकी हमर ई ओडिशा कोस्ट रे ही ऋषिकुलिया और गहिरमथा रीजन रे ही से माने अंडा दोछन. आज रही सभा रे मान्यवर मुख्य अतिथि केंद्र मंत्री श्रीयुक्त अश्विनी वैष्णव कर उपदेश से कहिथिबा समस्त कथा को आमे कार्य रे बा वास्तव रे रूपांतरण करि पारिले आम राज्य बहुत आगो को जाई परिबो. सेतिपाई केंद्र मंत्री श्रीयुक्त अश्विनी वैष्णव को अशेष अशेष धन्यवाद. राज्यर वन्य व परिवेश कैबिनेट मंत्री श्रीयुक्त प्रदीप कुमार अमात महोदय जो वक्तव्य रखिथिले ताहा आम समस्तक जीवन मूल मंत्र हेवा आवश्यक. सेतिपाई कैबिनेट मंत्री श्रीयुक्त प्रदीप कुमार अमात को आंतरिकर सह धन्यवाद. सेहीपरि मान्यवर सांसद मोर अति परिचित सुजीत भाई बा सुजीत कुमार महोदय जो परामर्श आम मानक देले ताहा समग्र ओडिशा को एक नूतन दिग्दर्शक देव. समस्ते सुजीत भाई उपदेश को आखि आगे आम अक्षर अक्षर पालन करवा एवं ओडिशा को एक स्वच्छ निर्मल प्रदूषित मुक्त राज्य रे परिणत करने को चेष्टा करवा. सेहीपरि आम गहन रे उपस्थित रही एडवोकेट जनरल श्रीयुक्त अशोक कुमार परिजा महोदय
परिवेश सुरक्षा और प्रदूषण मुक्त राज्य गठन करने को जो परामर्श देइचंती ताहा समय सापेक्ष तेणु तांको बहुत बहुत धन्यवाद। एठारे उपस्थित थिबा समस्त बंधु मानकु जो माने धैर्यर सह समस्त समस्त परामर्श को शुणिचंती मु आशा करी से माने निज अंचल रे एहाकु वास्तव रूप रे परिणत करिबा पई चेष्टा करिवे। एही आशा रखी समस्त उपस्थित बंधुंक सह मंचासीन अतिथि वृंदंक सह एवं एभली एक कार्यक्रम प्रस्तुत करिथिबारु मु नेचर केयर इनिशिएटिव एनसीआई रो समस्त बंधु विशेष करी शक्ति भाई श्रीकांत भाई को मु ओडिशा सामुद्रिक मत्स्य उत्पादक संघ ओम्फार सभापति श्रीकांत परिडा अनेक अनेक धन्यवाद ज्ञापन करुछि। आपण समस्त सहयोग जोगु आज कार्यक्रम सुचारू भाव समाप्त होइछि। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। We'd like to have one official photo of all dignitaries on. So many sectors, policy makers, our grassroots to asithiba, our leaders mane. I am also very honored to moderate the panel for the corporates. I am Dr. Sutapapati, Academic Dean, School of Sustainability, Exime University. With great honor and pleasure, I would like to introduce today's corporate panel. We have with us, our Sakra Manchare Achanti, Sri Jukta Pankaj Kumar Satija. He is Managing Director of Tata Steel Mining Limited. He is also chairman, he has worked for the Skill Council of Mining Sector. He is an alum of IIT Dhanbad and XLRI Jamshedpur. Kintu gote pu katha taku introduction re koebi je Tata Mining Steel jo Mining Limited achanti semane recently gote international credit paichanti jota ku kuhti ESG under re responsible chromium recognition. Congratulations sir. Eta paiba bahut mushkil au duniya re bahut kam mining company eta ku paichanti. October masiyare mu ta bishare padithili. Congratulations sir under your leadership. This is what we have got. It is a Tata Group has always been a pride of India. Thank you so much for joining us today. Ama sagre achanti Managing Director Odisha Power Generating Company OPGC Shri Prashant Kumar Mahapatra. Thank you sir. Sir NTPC re thile au he had actually played a role in leading sir NTPC re he played a major role in setting up of supercritical units. Ame jete thermal power plant dekhu seta both technically mining group OPGC why they are so critical because they are handling process jota ki climate change pai bahut important. Semane ja leadership sir mane karibe sector re will be so important. Thank you so much. आमो सांगरे जॉइन करिवे एबे आमो मोस्ट बिलवेड श्री सुजीत कुमार जी से आमो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अछंती राज्यसभा रे रिप्रेजेंटिंग ओडिशा सो आई वुड रिक्वेस्ट सर प्लीज जॉइन अस बिकॉज़ ही हैज प्लेड अ रोल इन प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट फॉर ओडिशा मु जानि छी से बहुत पॉलिसी जो ओडिशा रे हेई छी आज हम देखि छु ग्रीन इनिशिएटिव और क्लाइमेट चेंज पर सरम को बहुत अवदान अछि आ से पे नेशनल लेवल रे तारो कंट्रीब्यूशन करचंती आई वुड नाउ रिक्वेस्ट श्री सुजीत कुमार टू प्लीज ग्रेस द डायस थैंक यू सो मच जानि छे किंतु आउ गोटे मु जो ताको रोल कहबी
He was also in part of consultative committee for Ministry of External Affairs, and he has worked in World Economic Forum. Therefore, sir also knows about the urgency of climate action and what all are happening at the international forums, and also what responsibility grassroots leadership need to play. So I'm going to start with sir, with you, that Odisha, as you rightly said, that they have gone into the second phase of state action plan for climate change. They have also identified ministries, जो priority ministries अच्छी हमरो agriculture, energy, forestry, industries and mining, जो सेमाने को key sectors निया जाए ची जो माने climate action को leadership नहीं करी है. So my question to you, sir, is from the corporate perspective, what do you think some of the collaborative initiatives could be there, which can actually play a considerable potential to impact climate change? Good afternoon. Corporate sector is one of the most important stakeholders. If we have to tackle the menace of climate change, then there is no way it can be done without the involvement, active involvement of the corporate sector. Some of you might have heard of this famous statement of Milton Friedman. Milton Friedman very famously had said, "The business of business is business," which is largely debunked now. Today, probably there is no credible company in the world which can say that I'll only focus on my shareholders. I'll only focus on profit making. I'll not think about the society, I'll not think about the environment. No business probably, or at least major business, can survive with this attitude. So everyone in the corporate world has understood that they have to follow what is now called the triple bottom line. Then after Milton Friedman's infamous now statement, corporate started talking of double bottom line, profit as well as society. Now they are talking about the triple bottom line, profit, society and environment. So, ma'am, your observation that whether corporate can play a big role, certainly they have to play a big role. We have the Companies Act of 2013, and there is a section in that act, section 135, which mandates that every company, subject to certain financial criteria, has to spend certain percentage, 2% of their net profit over the last 3 years on various activities. And one of the key activity mentioned in the section 135, subclause 4 is that they can spend on protecting and promoting the environment. We all know that Odisha is a mining state. Mining is one of the mainstay of our economy. Mining is a polluting industry. I did not tell that. Now, when you have a large chunk of our state revenues coming from the mining sector, when you have almost every mining giant of the country and many from outside the country as well, having a presence in the state, it is but natural that we expect the industry, and again I'm picking the mining industry because it's the largest industry, and we have here someone from the mining industry. So it is but natural that the expectation from the industry will be that they will do the contribution in engaging in sustainable mining activities, in ensuring that the spirit of law or the mandate of law is followed in letter and spirit. Some of you might know about a provision called the DMF, District Mineral Fund, wherein companies who are involved in extractive industries, they have to earmark a certain percentage of their profit, which has to be spent for periphery development of the region where the activities are happening. And we have districts like Jajpur, Sundargarh, Keonjhar, which add almost 700-800 crore to its kitty every year just through this DMF. So, government, of course, the district collector is the chairperson of the DMF, and there is a committee that decides how the money will be spent. But I think industry can play a big role
and these are some of the poorest districts. It's a typical resource curse. We have students of management and economics might have heard of resource curse, where you have the places or the countries with the maximum resources having the poorest human development indicators. Africa, continent of Africa being a typical example. And there are some districts in Odisha which have the highest concentration of ores, whether it's bauxite, iron ore, coal, or minor minerals, but they are some of the poorest districts of the state. I think the time has come that industry should take the lead, industry should step up its efforts, industry should come forward saying it's not only the government's responsibility. We have been in this state for decades. In the case of Tata's probably for a century, over a century. So the time has come for the industry to take leadership by saying that no, we have to do something to mitigate the ill effect of mining, mitigate the ill effects of climate change in the state of Odisha. And I think one of the major ways that can be done is by investing in research and development. We have some of the finest institutes in this country. We have IIT, we have NICER, we have ICER, we have the NIT in Laukla. There are many engineering colleges in the state. We have OUAT, which is working on climate change. You have CRRI in Cuttack. As a nation, we spend only 0.7% of our GDP on research and development. And that includes research on everything, on semiconductor, on pharmaceutical, on climate change, on culture. Just 0.7% of our budget GDP is spent on research and development. China spends 3.2. I was in Taiwan recently, I came back, they spent 3.8. US spends 3.2. Israel spends 4.2% of their budget on research and development. And large part of that budget comes from the private sector. In India, we have only 0.7% of our GDP being spent on research and development, R&D. And again, that too comes from the government sector. The private sector is almost non-existent in supporting research, R&D. And I don't want to single out any particular company or industry. It's across the board. So my request, I would urge the private sector, we have two industry captains here, I would urge them to engage with academia, with civil society in supporting R&D activities, particularly in supporting R&D activities given the context of the state, given that we are a disaster-prone state, given that Odisha government has done so much, most of its policies are aligned towards carbon neutral steps, or how can we become a climate change resilient state. So in this context, I think the industry should step up its effort and work with not only the government but also with civil society and academia in doing its bit to make Odisha a far more climate adaptive state. Thank you, sir. I will summarize at the end. My next question is to Shri Pankaj Satija. As you know, industry and mining is one of the priority sectors as far as climate action is concerned. And mining industry is under a lens, and your contribution will be so critical. So please, can you let us know that how is Tata Group, what is some of the efforts that they have taken or are planning in the area of climate action? Right. Thank you very much. So I'll begin this talk with my story on Bhagavad Puran. So the story comes from Bhagavad Puran. And once upon a time, King Parikshit, son of Abhimanyu, he was returning to his palace after conquering a war. And whatever gote adbhut drishya se dekhile, gote gay, gote sang, se manusya bujhiba bhasare kathavarta korthile. And what excited him when he went towards both the cow and the bull. And what he could see, that cow has tears in her eyes. And bull was having only one leg. And as per Bhagavad Puran, cow symbolizes Mother Earth and bull symbolizes the duty, and duty can be of an individual, of a corporate or a government or a bureaucrat. And the tears in her eyes because of the suffering the Mother Earth is going through. So the three legs which bull didn't have,
The first leg was austerity, what we call Sanjam. So we have followed the principle of Sangra. The austerity measures are not there. We are following the philosophy Yavat Jivet, Sukham Jivet, Rinam Pitva, Ritam Pivet, take loan and drink me. All those who are here, probably the previous generation were not taking loans, but all of us who are here, either they have a scooter loan or a car loan or a home loan. So that's the kind of philosophy we are going through. And that creates more pressure on consumerism, more pressure on land degradation, and then on the climate change. The second leg, which was not there, is the cleanliness, the Parimal Parivesh Katha, which we all are discussing. And we have polluted everything. Everything which surrounds us, we have polluted. It's a land, soil, water, whatever you name it, air. That's the second leg which was not there. And the third leg which was not there is the compassion, Karuna. We are not having any compassion towards any living being. And in the previous session which we were discussing, that we want to work in the interest of humans, not about the others. And the fourth leg, which was only there, it is Bhagavad Purana, it is told truthfulness, but if I infer again, the only truth which is constant is the climate change. So climate change is not new, it is happening from for a very long time. And if you read Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna, say Arjuna ko Gauchanta, say Sarvbhutani Kaunteya Prakirti Yanti Mamikam, Kalp Shaya Punahtani Kalpaddo Visajamyam. I mean, Kalp is 2.3 billion years. So every Kalp, all living beings comes to me, and when the new Kalp is created, I manifest them. So the climate change is there, but what has happened, we have made it more dynamic, more frequent. And as I was mentioning the three legs, so all the corporates, even Tata Group, they are also working on that. So the first is the willingness and the announcement. So Tata Group has made an announcement that by 2045 we will be net zero carbon emission. We are also measuring the scope 1, scope 2, scope 3 emissions, how much energy or how much impact we are doing on the climate change apart from the travel. We have taken a target of water, and I'll just give you a figure. In 2005 or 6, where per ton water consumption was more than 7 cubic meter, we have reduced to 3.5. And it is happening at all the locations. And biodiversity is one area which is always say the compassion. Sujit Kumar Sahab is from law background. And Article 51A says that it is the duty of every citizen to protect the environment and have compassion towards all living beings. So if you infer it with the Bhagavad Purana, the duty is the goal which was there, and compassion, the karma, the fourth leg, third leg which was not there. So what has been mentioned in the Bhagavad Purana is also in the constitution. And all the corporates, I mean, since we are from the mining background, we do mining, and as Sujit Kumar Sahab mentioned that mining is a negative activity, and we know that when we do mining, we create a lot of impact on biodiversity. So all our mining locations are studied, and assessment has been done by IUCN, and we have made our biodiversity management plans, and accordingly the biodiversity management projects are also identified. And as per those projects, we are working on it. We have made a target of no net loss as of now, because we don't want to make a very high target of net positive. As of now, we have taken a target of no net loss, that because of our activity, there should not be any negative impact on biodiversity. Once we have achieved that, we will try to move towards net positive. Thank you so much, sir. My next question is to Shri Prashant Kumar Mahapatra. We all know that India, is asked to answer a lot on coal, and it is an elephant in the room. Sir is representing, for you as far as thermal power plants are concerned, where we run our processes also. How do we handle pollution? How do we ash? So can you tell us, what is looking the way forward, and what is your vision as a head of an organization? Thank you very much for giving an opportunity, and it's really a great time to be here.
sitting along with the distinguished dignitaries. And as far as my involvement is there, I spent whole life, like 40 years on the coal and gas thermal power plant. And it just started like the last 3 to 4 decades. I'm talking about the India, and specifically these Indian conditions. ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ମାନେ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା କୋଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ହାଇଡ୍ରୋ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ହାଇଡ୍ରୋର ବି ପୋଜିସନ୍ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲି ଆମେ ଡୋମିନେଣ୍ଟ ଅଛୁ, କୋଲ୍ ଉପରେ ଡୋମିନେଣ୍ଟ ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାଖରେ 5ଟା ଗ୍ରିଡ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ହେଲା। So last 10 years you will find that our electrical system, the power system, is one of the best in the whole world, and we are very comfortable. Then this whole thing has started, like these emissions, this 2015 regulations, and all these things have come. So, our commitment with as a country, as a citizen, that we will switch over to this renewables. You see, coal power plant was inevitable because it was totally linked with our GDP, our growth, our per capita electricity consumption was very less. We wanted to be progressive, so we were totally dependent on the coal. And in India, if you see the 90s to 2010, I think before that is a huge number of boilers and turbines it has come. And today, if you see that coal thermal power plant will be around 30,000 megawatt, and hydro will be around say 50 to 60,000. In total, we will have an installed capacity of 3 to 4 lakhs megawatt. So after this renewable thing came, this renewable thing, we have been following it up, I think, since 18. I still remember in 1980, BEL was having this renewable solar plant of 100 kilowatt. The cost of the unit was almost like 22 rupees that time in 1982. I still remember that in 1982, 23 rupees, and the thermal was only 25 paise that time. So over the years it has gone up and gone up. So this coal price has gone up, and so in some time, I think last 2 to 3 years, the renewable has become cheaper than the coal. So now everybody understood that this renewables is going to be there. But the problem with the renewables is that it is available only some few hours in the day, say morning 6 to 2 o'clock, and after 2 o'clock, then again you have to be dependent on this, your conventional power plant. So it is like the coal power plants are not required, but it has to be there to meet the requirement of the renewables. So we, as a country, as a state, or as an organization, we have committed that we will be going for that. Like Honorable Minister told that 5 lakh megawatt we will be having by 2030. So if you see that, the whole world has spent a lot of, I think, energy, effort for the coal power plant. But the next, I think 30 to 40 years will be very crucial for this globe. So who has seen the future? Nobody has seen. But people are now contemplating with their experience that how the future will be. So from today, if you see that, yes, transition has started, we are already in the transition. That last summer, I have seen in the month of April and May, in Odisha SLDC, almost 15% of load between 11 o'clock to 2 o'clock was from the renewables. So it is going to be there. So maybe by 2030, that is the first milestone where we will be having this renewables share of 45%. Imagine that renewables will be holding your total power requirements at 2 lakh megawatt, and suddenly there is a problem with cloud power or some changes or some weather changes. So how that is going to be handled? So that is the challenge for all the now this power plant professional, that how to hold the grid in such conditions. So that is one challenge by 2030. Our Central Electricity Authority has been predicting that how it is going to be there. A typical, I think, terminology that is called flexible operations. The flexible operation will be the order of the day from 2024 onwards up to 30, where every day around
evening around 4 o'clock or 5 o'clock, all the coal power plant with the reserve capacity has to come and support the grid. So that is a big challenge not only for the grid operators, also for the generators, where all the equipments and all the services it has to be available. So the coal which has been, I think, there for almost 40 years in India as a economic requirement. So now it has to be now to have the role of a savior, like saving the grids. So that is one thing. In 2030 to 2050 is the time for that zero carbon activity, where all the industries, all the services, they will be trying for switching over to zero. India has committed to 2070 as the net zero, but before that we have to have many activities. Renewables is one of the activities we will only give you as relief, but to have a 24/7 renewable power, you will have to have so many other avenues. So other than this coal and this hydro, so we have to have certain things like 3 or 4 things like the nuclear. Unfortunately, we don't have much of that. Then the storage. Storage can be pumped storage and the battery storage. So that area also needs, I think, a lot of, we have to work on it in that, because we are still in the nascent stage. We are still in the very young stage. But Government of India and Government of Odisha also, we have plans that at least 5 to 7% storage we should have in the next 3 to 4 years. So that is one area where we have to put a lot of effort, because this totally depending on the renewables like solar or wind will be always, it will be like questionable, always there will be uncertainty will be there. So that is one thing. Between 2030 to 50, I think a lot of pump storage, and then battery storage, then hydrogen, then compressed air storage. Those things we have to work on it, so that we will have to go to the net zero in 2070. So the net zero means where you are not using any sort of carbon. So that is one thing one has to be very clear in their mind. To reach net zero, you have to have whatever available with you in the present, you have to utilize. So that is one of the tools is this coal power plant or the gas power plant, which can come and go the way required by the grid. So that is called flexible operation, and that flexible operation will be there in the power field for the next, I think, 10 years. So 10 years is going to be a big challenge for all the grid operator as well as the power plant operator to make their system, to keep their system healthy for meeting this requirement. Thank you so much, sir. Now I'll come back to Shri Sujit Kumar, sir. Sir, as you mentioned in your speech that Odisha's climate change vulnerabilities, are too many. Whether we talk of tropical, cyclones in the coastal districts, drought in western Odisha, its impact on agriculture. We have our district to grassroots leaders man aschanti. Apno kon message thibo tanko how to prepare and how to join this movement so that we can make it more and more impactful. देखो आम दिल्ली भुवनेश्वर बसिक पॉलिसी तैयारी कर किंतु तार इम्प्लीमेंटेशन हम पंचायत तार इम्प्लीमेंटेशन हम ब्लॉक लेवल जिते जो पर्यंत आम पंचायत फंक्शनरीज ब्लॉक फंक्शनरीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तांको आम इनवॉल्व करूँ आम क्लाइमेट चेंज फाइट तेणु से पर्यंत कौन क्लाइमेट एक्शन प्लान काम कर आमर 6818 पंचायत अच्छे ओडिशा तेणु जिते नुआ जो आसती सरपंच ठीक से गोटे निहाती फास्ट गोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम निहाती करवा दरकार कैपेसिटी बिल्डिंग करवा दरकार कहीं क्लाइमेट चेंज उपर बहुत अवेयरनेस ना गाँव स्तर में अवेयरनेस बहुत कम अच्छी तेणु किंतु से ही लोक सहित दिन राति मिसिक रोचे ही आज पंचायत को प्राय 1.5-2 कोटी टका फंड आवश्यक पंचायत तेणु सब एक्टिविटीज पंचायत स्तर में गाँव स्तर में पंचायत इज दि नोडल बॉडी तेणु जब आम इनवल्व न करवा तेणु कौन भावी एक्शन प्लान काम देवनी सिमिलरली आम ब्लॉक इज द यूनिट फॉर ऑल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन द ब्लॉक तेणु ब्लॉक लेवल आम पंचायत समिति सभ्य अच्छा
ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଦିସ୍ ଫାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ will be successful only if we are able to involve the three-tier Panchayati Raj. Our urban stuff is urban local bodies, municipality हो, NSC हो, municipality हो, corporation हो, councillors हो, mayor हो, chairman हो, तांको involve करें कि अभी हमें climate change ये जो चैलेंज को आम टैकल कर। तेणु मुझे खुशी मु धन्यवाद देवी नेचर के इनिशिएटिव को आज प्राय 150 जन आम PRI मेम्बर्स को इनभाइट कर। इनफैक्ट मुझे सेसन में रहा कि रही पारे से सेसन तेणु यहाँ रोचे कि मोर वार्ता यहाँ यू आर द फ्रंटलाइन फाइट। आपण मैंने ही प्रथम योद्धा क्लाइमेट चेंज योद्धे। आपण मैंने निज गाँव पंचायत निजर समिति आपण मैंने जो कार्य करेंगे सेटा ही आगामी दिन में क्लाइमेट चेंज सब बड़ शक्ति हे। तेणु जेहेतु आप लोकों सहित मिसिक रोचते जोड़िक रोचते ग्राम सभा अनुरोध करी ओडिशा सरकार को भी जो मैंने भी अच्छा अंततः प्रत्येक 6 मास थे गोटे ग्राम सभा करा जाओ जो थे कि केवल ये जो जलवायु परिवर्तन उपरे आलोचना हो। मु अनुरोध भी करी राज्य सरकार को कि असेंबली में गोटे सेशन स्पेशल सेशन डका जो टू डिस्कस क्लाइमेट चेंज से द्वारा सीरियसनेस जमा पड़ो द्वारा आम मैंने बार्ता नहीं पार जे ओडिशा सरकार आउ पंचायत सभा आप क्लाइमेट चेंज बहुत सीरियस अच्छे। तेणु निज निज पंचायत में आप प्रपोज करूँ ग्राम सभा गोटे करने अनुरोध करी जदि आम सेया कर समस्त मिसिक भाई ग्राम स्तर भी पंचायत स्तर भी क्लाइमेट चेंज जो युद्ध आरंभ हो। Thank you so much, sir. Shri Pankaj Satija sir, Tata Group is working with the populace, in the state and the districts. How do you, engage with the stakeholders and, grassroots leaders, village panchayats to make your climate action successful? Can you give some direction? So, I will break this part into short term and long term. So before that, I will again narrate one story. The story belongs to Bhagwan Vishwakarma. तांकर गोटे झील थिला संजना बाहा होता शुरू देवता एंड समस्त बाबा पचारुंट झील को तुम केमती अच्छ। So Bhagwan Vishwakarma also asked Sanjana how your married life has been, and Sanjana कहले कि मुझे ताके साथे रही पारुनी, so brilliant, so luminous, so bright, then I'm not able to go towards him. And Bhagwan Vishwakarma reduced the brilliance of sun by 1/8 or 1/10 and created many weapons, Sudarshan Chakra, Trishul. And if you read the scriptures of last time, all the war over demons were either Lord Vishnu using Sudarshan Chakra to kill the demon, or Bhagavan Shiv using the Trishul to kill the demon. So today demon, if I see, it is climate change and carbonization. And if I see the rescuer again, it is Lord Sun, Suryadevata. So a lot of work has been done in Europe in 2018 and 19. EU has passed many directives, and those directives are mostly on making the village self-reliant. So around 2 lakhs Europeans are having around 7,000 energy community, and each village they are trying that the power generation through solar happen at the same place, and power consumers are also at the same place. And why I am trying to make a scenario or example of Europe, because India has seen a great movement in milk. In Gujarat and many places, and very recently Modhera in Gujarat has become solar village. So Odisha has a great potential. That is a long term I am saying, and I see it is a great possibility because we have seen this potential. What we are doing as of now, in consultation with the community, the engagement part related to climate change and others, it is going in a different state. So we have partnered with TERI in Paris Agreement in 2015. One of the enabler was to educate the youth on climate change.
So with TERI we have done the partnership, it's 4th year running. We are focusing more on class 6 to class 8 students, and then we are supplementing with those things which are not there in classroom. And I would just like to draw 2 examples of what we teach in our school. So prior अपन भी देखी थी class 5 और class 6 अपन भी solve करते हुए mathematics question in class 5 and class 6 that a milkman buys a milk at 10 rupees per liter and he adds 5 liters of water and sells the milk at so price. So how much profit he is making? So while you are educating him for the maths, but you are also giving subtly a message that if you want to make profit, you have to do this unethical thing. And the similar question used to be that a hunter came, he saw 10 birds on a tree, he fired one shot, 2 birds came down, how many birds were there? So at one point you are trying to educate the child on mathematics, but also you are saying that killing a bird is normal, it's not unusual. So we are engaging, and we have, this is the 4th year running, and you may see in net, children have written a book and we have compiled a book called Meri Kahani. It's around 35 schools, and we have touched more than 10,000 students, and we had a very good, I would say, engagement in COVID time. With the children at home, they were using the waste paper. So each year we come with a team on waste to wealth, biodiversity. So this is on the students level. For the PRI members and community, we have many programs on biodiversity. Some of them are Prajatiya Khadotsav, which we are trying to give a sense of how the indigenous community has a rich food culture. Because many times we feel that they drink only haria, but it is not true. They have many delicacies which are from the forest produce. People are not aware, so we wanted to break the myth. And this is a regular program which we carry. There is one program on Greek therapy where we bring professors from Ayurvedic college and the community who can deliberate or discuss on the medicinal value of the plant, and then we learning from that is that we make ourselves aware, and then we make more and more plantation in our medicinal part. So my only submission here is that climate change is a very complex issue. It needs solutions from every quarter of society, and we need to engage with every quarter of society. What I have told is not a big thing, but a little step as a level minister has to create a big impact. Thank you, sir. Prashant sir, we have seen, like the problem of fly ash. There is now, we are seeing some of the solutions come. How do you see that? This electric vehicles, as fast as possible. I think one area we are delaying again. So again, I think the whole country will get ahead. So the better again will be followed. So that is one area we have to have more, I think, emphasis and more. These are two areas which will give you a lot of students and a lot of, I think, benefits directly. Thank you, sir. Now, we'll last question round. Same question for Pat. Yes, sir. या उपरे मुझे ऐड करना चाहूँ अपन जानी थे कोविड महामारी समय ओडिशार कोविड मैनेजमेंट देश सारा प्रशंसा पाई तार गोटे मुख्य धारा थिला पंचायती राज को इनवॉल्व कराइला सामिल कराइला कोविड मैनेजमेंट अपन जानी थे सरपंच मान को कलेक्टर पावर दिया प्रत्येक पंचायत गोटे जो आइसोलेशन सेंटर करी से पंचायत को दायित्व देता निज निज पंचायत केमती कोविड को रेस्ट्रिक्ट करने तो यही मॉडलटा मुझे भावुँ ये मॉडल ये सक्सेसफुल मॉडल आम पाखे अच्छी उदाहरण अच्छी ये मॉडल को आम स्टडी करी जो क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन मिटिगेशन जो आम सिमिलर गोटे मॉडल डेवलप कर जो थी कि पंचायत रेस्पॉन्सिबिलिटी नेबे निज निज पंचायत छोटे छोटे कार्य गछ लगेगा सिंगल यूज प्लास्टिक यूज न करवा निज पंचायत एनर्जी कंजर्वेशन करवा निज निज पंचायत जदि सरपंच मैंने अन्य PRI मेम्बर्स मैंने से पंचायतवासी गाँव लोक मैंने निज पंचायत से रेस्पॉन्सिबिलिटी नेबे कि आम पंचायत में आम क्लाइमेट चेंज केमती न माने तार जो कजेस और कन्सिक्वेंसेस दुटा को आम से कंट्रोल करूँ ताले मुझे भावुँ दैट विल एग्रीगेट टू दी क्लाइमेट एक्शन प्लान और पंचायत मैंने प्रति वर्ष गोटे BDP करती GPDP करती विलेज डेवलपमेंट प्लान ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान से GPDP जब क्लाइमेट चेंज रिलेटेड
एक्टिविटीज को शामिल करेंगे ताकि मैं भावुँ यहाँ मैंने गोटे फाइन मॉडल आइडियल मॉडल हम फॉर द एंटायर आउ शेष में मुझे कह कॉर्पोरेट सेक्टर लेट देम स्टार्ट एडॉप्टिंग based on the competence, based on the capability, the revenue maybe of the corporate, you can start adopting a couple of panchayats. Large corporates may adopt hundreds of panchayats and ensure that these panchayats live up to the expectation, live up to the goal of mitigating climate change in their respective panchayats. Then I think it will be a wonderful partnership between the corporate sector and the PRA, which we haven't seen until now. Thank you, sir. Last, I mean, esteemed panelists, manako gote last question. What is your message, like jo our initiative naichanti NCI congratulations, and all of us have come together. Apna kon message debe aji start hela gote movement badiya, how to take it further, and so that it is it creates a model for the world from Odisha. We can start with you, sir. Prashant sir, what is your message to all of us? More clean and more green, and renewable should be the ultimate thing. Okay. Pankaj sir? I'll quote Arthashastra. Kautilya has said that caste pashan dhatunam krittva bhavan sevanam saddha cha tatha siddho dashvishnu prasadate. I mean, caste, wood, pashan, stone, dhatu, metal, these are blessings of Lord Vishnu. So my message here is that first do from your own. Go to your house, open your cupboard and count how many clothes you have and see that how many you need. The moment you start using your self-austerity measures and treating each object or each living being as compassionate as you treat yourself, probably the things will improve and change. Thank you. Okay, sir. Sujit sir? I'll echo what my previous speaker has said. Gandhiji had said, be the change you want to see in the world. So I think mitigating climate change, tackling climate change is not and should not be the only responsibility. It should not be the responsibility of only the government. It is each one of us responsibility. आम जब निज जीवन में छोट छोट जिन करा मुझे कहली जो गच लगे आम सब बहुत समय आम लाइट फैन ऑन कर छाड़ी दूँ छोटे एसी ऑन कर छाड़ी दूँ से छोटे छोटे जिन जब आम प्लास्टिक यूज न कर सिंगल यूज प्लास्टिक यूज न करा जदि आम क्लीन रखा निज एनवायरमेंट को तेणु ये छोटे जिन जब आम कर पानी टैप आम खोला रखी दूँ बहुत समय दिस ऑल एड अप लगे कि गोटे बल्ब जलुची कौन है गोटे पानी लीक हो कौन है जदि एवरी बिट काउंट्स कहते जमी बूंद बूंद से सागर बनता है तो जदि इफ वी कंटिन्यू विथ दिस स्मॉल एफर्ट in our own personal lives, then I think this will all add up and we will all become climate change warriors and it will not be the responsibility only of the government. So I think be the change you want to see in the world. Thank you, sir. We'll quickly summarize the main points. Ajiro our takeaway from this session. Sujit sir mentioned karle au ebe amo business as usual chalibani. He gave specific example of mining industry. He also connected human development index. Amaro jo development index au amo jo Odisha ro resource ete achi hele bi ame kemti taku badai pariba. One suggestion he gave corporates is that apne R&D set up karantu in consultation with academics and civil society who will do research on small researchers, big researchers on climate action. Thank you so much. Lastly से कहले disaster रो जो कोविड रो आम ओडिशा पाखरे मॉडल अछि आमे केमिति सेटा को गोटे क्लाइमेट एक्शन रो मॉडल ग्रासरूट पाई तैयारी करिबा से बहुत बढ़िया गोटे कहले जो स्पेशल असेंबली सेशन ग्राम सभा आमे केमिति करी इटा नै जिबा. Thank you so much, sir. We'll take this initiative forward under your guidance. Shri Pankaj, as I told you, Tata Group has always led with example. He mentioned that how they are getting, I also read that IUCN is doing your biodiversity audit. He committed that we are today targeting for no net loss, but we want to go positive in future. And how they are working on village self-reliant model, how milk cooperatives can be, learnings can be taken and we can move forward with that. Working with the youth and as from school children, how we can take forward the initiative. Our Prashant sir gote बहुत
डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम करे आमे कहूछु जे आमे कोल छाडी देबा रिन्यूएबल कहबा किंतु रिन्यूएबल को बहुत जण वेरिएबल एनर्जी कहंती ग्रिड चालिबो जदी सेटा स्टेबल रहबो गोटे वेरिएबल एनर्जी को केमती आमे कॉम्प्लीमेंट करबा he has the most difficult task I think and he said by 2030 we have to experiment with the flexible operations and he also said how many pump storage so it is easier to say that we will do by 2030 or 2070 but the challenges are huge and unless all of us are come together it is not possible. Thank you so much esteemed panelists, we want your blessings so that we begin this movement and reach and thank you grassroots leaders for taking the agenda forward. Apun samasto manku thank you so much and let us make a big goodwill. Thank you. Now over to Sulagna, we are going to have a small honoring session. Thank you so much everyone. I request Shrikant to present Angavastra and token of love to Sujit Kumarji one more time, a different session. So once again we would like to shower in with all the love and appreciation from NCI family for being here, for enlightening us with his ideas, thoughts. To Shri Prashant Kumar Mahapatra, Managing Director, Odisha Power Generation Corporation Limited. Thank you, sir, for sharing your ideas with us. To Shri Pankaj Kumar Satija, Managing Director, Tata Steel Mining Limited, for those wonderful quotes citing Upanishads, our own culture, tradition, and how we can use those to maintain a healthy planet. Thank you very much, sir. Those words meant a lot. These tokens of gratitude will remind the dignitaries of this day and our love for them and how much their presence means to make this national summit special and successful. And to our wonderful moderator, Dr. Sutapapati, thank you so much for being the befitting moderator for the session, asking so many relevant questions, summing it up so well. Thank you very much. As they say, moderator does the most. Thank you very much. Can we have a round of applause for the panelists and the moderator, please, for the wonderful session, role of corporates in climate resilience efforts in Odisha. Thank you, Shrikant, for doing the honors. With this, we wind up this session. We would once again like to thank all the speakers and the moderator. A warm welcome to the panel and to our moderator. May I निमंत्रण अनुरोध कि भितर को आसिक आसन ग्रहण करेंगे एवं वर्तमान सेशन आरंभ होगा. सर आरंभ करबा पूर्व आमे ओडिया भारी बढ़िया कहू हमर सभ्यतार गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट होची हम गेस्ट मानको अतिथि को स्वागत जणैबा हम समस्तक तरफ रु आमे हमर मंचासन अतिथि को आज रही समिट को कार्यक्रम को सम्मान सह स्वागत जणैबा. मैडम पद्मा महाती. I would request her to kindly felicitate our dignitaries in front of us, please. आज्ञा पुणी थे मन पकड़ा चाहे खाइबा पर टिके मांदा लगे मु जानी किंतु जोरदार ताली टे निहाती देबे कारण ए समिट ए कार्यक्रम आपन पई आपन को भेटिबा पई हम महामान्य अतिथि आज एठी उपस्थित हेचंती. So it's indeed an honor for us to have their presence amongst you.
Thank you so much, Shrikant sir, for doing this set of honors. And now we begin the session of grassroots leadership and climate action. I would request our moderator of the session, Shri Jyoti Raj Patra sir, to take up the proceedings now. Thank you. Thank you for that very energetic start. Launch for a session is difficult. Focus but we'll try to interactive रखिवा session so that we spend some good time discussion करिया. इस सेशन रो जो टाइटल अछि आपण माने जानथिबे जलवायु परिवर्तन रे तृणमूल स्तर रो जो लीडरशिप बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आज रो जो सेशन पूर्व रही थिला आपण माने मन पकथिबे जो हमर चीफ गेस्ट आस्थिले ऑनरेबल मिनिस्टर प्लस हमर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी कहथिले जे एंगेजिंग दी पीआरआई मेंबर्स बहुत इंपोर्टेंट एंड एज मॉडरेटर मते बहुत खुशी लागुछि जे आज हम गहन रे ऑलमोस्ट 150 जन पीआरआई मेंबर्स अछंती सब डिस्ट्रिक्ट सो लेट अस हैव ए बिग राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर ऑल द पीआरआई मेंबर्स. सेशन रे हम डिस्कस करिबा जे जलवायु परिवर्तन रे जो सब कार्यक्रम हेबो से जिनस को आगे नेबा पई जो हमर पीआरआई मेंबर्स माने अछंती से माने को हिसाब रे काम करि पारिबे. सो जलवायु परिवर्तन निश्चित गोटे अनेक समय नुआ जिनस टाइप लगी था किंतु लेट अस हियर फ्रॉम द एक्सपर्ट्स आम गहन अच्छी आपण मैंने देखी पारे आमर जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स दे कम फ्रॉम डिफरेंट फील्ड बहुत अलग अलग सेक्टर वाइज. सर्वप्रथम मु अनुरोध करी आमर प्रथम स्पीकर डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार भारत प्रशासनिक सेवा अधिकारी वर्तमान सार अच्छी एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज बहुत इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सर आपण मत जो प्लीज जो तृणमूल स्तर रे जलवायु परिवर्तन पई विभिन्न जो कार्यक्रम आपण मिनिस्ट्री कि आपण एक्सपीरियंस यू कैन से 10 मिनट सर. थैंक यू. हमार जो नेचर केयर इनिशिएटिव और ताका संस्था और जिते संस्था आज समावेश का आयोजन कर सकते बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई जनाऊँ कि से माने माने मत लगुच भारतवर्ष यहाँ पर्पज गोटे समावेश जो कि ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन जो पंचायत मानी नहीं केमती अवेयरनेस क्रिएट करा तो से प्रथम जिते शक्ति बाबू मो पाखे आसिले दिल्ली आम ऑफिस को कहले कि आम एम करुचे मु भारी खुशी है कहीं मास आगु जस्ट 3-4 मास आगु आम मंत्रालय सेमती गोटे आम गोटे गाइडलाइन जो डिसास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव बाय पंचायत इंस्टीट्यूशंस से ऊपर आम गाइडलाइन आम ऑनरेबल मिनिस्टर ताको रिलीज करते दिल्ली पंचायती राज मिनिस्टर किंतु तापरे मंत्री एटा जो पंचायत जो रोल डिसास्टर गाइडलाइन रिलीज होला परे किंतु तळरू आम कोठी स्टेट रो डिस्ट्रिक्ट सेमती समावेश होला नहीं. सो आई थिंक तापरे दिस इज द फर्स्ट opportunity and that too being organized by nature care. So I think they are deserve lot of credit. ताको निश्चय गोटे आमे ताको अप्रिशिएट करबा कथा ताको माने जो बढ़िया करछंती आ जो पंचायत पाखा की 200-250 लोग आकी करी आज जो करछंती दैट इज आई थिंक बहुत बड़ जिनिस कराई छी. और मु सत्य कहथिले कि जदी एठी मु एठी कहबा उत्तम आसी मु बेसी एठी शिखर को आसी कि जदी एठी सक्सेसफुल होची ए मॉडल आमे अन्य स्टेट रे भी जाके देखे पंचायत मार्ग इंटरेक्शन करिके ताका भी केमती डिसास्टर मैनेजमेंट रा ताको रोल आनी पारिबा से जिसो आमे बढ़ेबा. तो आपना माने जमती जानुछंती जो डिसास्टर मैनेजमेंट किछि नुवा जिनिस नुवा एटा पाखा पाखी डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पाखा 20 वर्ष आगु कबू होई सारछि. तो और सेमती डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान नेशनल लेवल स्टेट लेवल से सब तैयारी होछि. काम पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान भी तैयारी होछि किंतु माने जो प्लान जो होछि सेटा हम ऊपर लेवल रहछि से तड़बु होई के आसुना. सो एटा गोटा नाम आमे जो फील करूछि भारत सरकार रा राजा कि एबे जो समय आती जाई छी कि जो पंचायत जो कि हमर जो लास्ट ईयर ऑफ गवर्नेंस
जो लोक सांगे पूरा जड़ित होकर अच्छा और जो माने कम्युनिटी मैंने पंचायत जो होती लोक सांगे सांगे रोचंती कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो कराई जदि तांकु नहीं करी जदि आमे पंचायत लेवल रही प्रति पंचायत लेवल में जदि डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान प्रति पंचायत जदि कराई पारिबो देन माने हमर पूरा जो तड़ ऊपर जो प्लानिंग हुए से जिनिस हे पारिबो सो सेति पई एबे हमर प्रयास अछि जो आमे जो गाइडलाइन जो कराई छी कि प्रति पंचायत रो जेमती गोटे प्रति पंचायत रो जीपीडीपी तैयारी हुए सेमती प्रति पंचायत रो तांक गोटे डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान की तैयारी हेबा किंतु एटा कहि देबा सा ताकू करबा पई आमे जान आपण माने जानथिबे गुडाए माने ए बढ़िया गोटे अवेयरनेस दरकार गुडाए ताका लोक मानव को कैपेसिटी बिल्डिंग दरकार ट्रेनिंग दरकार तो हुए तो जदी आज हम यहाँ बिगिनिंग करू छु सो एटा वर्ष लागि पारे 2 वर्ष 3 वर्ष जहाँ लागिबो निश्चय आमे प्रति पंचायत रो गोटे डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयारी कराबा को सक्षम हेबो आ से जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो प्लान पंचायत रो तैयारी हेबो से प्लान तैयारी हेबो लोक मानव द्वारा से गाइडलाइन अच्छी किंतु गाइडलाइन खाली करते तो होनी से जो पर्यंत कम्युनिटी और गांव लोक से भीतर न पशिबे से लोक मानक प्लानिंग हो पारिबो तो सेति भाई एबे हमर चिंता ये अछि कि ए बढ़िया समावेश करके तापर जिला लेवल रहू ब्लॉक लेवल रहू और सब गोटे प्लान रा जेमती जीपीडीपी तैयारी होची सेमती प्रति पंचायत रा गोटे कन्वर्जेंस लेके एति खाली गोटे मिनिस्ट्री गोटे डिपार्टमेंट काम हुए एटा जते बडा आप देखुथिबे जते बडा कोठी बन्या बात आतुची 20 डिपार्टमेंट 25 डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट मिसी काम करछथि तो से सब डिपार्टमेंट जदी पंचायत लेवल रे जदी तार कन्वर्जेंस और जो पंचायत बंधु माने छथि से माने करै पारि है कि पंचायत से माने लोगों का प्रॉब्लम जानू छथि से जानू छथि को बाते केते बड़े संभावित अछि और कोन तार इफेक्ट पड़े और केमती तार मुकाबला करी हो सो दैट्स व्हाई एबे ई जिसो करा जीवो और जो अपना गोटे जिसे जानि था तो कि भारत रो जो गोटे जो एस्टिमेट कराई छी पाखा पाखी 60 भाग माने 60 भाग जो भारत रो लैंड मास माने भाषा कहबो गले 60 भाग भारत रो पंचायत दे आर प्रोन टू नेचुरल कैलामिटी सम टाइम से फ्लड होई पारे ड्राउट होई पारे बन्या होई पारे वात्या होई पारे जहाँ होई पारी तो जदि 60 भाग अपना चिंता करू छथि हमर ई सब आर प्रोन टू द नेचुरल कैलामिटी और 70 भाग जो एरिया चाष होची दे आर वल्नरेबल टू ड्राउट सेटा भी अछि तो ई सब जिनिस जदि एते आकार अछि जदि आमे मूलर जदि भलो प्लानिंग न करिबा खाली आमे गोटे साइड रे डेवलपमेंट काम करि चलिबा और उन्नयन मूलक कार्य करि चलिबा किंतु ए पटे जो नेचुरल कैलामिटी पय जदि प्लानिंग न करिबा सो गोटे विराट गोटे कोन आसे आपन जेते डेवलपमेंट कर करथिबे 5-10 वर्ष रे से गोटे नेचुरल कैलामिटी धोई पड़िबो सो एटा नाउ एबे आपन माने एटा भी गोटे जानिथिबे कि भारत रो जो भारत सरकार होंतु राज्य सरकार होंतु से जो कन्वेंशन जो कैलामिटी जो क्लाइमेट कन्वेंशन से समस्त को पाई हमें गोटे तापाई साइन करिछु कि आसंता 2030 मसिया सुधा हमें जो क्लाइमेट रो इशू अछि ताको केमती हमें हैंडल करिबा सो ई सब जिनिस जो आपस रे सब जिनिस जड़ित अपना का नेचुरल कैलामिटी हो क्लाइमेट कन्वेंशन हो यही सब जिनिस एकदम दरकार और यही गोटे टाइम बाती जाय छी कि पंचायत रु सब हमर जो भाई बंधु माने सन्ती तांकु अवेयरनेस आनी करी पंचायत लेवल रे जो डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान अते डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयारी केमते हो से आपन खाली गोटे दुटा स्कीम डिपार्टमेंट को नहीं कहि पारिबे सेटा जो डिपार्टमेंट रो से जड़ित हो सो कृषि विभाग हो चाष विभाग हो कि आपनकर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हो चाहे जे डिपार्टमेंट हो तो सब स्कूल डिपार्टमेंट हो कि आपनकर हेल्थ डिपार्टमेंट हो सब डिपार्टमेंट रो से भितर प्लानिंग दरकार तो जदि आमे ए जिस आज रु जदि प्लानिंग चेष्टा करिबा आमे निश्चय 2 वर्ष 3 वर्ष भितर एक प्रति पंचायत रो गोटे डिसास्टर प्लान गोटे तैयारी करि पारिबा सो आई थिंक आज जो कन्वेंशन अछि एही कन्वेंशन रु एही गोटे जिनिस आज मेसेज एही सब जिनिस जीवा कथा आज बहुत जिनिस आमे एठी बसी करि पारबानी किंतु परफेक्ट गोटे मेसेज जाओ फर्स्ट स्टेप आज निया जाओ कि आमे कन्वर्जेंस नहीं करी सब डिपार्टमेंट रो पंचायत स्तर केमती गोटे डिसास्टर प्लान तैयारी करबा काहे प्रति पंचायत रो अवस्था रो माने कोठी फ्लड अफेक्टेड कोठी ड्राउट अफेक्टेड कोठी साइक्लोन अफेक्टेड
सो एवरी पंचायत रो जो आमे एठी भुवनेश्वर बसी को दिल्ली बसी को प्लानिंग करिना से आपन माने ही से प्लानिंग करि पारिबे। सो मु और बेसी एठी समय लोग चाहिए मु खाली या कहबा चाहूची कि हमर जो मंत्रालय एही दिशार एबे टिके आरंभ करछंती और जो नेचर केयर इनिशिएटिव आज प्रथम थ्रे ऑर्गेनाइजेशन गोटे करिसंती सेटा समस्त को गोटे स्टेप निया छी और आसंता ए बढ़िया जदी जिस गांव को मैसेज जीवो से गुडाई आमे से दिशा रे गोटे भलो गोटे सिस्टमैटिक स्टेप नेकी गोटे भलो प्लानिंग तैयारी करि पाइबो। धन्यवाद सर। अब धन्यवाद आपन जो जिनस कहले बहुत इंपोर्टेंट जिनस कोस्टल रे फ्लडिंग हमर वेस्टर्न ओडिसा रे ड्राउट सो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक डेफिनेटली ए जिनस को हम आकु नबा। वर्तमान मु आसीबी हमर नेक्स्ट स्पीकर मैडम पद्मा महांती को पाकु आपन को एक्सपीरियंस टिके आपन शेयर करबे इन टर्म्स प्लीज मैडम। all the dignitaries on and off the dais, nature care initiative रो समस्त सदस्य माने, सबु पंचायत रो आसीथिबा भाइयो भौणी माने समस्ती को मोर नमस्कार। जय जगन्नाथ। मो भाबी कि तासे बहुत किछि साइंस कहबी बहुत किछि मो प्रोफेशन विषय कहबी जगन्नाथ को देखिले सब भूल जाए तापरे भाबे जगन्नाथ को विषय कहबी आउ आपण माने जो माने सब गाँ गहली विभिन्न पंचायत रे आछंती आपण माने एक्सपीरियंस रे मोठो हुए तो बहुत अधिका एई सब्जेक्ट को नै किया जे तो आपण मानकठो किछि सुनिबी किछि सिखिबी जदी आमर भी जेमति मॉडरेटर कहिले मो जो अनुभूति अछि ता विषय रे किछि कहबी तेनो पोस्ट लर्न सेशन रे मोर इफ आई हैव 10 मिनिट्स आई वुड रिक्वेस्ट दैट लेट इट बी एन इंटरैक्टिव सेशन। आपण मानकु किछि मु सुनिबी आपण माने मोठो किछि सुनिबे। ओके ओके डन। तो मोर घर हला कटक मो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर 2001 बैच काडर हला केरल काडर रे मोर फर्स्ट पोस्टिंग हेतला। मो सेठी पेरियार टाइगर रिजर्व बेली गोटे टाइगर वन प्रकल्प वन संकेत रे मो डेप्यूटी डायरेक्टर भाबे काम करथिली। तापर ओडिसा रे आसी के ओडिसा रे पासपोर्ट ऑफिसर भाबे काम करली। देन आई वेंट बैक एज डायरेक्टर एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ केरला। जेतल मुझे गली सेठी मो जानिली जे हमर गोटे नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज अछि। आपण मन जानि छथि गोटे नेशनल लेवल रे नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज अछि। केते जण जानि छथि? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट कंट्री रे गोटे नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज को अडैप्ट करिया पई हमें क्लाइमेट रो जो इंपैक्ट्स होची ताको अडैप्ट करिया पई तो मिटिगेट करिया पई गोटे अच्छी तार गोटे सब राज्य रे स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज अछि। सेटा के जण जानछंती? अच्छा मु द डायरेक्टर एनवायरनमेंट हे की गली एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट को मु देखली हम केरला स्टेट पे भी गोटे स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज अछि। 2014 मसिया रे सेटा तयारी हिची यूएनडीपी रो सहाय रे सेटा तयारी हितला किंतु सेटा सेपत मिनिस्ट्री रो वेबसाइट रे अपलोड भी हिनथला 2016 मसिया जे तो गला पे कुहा कोई करी कि सेटा अपलोड हैला तब हम देखिरो जे सेटा जो हमें अपलोड करले ऑलरेडी 5 वर्ष पूर्ण हे गेलनी। So we had to rework on it. तापरे luckily सेते बेले गोटे कॉन्फ्रेंस होतला बैंकॉक रे क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस मु सेठी की रिप्रेजेंट करथिली मोर गोटे काम को प्रेजेंट करिया पई तो सेते हम देखि जे इंडोनेशिया रे लोकल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज बेली गोटे जणे तांगरे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करछि। लास्ट जो माने बसी चंती बुझी परचंती मु कोन कहूची ए पचेरिबी सल्ला पर ओके। तो सेथरे कोन हैला जे स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज विषय टी कहबी सेथरे बहुत इंपोर्टेंट सेक्टर्स थाए लाइक टूरिज्म हेल्थ फिशरीज वाटर रिसोर्सेस फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी can anyone help me with the other sectors animal husbandry coastal and marine resources एमती बहुत गुडे सेक्टर थाए सब सेक्टर रो गोटे गोटे प्लान थाए जे क्लाइमेट चेंज हेले क्लाइमेट चेंज ता कोन चेंज इन टेंपरेचर चेंज इन रेनफॉल बेसिकली टेंपरेचर और रेनफॉल को ने आमे बेसिक डेटा को नेकी गोटे क्लाइमेट चेंज होची बिली कहूछु जो क्लाइमेट चेंज जो होची और ओडिया रे परिस्थिति परिवर्तन होची सेटा केमती होची रेनफॉल बहुत बढ़ी जाउची कि ड्राउट होची कि फ्लड होची कि लैंडस्लाइड होची कि गरम होची हमको बहुत
we have created heat islands सेतले हम कहू climate change होचे तो climate change रो impact सब agriculture ऊपर climate change रो impact कोन animal livestock हम जो गाय गोरु रखु छु ता ऊपर climate change रो impact कोन tourism ऊपर कोन health ऊपर कोन हमरा जल जीवन ऊपर कोन ता पई state action plan थाए तो मु से इंडोनेशिया रे सुनिली जे गोटे लोकल लेवल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज भी करा जाउची तापरे आमे सेठो फेरी करी आम स्टेट पाई केरला स्टेट पाई वी स्टार्टेड ड्राफ्टिंग जोटा कि मो पाखे डॉक्यूमेंट अछि आई विल लीव इट विद द नेचर केयर इनिशिएटिव एटा को ओडिया रे ट्रांसलेट करी करी समस्त को दबा पाई आमे बहुत सिंपल फॉर्मेट तयारी कलो जोथरे कि सब केरल रे 941 टी पंचायत अछि तो आमे सब पंचायत मेंबर्स 941 रु प्राय 500 पंचायत को आमे ट्रेनिंग देलु केमिति से माने गोटे लोकल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज लिखे इट्स ओनली अ 4 पेज डॉक्यूमेंट अपन सेठ खाली 4 पेज रे डाटा भर्ती करिवे एंड अपन को जो पंचायत प्लान अछि तार गोटे चैप्टर हबो एलएपीसीसी एंड दैट इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस आपण मान को एक्सपीरियंस आपण मान को अनुभूति आपण मान को लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज आ आपण मानकर दैनंदिन जीवन रे आपण केमिति यूज करूचंती पानी को केमिति यूज करूचंती एग्रीकल्चर रे कोन करूचंती सब नेकी एलएपीसीसी हबो तापरे आ गोटे एग्जांपल मु शेयर करी जते मु 2 वर्ष परे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट रो पुनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बैक कली आई वाज पोस्टेड एज सीसीएफ इको डेवलपमेंट एंड ट्राइबल वेलफेयर सेते बे यूएनडीपी रो प्रोजेक्ट थिला हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप प्रोजेक्ट जोथरे कि 11टा पंचायत और 8टा डिवीजन संगे मु काम करथिली त हमें पुणी सेटा हाई रेंज रे थिला माने हमर जेमति कोरापुट रायगढ़ सेमति माने माउंटेन एरिया रे थिला सेठी हमें 11टा पंचायत रे एई एलएपीसीसी को ड्राफ्ट भी करलो आ ताको इंप्लीमेंट भी करेलु सो इट इज नॉट जस्ट अ ड्राफ्ट इट्स नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट एटा हमें इंप्लीमेंट भी कर परिबा और तार किछिटा एग्जांपल मु कहिबी हमर चिन्नार पेली गोटे छोटो गाँव सेठी ट्राइब मुधुबन ट्राइबल्स रहंती सेठी 24 प्रकार मांडिया होतला रागी होतला सो दैट वाज ऑल लॉस्ट ओवर टाइम काहे लोक सेठी रागी न खाइ के दे हैड शिफ्टेड टू राइस अब भात को शिफ्ट कला कोन होला तांको भीतर डायबिटीज बहुत बढ़ी जाउतला तो आमे ताको पुनर्जीवनम बेली गोटे पर्टिकुलर गोटे प्रोजेक्ट ड्राफ्ट करिकी आमे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रो एग्रो क्लाइमेटिक डिवीजन संगरे कोऑर्डिनेट करिकी आमे 24 प्रकार रो मांडिया वैरायटी को रिवाइव कलु तार कल्टीवर्स को रिवाइव कलु से माने सेटा ग्रो कले से खाइ पुणी से खाइबा आरंभ कले सिमिलरली 16 प्रकार बीन वैरायटी जोटा कि ऑलरेडी लॉस्ट थिला ताको आमे रिवाइव कर परलु क्लाइमेट स्मार्ट हाउसिंग आम गाँ गहली रे सबले आगर कोन थिला चाळ घर थिला एबे चाळ घर देखियो को मिलुची कोठी मिलुची गोटे गोटे मिलुची मु एबे केरल रे आसी कि मोर छोट जमी अछि भुवनेश्वर रे आई थॉट आई विल गो फॉर अ मड हाउस लोक सब हसिले तापरे मु कहले कोठी क्ले ब्रिक्स मड ब्रिक्स कोठी मिलुची जत्ते पैसा पड़ले मु ताको नै के आसी कि आई विल हैव अ मड हाउस इन माय लैंड आई वांट टू स्टे इन अ मड हाउस इट वाज नॉट पॉसिबल इटा मिललानी लोक मिललानी मु कहले मु घर टाइल करबेनी मु रेड ऑक्साइड फ्लोरिंग करबे कि मो जेजी बापा घर रेड ऑक्साइड फ्लोरिंग थिला आज के रेड ऑक्साइड फ्लोरिंग भी करिया को लोक नाहंती सो वी हैव एक्चुअली गॉन बैक फ्रॉम आवर रूट्स वी हैव फॉरगॉटन आवर रूट्स मोर छोट शहर कटक रो झियो कटक को मो साल को कहतली मते कटक बहुत भल लागे दीटा नई रो कॉन्फ्रेंस रे कटक काठजोड़ी महानदी आ मते सब लागे महानदी मां परी महानदी जदि हमें नई को मां भली भाबिबा नई हमको कोळई नबो इजंट इट आ मते सब लागे मते समस्ते कहते भुवनेश्वर बाहर के आछि सासुघर भुवनेश्वर समस्ते कहते जे सब बेले कोन कटक कटक होछु तमर गली कंदी केते केते मच्छी मसा कटक कटक सब बेले कोन होछु तो तुम्हारे पास भुवनेश्वर में मॉल्स हैं रोड्स हैं बिग सेक्रेटेरिएट है सो मेनी थिंग्स व्हाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद कटक आई ऑलवेज से मेरे पास माँ है माँ जैसी महानदी है so that is why I love कटक मते महानदी कोला बहुत भल लागे बारबाटी स्टेडियम भल लागे दहीबरा आलदम खाइबो भल लागे एबे भी कटक गले म दहीबरा आलदम निश्चय खाइ से ढेसे अब कटक रो लोकों रो भल पाइबा भल लागे एंड ह्यूमन कनेक्ट इज अनदर थिंग आमे समझते प्रोफेशनली आमे
आमे आम करियर रे लाइफ रे आम मानक पाखरे 50-25 वर्ष तले जति पैसा नथिला आजकल समस्त वेल ऑफ समस्त बेसी गाड़ी अच्छी घोड़ा अच्छी घर अच्छी एबे गाँ रे समस्त घरे बहुत भल मो काली मो मामू घर गाँ को जाइली कहली दुआरटा कहीं बंद करके छात कर देछ और लाइट आसुनी सो बिकॉज देयर नीडेड मोर स्पेस सो आम समस्त वी हैव ग्रोन इकोनॉमिकली बट वेयर इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ where is the quality of human bonding where is the connect with our roots if all that we just go back to ame jodi samaste seti puni फेरी टिके भाबिबा और ताकू आमे गोटे लोकल समसार कहिले डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान मु जतले केरल रे थिली हमर 8टा सेक्टर रे हमें स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज लिखि थिलु मु एज डायरेक्टर एनवायरनमेंट आई हैड एम्फसाइज्ड दैट ता धिरे तीनोटी सेक्टर को दुईटी सेक्टर प्रिसाइजली ताको क्रॉस कटिंग थीम करबो काने से आउट सेक्टर हे परिबनी गोटे थिला डिजास्टर मैनेजमेंट गोटे सेक्टर थिला सेकंड थिला पंचायती राज सर बिकॉज़ पंचायती राज कैन नॉट बी अ सेपरेट सेक्टर इट क्रॉसेस अक्रॉस cuts across all sectors and third was women child and disability आमे तो डिजास्टर मैनेजमेंट कथा कहूछु वी विल हैव आमे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग तो करूछु किंतु भाबुछु कि जदि गोटे गाँ रे गोटे पिला अछि जे चली पारुनी डिसेबल्ड जे सुनी पारुनी जे देखि पारुनी तार इवैक्यूएशन प्लान इज इट अ पार्ट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इफ इट इज अ वेरी गुड थिंग इफ नॉट इट हैज टू बी जेंडर विमेन सबुठु बेसी को माने कष्ट पांती जते बेले हमको पानी मिलेनी हम मां माने मां माने को पानी आनिया को पड़े मां माने को रांधीबा को पड़े the mother takes care of the family तो जते बेले पानी मिलेनी क्लाइमेट डिजास्टर हुए क्लाइमेट रिस्क बढ़ी जाए तो women are the most affected children are the most affected so women child and disability should be a cross cutting theme in state action plan for climate change as well as national action plan for climate change and it should start with local action plan for climate change and local action plan for climate change should capture all that जोटा आपण माने करूचंती लास्ट एम आई रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम या आउ 2 मिनिट रे सारीबी हमर केरल रे अगेन केरल विषय रे कहबी काना सेटा मोर कर्मभूमि एटा मोर जन्मभूमि आउ झियो हिसाब रे मो आई हैव स्पेंट इक्वल टाइम इन केरला एंड ओडिशा सो आई कीप ऑन केरला नुवा जिंस सिखि ओडिशा रे इंप्लीमेंट करची ओडिशा रो जहा वैल्यूज सिखिची बढ़ीबार वैल्यू जन्म हबार वैल्यू सेटा नेकी केरला रे भी इंप्लीमेंट करची सो आई थिंक आई हैव डन जस्टिस टू बोथ स्टेट्स तो केरला रे हमर गोटे पंचायत अच्छी वायनाड डिस्ट्रिक्ट रे जोठी कि मो नेचर केयर इनिशिएटिव को रिक्वेस्ट करिबी आपण मान भितर टीम करिकी आपण मान केरला जिबा दरकार देखिबा दरकार सीइंग इज बिलीविंग जेटा आप देखियो आपण विश्वास करि परिबे जितने मीनांगड़ी पंचायत इज अ क्लाइमेट न्यूट्रल पंचायत ता माने नुहे जे हमें वी विल गो बैक टू द 19th सेंचुरी नो हमें से करिबानी हमें जहां क्लाइम जो कार्बन एमिट जति की करबा सेति की एब्जॉर्ब करबार हम कैपेसिटी सब थिबो सो वी बिकम नेट जीरो इज इट बुझी पाले जति की एमिशन हबो कार्बन सेति की एब्जॉर्प्शन हबो तो तार साइंटिफिक मेथड्स अच्छी जो थिरे कि आपण क्लाइमेट न्यूट्रलिटी करि परिबे इट इज मन छाडी जाउची हम आ भी किछि डॉक्यूमेंट्स छाडी जिबे जो थिरे हाउ टू बिकम क्लाइमेट न्यूट्रल हाउ योर पंचायत कैन बी क्लाइमेट न्यूट्रल यू कैन वर्क आउट अ प्लान आ मीनांगड़ी पंचायत क्लाइमेट न्यूट्रल पंचायत भाबरे बहुत अवार्ड्स पाइलेनी से ट्रांसपोर्ट कोन करिबे केमिति को छोट छोट जिंस I think previous panelists माने बहुत किछि कहै छथि I don't want to repeat छोट छोट जिंस नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट आजिकली समस्त घरे गोटे गाड़ी ने दीदीटा गाड़ी राइट आजिकली जते बेले हम घरे गोटे बल्ब जळो थिला हम इलेक्ट्रिक बिल हुए तो बेसी आसथिला देन एनर्जी हमरे वी रिसर्च्ड एंड वी केम आउट विथ एलईडी बल्ब्स राइट एलईडी बल्ब्स होला कोन एनर्जी कंजम्पशन कमी गला किंतु कमी गले कोन हैला सब घरे पे फॉल सीलिंग और छोटा बल्ब गोटे रूम रे एम आई राइट राइट सो हमर जते बेले हम रिसर्च करी वी आर ब्रिंगिंग डाउन द wattage by research our needs are growing it's not our needs our greed is going so it is said that nature has lots for everyone's need but not for everyone's greed right
तो आमे जेतेबेले आमे केरला रे आमे गोटे WWF रे इनिशिएटिव रे आमे मार्च 23rd आई थिंक वी डू अर्थ आवर रे कोन करू आम होल त्रिवेंद्रम सिटी रे गोटे घंटा पई आमे लाइट ऑफ कर दो एंड वी गो फॉर अ कैंडल लाइट थिंग एंड इट इज अ सेलिब्रेशन तो आम घरे आगर कटक रे सर जानि थिबे हमर लोड शेडिंग होतला सब खरा दिने घंटे को पई तापर 2 घंटा पई लाइट कट जाए and that is the most enjoyable hour of the मोर भाबी मो पिले दिन कथा मते लाइट चिपा कथा माने पड़े कना पाठ पढ़ी को पड़ेनी बापा माँ समस्त ऐसी दुआरे बसी गप करंती पड़िसा घर आसंती हमें समस्त खेलू so that was the most beautiful moment एबे इन्वर्टर जदी भी चार्ज नौनी 5 मिनिट पाई my children get haywire मुंडा खराब हो जाउची नेट चालुनी इंटरनेट चालुनी वाईफाई चालुनी so that is how our life we have changed our lives आमे हमर लाइफ तक को टेक्नोलॉजी हाथ दे देछु वी आर नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी सो दैट इज द सैड पार्ट ऑफ इट सो नहीं मो भी मो पे कहूची आई एम नॉट प्रीचिंग इट इज अ सैड ट्रुथ ऑफ टुडे दैट आमे मोबाइल न हले हमर आमे भात भी खाऊ मोबाइल भात खाइला मोबाइल दरकार राइट सो स्क्रीन टाइम को जदी आमे दिन को 10 मिनिट कमाई करी पीपल टाइम करिया आमे जदी लोकों को संगे कनेक्ट करिबा आ गोटे इंटरेस्टिंग जिंस व्हेन यू ड्राफ्ट दिस लोकल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज आमे एटी बहुत वयस्क लोक अछंती बापांग बयस रो लोक अछंती हमर आगुरु जेजेमा गप कहउथला जेजेमा गप आमे समझ सुनुथुलु एबे मो मां भी गप गाय मो मां को मते तेरे पिला दिने मां पछरे को कथा सुनिबो मो कहे तो पिला दिन कथा कह सिका मो पिला दिन एमती नई थिला आमे नई रे पारी हे कि डंगरे स्कूल जाउथलु स्कूल जिबा को 4 किलोमीटर लागुथला वर्षा होतला वर्षा रे ओदा हे जाउथलु छत्ता धरि के जाउथलु चप्पल नथिला सो एबे भी मो से जिंस को रिकलेक्ट करे एंड टू रिकलेक्ट दैट इज अ काइंड ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री आम को नई प्राचीन एबे कहीं प्राचीन नहीं प्राचीन लुप्त हो जाइए काली मु जाइथिली मो जन टीचर का संगे डॉक्टर श्रुति महापात्र फ्रॉम to see the condition and the place where Prachi river originated, right? And it is just like a nala. But that is what I feel, that Prachi nai है कोटे पुण्य नई और जदी नई रही बनी civilization रही बनी and जदी नई दरकार हमको कौन दरकार जंगल दरकार forest because forest is the mother of all rivers and river is the cradle of civilization अपन जो भी civilization देखंतु जो भी गोटे बड़ा सहर देखंतु नई कूल रे हिच कटक 1000 वर्ष रा नई कूल रे हिच तो आमे हम गां रे जो वाटर बॉडीज अछि ताकू केमती हमें कंजर्व करबा नई को केमती कंजर्व नई जदी मां भाबे बा ताकरे केबे हम एफ्लुएंट पके परिबा because we have that India has that culture of reverence to the mother reverence to the woman so हम भितर से ऑलरेडी अछि हमें ताको सब दिन भाबिबा आउ ताको मने पकेबा to remember to talk to connect that is the most beautiful way and the basic of fighting climate change हमें भाबी हमें आगुर कोन करथुलु 20 वर्ष तले कुमार पूर्णिमा कथा कहबी कुमार पूर्णिमा कथा कहि सारी भी आई थिंक आई हैव ऑलरेडी ओवरशॉट माय टाइम हमें तळे पिला दिने कुमार पूर्णिमा मां माने अछंती समस्त घरे कुमार पूर्णिमा करथिबे मु भी पिला दिने करथली अक्टोबर मास रे बहुत शीत हुए ए वर्ष कुमार पूर्णिमा रे बहुत काली एते गरम थिला कुमार पूर्णिमा दिन भी बहुत गरम थिला मो झियो को उठेइली ताको बहुत कष्ट रे मु उठे गाधी बाधी सब जिंस रेडी कला पर से बहुत कष्ट रे उठिला उठिकरी ड्रेस पिंधि के आसिला अंजलि टेकिया को अंजलि टेकिला संध्याळे कहला ओ इवनिंग इज देयर सम अदर पूजा आई सेड यस यू हैव टू वर्शिप द मून टू तो मुदा को सेते पति बुझौथिली जे हम जेतले मामू घरे कुमार पूर्णिमा करूथिलु आमे चांद को लुचि के खाउथिलु तापर चांद को लुचि के खाइबा आगुरु आमे जाई कि पोखरी रे गेंडा को खुआउथिलु आपण माने एबे भी हुए तो जहां जोठी पोखरी अछि सेठी गेंडा को खुआउथिबे भुवनेश्वर या पोखरी नाही गेंडा भी नहांती सो हमर जेते कल्चर आई एम सॉरी आई एम रिपीटिंग व्हाट आई सेड लास्ट टाइम हमर जेते भी पूजा पर्वाणी अछि आपण गोटे गोटे को नियंतु आ तक एनालाइज करंतु एवरीथिंग इज लिंक्ड विथ क्लाइमेट एक्शन everything is linked with conservation kumar purnima is directly linked with sun surya ko puja karo moon
and conservation of water bodies, conservation of a mollusk, right? तो आमे सब पूजा को नबा तार conservation impact कौन देखिबा तार climate impact कौन देखिबा, you will feel that as Odias we already have this knowledge. We actually need to share this knowledge in these summits. अपना मैंने सीटी कहिबा कथा आमे नु, right? So next time I would request that this traditional cultural knowledge documentation should happen in every panchayat. एबे Biological Diversity Act जो अछि 2002 ताकरे गोटे PBR People's Biodiversity Register तैयारी करिया को कोहा होची. आपण माने सब करूचंती each panchayat do you have a biodiversity committee? Committee तैयारी हिची किरे मैडम 12 मासरे 13 पर्वटा रखिले निश्चित एटा पूरा गुटे भेरी गुड निश्चिंत सेटा ट्रेडिशनल कल्चरल नॉलेज हमर हमें ताकू जदी डॉक्यूमेंट करिबा ता धेरे क्लाइमेट चेंज रो बहुत एक्शंस बाहरिबो बहुत मिटिगेशंस बाहरिबो राइट एंड वी नीड टू डू दैट आपण को 6500 रो बेसी पंचायत अछि से 6500 पंचायत ट्रेडिशनल कल्चरल नॉलेज को डॉक्यूमेंट करिवे और तार गोटे डॉक्यूमेंटेशन रहिबो आई डोंट थिंक वर्ल्ड रे एमति किछ थिबो ओडिसा रे जति की हमर ट्रेडिशंस वैल्यूज समस्त हमर बालीयात्रा कटक रे हुए तो एवरीथिंग सब छोट छोट पूजा जगन्नाथ का पूजा आपण कृष्ण का पूजा कृष्ण के जण भल पांदी कोन समस्त भल पांदी जगन्नाथ को समस्त भल पांदी कृष्ण कोन बिले आपण जानि छथि समस्त Krishna is a universal God, Jagatara Natha, right? Jagannath is a universal God. Krishna is a musician, lover. He's an orator par excellence. 18 अध्याय भगवत गीता से कहिथिले on the war field. केते जण कृष्ण को कंजर्वेशनिस्ट भाबरे जानछंती कृष्ण नेचर लवर विषय भाबरे केते जण जानछंती केते जण जानछंती अल्प अल्प जानछंती पिल्ला दिन जन्मरु नेकरी कृष्ण बड़ हैला जाय से कोठी गाय चरोथिले ग्रासलैंड रे गाय चरोथिले ताका चरा भूमि कोन थिला गाय कोठ नि चरोथिले पशु को कोठ नि चरोथिले मथुरा वृंदावन गाय गोपपुर रो जो ग्रासलैंड रे चरोथिले आगे गोकुल रे जन्म होइतिले बस गोकुल रे जन्म होइतिले किंतु मथुरा रे जन्म होइतिले गोकुल रे जाई बढ़िले गोकुल रे से गाय चरोथिले राइट निश्चित तो सेते बेले जे गाय चरोथिले से ग्रासलैंड को कंजर्व करथिले ग्रासलैंड कंजर्व हेले हमर हर्बीवोर्स कंजर्व हेबे हर्बीवोर्स के हरिण सांबर पशु पक्षी सब हेबे हर्बीवोर्स को के खाए द एपेक्स प्रेडेटर जो इकोसिस्टम में टाइगर प्रेडेट्स ऑन हर्बीवोर्स जदी ग्रासलैंड रहिबनी टाइगर रहिबनी और टाइगर का जदी रहिबनी ग्रासलैंड टाइगर रहिबनी ग्रासलैंड रहिबनी टाइगर ऑफ प्रे सांबर रहिबनी चित्तल स्पॉटेड डियर रहिबनी ताहले वाटर रिटेंशन ऑफ दैट एरिया विल रिड्यूस ताहले हमको आम घरे पानी मिलबनी आम नई सुखी जीवो आम पोखरी सुखी जीवो आम कुआ सुखी जीवो राइट तो एठी जो 2022 रो जो कॉन्फ्रेंस हेतला स्टॉकहोम +50 टू कमेमोरेट द फर्स्ट एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस इन 1972 सेथरे गोटे मो पढुथिले आज सखाळे भाबिली बहुत साइंस कहिबी ने नाही आई एंडेड अप टॉकिंग व्हाट आई लव टॉकिंग vital links between forest climate water and food एटा UN रा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रे डिस्कशन होची जो कथाटा कृष्ण कहथिले राइट सो कृष्ण through his childhood gave us a very important message of conservation कृष्ण कालिया दळन करथिले जमुना ऊपर जमुना रे जतले कालिया नाग आसिकरी जमुना पानी को पोल्यूट करूथिला सेतले कृष्ण कोन करथिले कालिया दळन करिकरी ताको बंद करथिले बट कृष्ण डिड नॉट किल द स्नेक बिकॉज़ he also was a benevolent protector and I think he gave equal respect to all the wildlife से कालिया नाग को बुझी की छाड़ी देथिले modern sense रे आज जे देखिबा जमुना is polluted and Krishna in the form of a snake was trying to stop water pollution that the Jamuna was facing at that point of time. Apana Krishnankara Jivan padhantu all the demons he had killed it symbolizes any form of climate disasters. Apana ko bhi asura ko niyantu asura symbolizes something. तो आपण पिला मन को स्कूल रे कॉलेज रे मां बन तो पिला मन को खुआउ चंती स्कूल पठो चंती ए सब स्टोरीज कहिबे
ताहले आपण को गोटे सेशन क्लाइमेट चेंज रो दरकार नहीं मते तो लागुनी बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी अवेयर इट इज ऑल विद इन अस आम मानकर जन्म रु हमको ये सब जिंस सिखाई कटक रो मनीष और छक कथा कहबी केते जण कटक रु आपण कटक रु अच्छा मनीष और छक रे गोटे गोटे ट्रेडिशन अछि जे शीत दिन रे एबे मु जानिनी मु बहुत आगुर मो पिला दिन मु सुनिथिली शीत दिन रे बुढ़ी मां बसिकरी पुओ मानु पिला मानु को खरा को पिठी करी गप कहे शीत दिन रे रविवार रे आ मां माने खीरी करी के आनी के पिला मान को दियंती when covid was at the peak all the doctors talked about sitting in the sun for at least 15 minutes and that is why because you need lot of vitamin D right तो आम जेजेमा माँ मैंने जिते कहते खरा रे पिठी करी बस खरा आम रोसई होता बिकज सन एनर्जी आम भातटा सब दुआरे रंधा होता खरा रंधा होता सोलर एनर्जी कमिंग डायरेक्टली इनटू योर फूड इज एनर्जाइजेस योर फूड विथ लॉट ऑफ एनर्जी यदि आम छोट छोट जिनस को आम निज लाइफ रे आउ थे रीइनवेंट करवा रिलीव करवा टिके लाइट बंद करदे घंटे बसी गप करवा गोटे दिन गाड़ी चलेबा नि साइकिल चलेबा कि चली कि जीवा आमे जेतेबे हमको ज्वर होची कि वी आर ठंडा होची इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू मेडिकेटेड वी विल डिपेंड ऑन आवर मेडिसिनल प्लांट्स एंड आवर लोकल रेमेडीज what is available in our houses आमे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जोटा कि मु कहिली पुनर्जीवनम बड़ी YouTube रे गोटे फिल्म अछि आपण माने गूगल करके देखि परिबे इट इज ऑल अबाउट रिवाइवल ऑफ द नेचुरल कल्टीवर्स आमे फिश स्पीसीज आम जोटा हमर पोखरी रे आमे बे सब एक्सोटिक स्पीशीज को आमे रियर करछु जदी हमर आगुरु आमे जा खाउथलो बाळिया माछ सेवड़ो माछ आजकल हम देखियो पाउन सो इफ यू गो बैक आई थिंक दैट मेक्स the climate action much more meaningful and much more useful. I think I have overshot my time. I'm sorry for that. आपण माने सुनिबा को बहुत इच्छा मो नेक्स्ट टाइम कहबे जे समस्त आसी कि आपण माने किछ किछ अनुभूति कहबे एबे करो पिला दिन रो आ आपण माने को सेही अनुभूति को नै कि केमति हमें फ्यूचर रे आगो को बढ़ी परिबा हमें सेटा चिंता करियो थैंक यू डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग कथा सब कहले लोकल विषय से बहुत कहले इंडोनेशिया रे एग्जांपल देले गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस से कहले जेंडर महिला मानकर नेतृत्व एवं लीडरशिप तो मु चाहिबी गोटे जिनस कहया को सार इंटरवेंशन पूर्वरु सार कहला पर विल हैव इंटरेक्शन फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनिट्स आपण माने क्वेश्चन पचारिबे टू द पैनल सो दैट आमे किछि इंटरेक्शन करि परिबा मो अनुरोध रहिबो कि आपण मन जदी क्वेश्चन को टिके कम टाइम भीतर पचारि पारिबे सो दैट आमे मैक्सिमम लोकंकर क्वेश्चन नै पारिबा एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जो महिला रिप्रेजेंटेटिव माने आइछंती मो स्ट्रांगली एनकरेज करबी जदी आपण माने क्वेश्चन पचारिबे एवं पार्टिसिपेट करिबे सो विथ दिस वर्तमान अनुरोध करबी श्री किरोत चंद्र महापात्र सर को तांकर एक्सपीरियंस शेयर करिबे से वर्तमान रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आमे माने जेते बड़े ट्रेनिंग दो बा ट्रेनिंग न हो सेते बड़े सब बड़े प्री लंच और पोस्ट लंच सेशन टा को प्रिफर कर कारण प्री लंच रे भूख लागो तो कहीं पचार बेरी पोस्ट लंच रे पेटे खाई देथिबे तनो कहीं मुंडो खेले तनो धन्यवाद नेचर इनिशिएटिव को जे हम मान को पोस्ट लंच रे देइचंते एंड धन्यवाद मिसेस महांती को कारण दिन सारा मु सुनिला परे मु भी जहाँ कहबी बोली भाबीथिली प्राय अधिकांश करछे तो मो पाखरे किछि नाही कहबा तेणु सी मो समयटा भी नहीं गला तेणु मते भी किछि कहबो पड़िबनी बा लज्जान्वित हबाको पड़िबो दैट्स अ लवली क्राउड आम भितर केते जण पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो आछंती हाथ टिके देखा बढ़िया कहीं मते खुशी लगुचे जे 17 वर्ष पर मो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन मेंबर मान संगे मिसुची 17 वर्ष तले मो बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम करूली आपण मान संगे बसिक मु जड़े प्रैक्टिशनर मु शिखे आपण मानू मु किछि कहि परिबिनी बेसी किंतु आजिकार जो टॉपिक अच्छी तृणमूल रे आमे कौन करि परिबा ए क्लाइमेट चेंज बा जलवायु परिवर्तन जो होचे
तापाई आमे कौन करि परिबा मु भाबुची आमे माने बहुत किछि करि परिबा गंजाम रो कि आछते मो कर्मस्थल बढ़िया मु भी गंजाम रो आछे हां कटक रे रहे जन्म कटक रे नै छी मैडम को बढ़िया मो पिला दिन कटक रे जाय छे तेणु आपण माने भाबंतुनी जे आज दिन सारा जहां आमे सुनिलो आमे किछि करि परबे आमे बहुत किछि करि परबे गांधी जी कहिथिले जे इंडिपेंडेंस आरंभ हुए तृणमूल स्तर रु जे दिन इंडिपेंडेंस आसीबो से दिन आमे रियल इंडिपेंडेंस पाइबो और सेति पाई 73तम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हला 92 रे आमे माने पाइलु पंचायत राज इंस्टीट्यूशन लोकों पाई काम करबा को हम मान को शक्ति दिया गला पावर दिया गला जेंति जने पैनलिस्ट कहउथले पैंडेमिक समय रे हमर स्टेट गवर्नमेंट ट्राई करला सरपंच मान को कलेक्टर कर किछि पावर दबा को दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑन पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ द लीडरशिप आमर आपण माने भाबंतो जदि रामायण तो समस्त आमे जानिछु आमे माने समस्त गोटे गोटे गुंडीची मूसा तेणु भाबंतुनी जे क्लाइमेट चेंज रे आमे किछि करि परिबा आमे बहुत किछि करि परिबा एकड़ी आमे माने समस्त तो टेक्निकल कथा कहले मु एते पढ़ा लिखा नुहे तेणु टेक्निकल कथा कहि परिबेनी किंतु मु जो अंगे निभेछि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज आउ क्लाइमेट चेंज रे आमे कौन करि पारिबा मु पिला दिने थिला बेले बही रे पढ़ी थिली 6टा ऋतु किंतु निजे अंगे निभे थिली 4टा ऋतु आपण माने वर्तमान केतेटा ऋतु अंगे निभौछंती 4टा होउची के वर्षा दिन खरा दिन 2टी ऋतु हां कि ना दैट इज इट एटा को कहा जाए क्लाइमेट चेंज कारण अतीत रे आमर पूर्व पुरुष माने 6टा ऋतु को उपभोग करुले मु पिला दिने आसला बेले 4टा ऋतु एखनी परिणति बयस रे आसी पहुंचला को 2टा ऋतु एई जो छोट छोट बदली हेछि आको कहा जाए क्लाइमेट चेंज ए क्लाइमेट चेंज काहे के होछि ताको न जानिले आमे काहे के ताको बदलेबा बा काहे के ताको सेई जगह रे बंद करबा ताको हमको भाबिबा को पड़ेबा क्लाइमेट चेंज मोस्टली आम मानी मनुष्यों कौन सी बाघ चेंज करेनी कौन सी हाथी चेंज करेनी कौन सी मूसा चेंज करेनी कौन सी साप चेंज करे आमे माने ही चेंज करिछु कारण आम मानकर कुकर्म आमे हुए तो जो समय से कर्म करिथिलु बा करूछु वर्तमान आमे भाबुछु ठीक कर्म करूछु किंतु परवर्ती अवस्था रे जणा पड़िला सेटा कुकर्म एटा नुहे जे आमे जानी सुनी करी आमे चेंज आनिछु बा आमे प्रकृति को नष्ट करिछु किंतु आमे करिछु तेणु जेतेबेले आमे करिछु तेणु आमर दायित्व बढ़ी जाउची जे ताको हमको बदलेबा को पड़िबो बा आमे ताको रिवर्स करिया तेणु ये जलवायु जो परिवर्तन होउछि एटा इट्स अ वेरी सिंपल थिंग केमिति आमे करि पारे एबे देखा जाय छे जे पृथ्वी रो टेम्परेचर वर्ष को प्राय 1.1 डिग्री हिसाब रे बढ़ुछे आ वैज्ञानिक माने कहउछन्ति जे प्रति वर्ष ये 1.5 डिग्री बढ़िबो तेणु वैज्ञानिक माने अति तत्पर आ बहुत कष्ट भी करूचंते आ सेति पई एनसीआई ए इनिशिएटिव भी नउची जे आमे ठीक समय रे जदि काम न करिबा बा चेंज करिबा को काम न करिबा जोटा कि तृणमूल स्तर रे सरपंच भाई माने भौणी माने बा एनजीओ माने बा जो माने अछंती जो माने कि गेटकीपर ऑफ द सोसाइटी और इन्फ्लुएंसर से माने जदि ए विषय रे हेज करिबेनी ताहाले नेडी गुड़ कहनी की पड़े सेति पाए जदि एपेठू आमे निजर काम करिबा आरंभ न करिबा ताले जो 1.5 डिग्री जो पहुंचवा जाउछ एटा बहुत शीघ्र पहुंचबो आ तापरे आउरी पड़े ए जो क्लाइमेट चेंज रो ताको चेंज करिबा को बा तापरे एक्शन नबा को ओडा बढ़िया सिंपल जिंस अछि आम घरे ज्वर हुए कि नहीं आम मान को कहा को आपण मान को ज्वर है केबे ना कार हेनी मते कहले हाथ टेकिले केबे ज्वर जीवन रे हेनी ज्वर है वेरी गुड तेणु एथरे मते बुझिया को बहुत सुविधा हो जेते बेले आमे पिला दिने हो बा एबे भी हो ज्वर हुए जहां को जो माने भाग्यवान जहां कर मां अछंते
सेमाने बहुत कनसर्न हाँ तेणु मु सब भावे जे सरपंच भाई भौणी माने आमर से कम्युनिटी माँ भाया तेणु ये जो क्लाइमेट चेंज टा गोटे ज्वर भाया तेणु प्रथम जिते आम भावु ज्वर है बोली तेणु माँ हो डाक्तर हूँ बा घर परिवार लोक हूँ से माने कौन चेष्टा करते ताकर प्रथम चेष्टा होचे जे ज्वरटा को स्थिर रख जो बढ़ुचे 99 100 101 102 ताको प्रथम स्थिर करवा जदि 102 3 रु अधिका गला पानी पटी दबा कारण सबु बेले तो पैरासिटामोल आजिकल अवश्य चूड़ा मुढ़ी भाया पैरासिटामोल आम खाई नौचु कि ठीक नुहे पानी पटी दबाटा होची माने बुद्धिमान काम तेणु आम पानी पटी दौ ज्वरटा को आम ये करूँ ता भितर आम तार कारण बाहर करूँ ज्वरटा हूँ गोटे रोगर प्रतिफलन ज्वर इटसेल्फ इज नॉट ए डिजीज इट इज जस्ट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ सर्टेन डिजीज इन्फेक्शन है पारे तंटी रे है पारे पेट रे है पारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है पारे बहुत गुडे कारण अच्छे तेणु आम कारणटा को बाहर करी ज्वरटा को कम आम उपचार करूँ से कारणटा को उपचार कले ज्वर कम आमर जो परिवेशर टेम्परेचर प्रति वर्ष बढ़ुची ये ज्वर बढ़िया तेणु प्रथम आमर लक्ष्य हवा दरकार आम एमती उपचार करवा जे ज्वरटा जो ये 1.1 डिग्री पर ईयर बढ़ुची सब्सिक्वेंट ईयर रे ये भी 1.1 डिग्री रहू ताठू अधिका न बढ़ू किछि वर्ष परे ताको आमे 1 9 एमती करी आमे तळको आनिबा तेणु ये जो इन्फेक्शंस गुरा होची ए इन्फेक्शन गुरा सब जाक मैन मेड डिजास्टर जो आम कहूँ जे गला 20 वर्ष भितर 8टा साइक्लोन आसला से 2टा सुपर साइक्लोन हिट वेव एगुरा सब डिजास्टर तेणु गोटे समय पोथी कहूला जे ए जो साइक्लोन ड्रॉट एगुरा सब जगह हूँ नेचुरल डिजास्टर एक्सीडेंट डंगा ये है मैन मेड किंतु वर्तमान वैज्ञानिक माने कहते जे ए साइक्लोन भी मैन मेड डिजास्टर बलांगीर किए किए अच्छा बलांगीर एनीवे मत जड़े भद्रलोक कहते बहुत वर्ष तले बलांगीर गोटे समय ओडिशार बढ़िया चाउल करूला किए जानते बा न जानते आई डू नॉट नो बट समवन हैज टोल्ड मी एंड आई डू बिलीव इन हिम बलांगीर चाउल भल होता बलांगीर और कलाहांडी एरिया रे किंतु फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम रे ड्रॉट आरंभ है कहीं ड्रॉट है से ड्रॉटा केमती मैनमेड मु कहबा जाउची तापरे आम मानकर कौन अच्छी जे निजर कौन कौन सब दायित्व अच्छे एटा को केमती आमे रिवर्स करिबा दैट आई विल डिस्कस विथ बलांगीर रे कौन थिला जो ट्रेडिशनल चाष करूथिले जमी मझिरे गोटे गोटे पोखरी थिला तेणु जिते वर्षा हुए वर्षाटा पानीटा पूरा न बोईकि एबे जाको आमे कहूँ चेक डैम बोली जिते चेक डैम कहते पोखरी रे ऑटोमेटिकली पानी रोला सेठू नहीं तीरथ समय जो समय पानी मिलू ना से करुले कारण से केनाल इरिगेशन बलांगीर ना एबे भी बोधे ना आई डू नॉट नो तेणु से जो पानीटा तांको वर्ष सारा हेल्प करूला चाष करने को सबुज बनानी भी से एरिया रे बहुत थिला पिला दिने आमे समस्त मु भी पढ़ी आपण माने पढ़ी वाटर साइकिल खरारू बादल हुए बादल रु जाकरी लैंड एरिया को जाए माने स्थल भाग को जाए सेठी ठंडा है वर्षा हुए किंतु जेतले बादलटा बे ऑफ बेंगल रु जाकरी बलांगीर और कलाहांडी ऊपर पहुंचीला गछ नाई ताको ठंडा करिवो किए जनो वर्षा हलानी प्रथम वर्ष कम वर्षा है आमे ताको से जो अलार्म बेल बाजिला आमे ताको ज्ञान संज्ञान नेलुनी तापरे आउरी गछ काटिलु आउरी जमी कान हमर परिवार बढ़िला हमको बेसी जमी दरकार बेसी मुह को खाइबा को दबा को दरकार तेणु आमे आउरी गछ काटिलु आउरी कम वर्षा है एमते हेकरी आपण माने एबे सुनुचंती जे ड्राउट होउची से तेणु आम मानकर काम होउची एई खिणे
5-10टा काम मोस्टली इट इज अचीवेबल आ यूएनओ कहि जहाँ को मु लेखिके आनी आपण मान पाखे पढ़ी एंड मु भाविली जे इट इज डुएबल माने आमे करि परिबा सेतरो गोटे काम होउची जे घरे जमती मैडम कहउथिले बा समस्त पैनलिस्ट आगुरु कहिसंती घरे दरकार नथिले बिजुली व्यवहार करंतु वर्तमान मु सखाळु एठी बसिछि आई नो द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम मस्ट बी अराउंड 23-24 किंतु मते भी लाज लागुछि सेही कथा प्रीच करियो जे दरकार नथिले भी आपण माने करंतुनी कारण आमे जते बेले यदि आज सखाळे सुजित कुमार कहउथिले हमर ऑनरेबल एमपी जे 26 डिग्री 25 डिग्री करबा 25 डिग्री टा एसी रे होछि राइट ये किंतु जेहेतु हॉलटारे गोटे मूवमेंट होची लोक संख्या अनुसार टेम्परेचर बढ़े तेणु होटेल वाला कहले कहीं आमे एते ऊपर तल करवा दे 23 रे रख समस्ते खुशी कहीं कहबेनी झाड़ बाहर तेणु दरकार नथिले बिजुली को व्यवहार करंतुनी आपण पैसा दे पारे मैडम एखनी कहले टेक्नोलॉजी इंप्रूव करी गला आगुरु आमे बल्ब लगाउथुलु 10 टंकार 100 वाट रो बल्ब आसुतला से जो 100 वाट रो बिजुली दउथला एबे आमे 9 वाट एलईडी रे से बिजुली टा पाउछु मझिरे 20 वाट रो सेटा कोन थिला CFL yeah thank you that was a 20 watt CFL or 25 watt CFL was giving us that lumen what an incandescent lamp of 100 watt was giving earlier एकड़ी 9 वाट रो एलईडी हमको सेया दउची किंतु एबे कोन करिछु हम घर रे आगुरो जोटी 100 वाट रो बल्ब लागुतला से एबे तीनटा 9 वाट रो बल्ब भी से घरे लागुची आगुरो फैन थिला 75 वाट खर्च करूतला एबे फैन टेक्नोलॉजी इंप्रूव कलानी 50 वाट को आसलानी एबे BLDC फैन आसलानी 28 वाट रे भी खर्च होची It is not important that technology can be improved करूचे आमर जो यूसेज स्टाइल को आमे जदि न बदलेबा ताहाले आमर क्लाइमेट चेंज हे पाइबो ना धरि न आ एगुरा सब आम हातर कंट्रोल रे अछि नॉट दैट जे के गोटे आसिकरी हमको गोटे स्किल दबो स्किल डेवलपमेंट अंडर ट्रेनिंग नो It is already under our control, but simply आमे माने कौन करूचु ताको नजरे नौनु आमे जेतु नजरे नौनु आम पिला माने सिखुनांती आम पिला माने सिखुनांती तो तांको पिला को भी सिखेबेनी तेणु आपण देखंतु ए जो रॉटन थिंग ता आम पाखरु बाहर करी पीढ़ी पर पीढ़ी केमती जाओ जीवार संभावना अछि तेणु दया करी जोठी एनर्जी दरकार नाही सेठी आपण माने यूज करंतुनी आउ गोटे होची चलंतु जोठी दरकार नाही सेठी मोटरसाइकिल बा कार व्यवहार करंतु समस्त मन पकांतु मु पिला दिने थिली मो गां पारादीप आड़े गोटे कंदरपुर बोल गोटे जगह अछि सेठी गोटे पेट्रोल पंप थिला नेक्स्ट पेट्रोल पंप थिला 65 किलोमीटर दूर केयर आपण माने लीडर सेमान गोटो आपणकर बुद्धि टिके अधिका तेणु प्लीज कम अप टू द लीडरशिप नहीं करी आपण सेमान को सिखांतु जे टू लीड ए हेल्दी एंड आमर फ्यूचर जनरेशन पाई बेटर अर्थ करबा को आउ गोटे जे अननेसेसरली ट्रैवल्स करंतु ने कारण एबे पोस्ट पैंडेमिक रे हमें देखा गला जे आमे माने न जाई करी भी अमेरिका संगे रे हमर कॉन्फ्रेंस करि पारछु वर्चुअल मीटिंग मुदले पिला दिने थिली आमे रेयरली कोडे बुलिबा को जाउथुलो होटल रे जदी आमे कोटे ट्रैवल करूथुलो ताले लंच आवर आसला बाटर होटल खाउथुलो एंती वीकली जाय करी होटल रे खाउ नथुलो बिकॉज़ फॉर अ चेंज एंती मैडम कहिले कटक रे जे तुम बढिची केबे केबा दहीबरा आलू तुम गोटे ठुंका खाइ दउथुलो ह के ना किंतु आजिकली कौन है ना आमे माने चेष्टा करूछु होटल रे खाइबा को आ वो बहुत जगह रे भी देखी छे ऑल्दो दे हैव पेड फॉर द फूड बट दे वेस्ट अ लॉट ऑफ फूड ये भी गोटे रीजन हो छी क्लाइमेट चेंज रो जे देखा जाय छी
जे जदि आपण कम फूड ये वेस्ट करेंगे से फूड गुरा पेट्रिफाइड है जो कार्बन एमिशन होचे सेगुरा भी कमेबो आ सेटा होचे 300 kg पर ईयर कंट्रीब्यूट करिवो इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट आउ गुटे देखा जाय छी जे आपण वेजिटेरियन होंतो हैव लॉट ऑफ वेजिटेबल्स कारण जेते एनिमल प्रोटीन खाइबे दुनिया रे जदि सबुठु बेसिक ये कार्बन रो दउची जनरेट करूची सेगुरा होची जो एनिमल फार्म्स गुरा कैटल्स जो बीफ पोर्क एमान पई जो माने सब ये करूचंती पाळुचंती समाने बेसी मिथेन गैस ये करंती गाय माने तेणु आम जदि भेजिटेबल्स बेसी खाइबु एक ग्रीन कवरेज बढ़िबो छोट घास भी जमती मैडम एक कहते श्रीकृष्ण नहीं ग्रेजिंग करुले कारण घास को जदि गाय न खाइब घास आहरी ग्रीन है न बढ़ तेणु गाय घास को खाइबा उचित हाँ तेणु भेजिटेरियन हूँ आपणकर कमिज आउ गोटे जे कम जिनस किणतु ये जो कंज्यूमरिज्म गोटे स्टडी कही जे गोटे किलो कना माने क्लॉथ करी पाछे गोटे पैंट धरतु 700 ग्राम शर्ट 2 किलो गोटे किलो क्लॉथ करबा को 14.5 किलो कार्बन आमे एमिट करू तेणु जेते जामा किणिबो आई हैव सीन पीपल जो माने कि जामा को थरे भी पिंधि नथिबे किंतु कपबोर्ड रे अछि एगुरा सबू आगे किछि नो एडा कंज्यूमरिज्म यस यू आर वेल्दी बट डोंट फ्लॉन्ट इट देयर इज नो नीड ऑफ फ्लॉन्टिंग इट as long as you are going to harm your future generation आपण जदि फ्यूचर जनरेशन को हार्म करबा को जाउ नांदी आपण जते लुगा किनतो किंतु मु आपण को आजि का दिन रे जा स्टडी अछि मु आपण को कहूची जदि आपण गोटे किलो लुगा किनुचंती एक्स्ट्रा जहा को व्यवहार करूनांती बा जार बोतामटे लगे देले भी आपण यूज करि पारंते बा रफू कर देले करि पारंते किंतु आपण करबा को चाहनाते गोटे जामा किनिबा को चाहचंती ताले 14 किलो आपण एटमॉस्फेयर को छाडू चंती नोइंगली बा अननोइंगली आ गोटे जिंस हैला जे आगुरु आमे माने घरे माटी घर करथुलो जेंति मैडम एकनी पचारथले माटी घर कोन के थिला कि सीमेंट दरकार हो नथला स्टील दरकार हो नथला इटा भी दरकार हो नथला इटा को कोयला रे पोड़ा होतला रेड ब्रिक को सीमेंट और स्टील तैयारी करे को लॉट ऑफ एनर्जी दरकार किंतु एबे जो बिजू पक्का योजना हो कौन सेटा कहउछंती बिजू घर योजना बा इंदिरा आवास हो जहां भी हो समस्त आगुरु एजुकेशन चाहकर थिला ताको रानीगंज स्टाइल कले रानीगंज स्टाइल को एजुकेशंस कले एजुकेशंस रो एकनी पक्का छत कले हो के नहीं ना आपण मानकर पक्का छत होनी आपनकर बिजू कल्याण योजना रे आपण भाबंतो केते कार्बन नहीं नहीं मु बुझुची आगे मु आपण का को ब्लेम करूनी मु कहूची कुकु जगह रे आमे प्रकृति को धक्का दउचु आ ए धक्काटा हमर फ्यूचर जनरेशन 3-4 जनरेशन पर निश्चय सफर करे जणो माटी घर बहुत करी हेबो बिकॉज़ मैडम महांती इज फ्रॉम केरला is a pioneer in having mud houses and Laurie Baker was a famous rat trap constructions filler slabs both which is also Laurie Baker culture and we were lucky to be in that state तेणु आमर बहुत गुड़े टेक्नोलोजी अच्छी जहाँ को आपण मानक दोष दौनी किंतु अनफॉर्चुनेटली जो लोक माने टेक्नोलोजी जानी चंती से माने आपण को इन्फ्लुएंस करि पारु नांती जे एगुरा इको फ्रेंडली मटेरियल इक्वली स्ट्रांग इक्वली ड्यूरेबल आपण करंतु हबो किंतु आपण पाकर से मेसेज पहुंचुनी बोली करू नांती सेटा भी गोटे कथा आ गोटे हला जेमती आज सखाळे कहउथिले जे रिन्यूएबल एनर्जी जत बेले ए जो जवाहर रिन्यूएबल एनर्जी फारूक अब्दुल्ला का समय आरंभ होला प्रथम थर पाई सेते बेले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोटे बड़ प्रलंब औषधि कले रूफटॉप सोलर को सेते बेले से देलेनी सेते बेले 500 किलोवाट ओवर करले सेते बेले बहुत लोक तास भितरे मु भी थिली आमे माने फाइट करूथुलो
जे आपण भूल करूचंती जर्मनी रे 1 किलोवाट रे रूफटॉप दियंती जाओ फॉर्चुनेटली सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट कुड एबल टू रियलाइज जे ए सब जिनस भूल हेतिला एखिनी आपण को रूफटॉप सोलर रे दोची आ फोटोवोल्टिक सेल रो दाम एते कमी गलानी आ ग्रिड कनेक्टिविटी मिली जाउची आपण को तेनो आपण माने जो माने गाड़ी किनी पारुचंती बा मोटरसाइकिल किनी पारुचंती से माने निश्चय रूफटॉप सोलर यूज करि परिबे आ आपणकर जदि 300 यूनिट व्यवहार करूचंती बा 200 यूनिट व्यवहार करूचंती मु आपण को एश्योर करूची जदि रूफटॉप सोलर आपण यूज करिवे आपणकर 100 यूनिट बचिबो आ 10 वर्ष भीतर 100 यूनिट रो पैसा आपण फेरी पाइबे तापरे मागणा ए सब जिनिस रे आ गोटे होची सबटु बड़ जोटा मु बारंबार कहूची एटा को मु खाली कहूची मेक योर मनी काउंट या मेक योर मनी काउंट पैसा आपण से पैसा को केही नेबेनी किंतु ताको प्रूडेंटली खर्च करंतु माने जो जगह रे खर्च करबा कथा करंतु कारण आपण को पैसा आपण को पाखरे रहिले सीए भविष्य रे आपण को आपण कर परवर्ती वंशधर मान को सहायता करबो खर्च कम करंतु खर्च कम कले क्लाइमेट चेंज रो बहुत किछि बेनिफिट दे परिबे आ ता बाद मोरी बड़ा जोटी भी अपॉर्चुनिटी मिलछु कहंतु जे क्लाइमेट चेंज काम करने को बदली पारे थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर सर बहुत प्रैक्टिकल जिनस माने सजेस्ट कले सेते में तांको विशेष धन्यवाद 5 मिनिट आमे चाहतलु एटलीस्ट 10 मिनिट डिस्कस करबा पे किंतु समय कम अछि 5 मिनिट एंड आमे यदि फ्लोर रु किछि क्वेश्चन नै परिबा आपण माने कैन बी माने वेरी ब्रीफ इन योर इंटरवेंशन हां उपस्थित थिबा मंचासीन अतिथि माननकु मु हृदय सहित अभिनंदन ज्ञापन करूछि एवं प्रणाम जनाउछि एवं आम समस्ते आम ऑल ओडिशा रु कोण अनुकोण रु आसीथिबा पीआर मेंबर्स समस्त को मु प्रणाम जनाउछि अभिनंदन ज्ञापन करूछि बहुत बहुत भाग्य कथा जे जो ऑर्गेनाइज करिथिबा संगठन को मु कलाहांडी रु आसीछि मोर ना हेउछि हातीराम दुर्गा मोर गाना टिपिगुड़ा ग्राम पंचायत धर्मगढ़ ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट कलाहांडी मु जो मानकर दयारु आपण मानकर गहन रे ठिया होई किछि कहबा पई सुजोग पाइथिबारु से माने हेउछंती मोर टिपिगुड़ा ग्राम पंचायत रो समस्त जनसाधारणकर दयारु आपण जे आमे जतिकी आधुनिक जुग रे पदार्पण करूछु सेति पाई मध्य हमर ए क्लाइमेट रो परिवर्तन घटुछि कारण घरे घरे पूरे पूरे यूज एंड थ्रो जो जिनिसटा व्यवहार हेउछि ताहा किपरि भाव रे बंद होई पारिबो तार व्यवस्था करिवा पई आपनको दरिया रे सरकार को अनुरोध जनाउछि धन्यवाद धन्यवाद बहुत बढ़िया जिनस कहले आपण प्लास्टिक भाई प्लीज बी वेरी ब्रीफ हां अच्छा ओके दैट इज सेड आउट पॉलिसी लेवल डिसीजन मु आपन कहबी जदी भी पॉलिथिन अछि ताको अगेन केरला रे एग्जांपल दे कहबी केरला रे पंचायत रे जो रोड तयारी होची रास्ता तयारी होची प्लास्टिक को यूज करके रास्ता तयारी होची so lot of plastic waste can be used in making roads by the panchayats in the panchayats तो आपण से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करिवे आपण को जिते प्लास्टिक जनरेट होची सेटा रीयूज हे जिवो सो हमें 4 R's को जो रिड्यूस रीयूज रिसाइकल और लास्ट जिंस कोन को जो रिफ्यूज मना करिवा ओके भाई आपन के प्लास्टिक फ्री पंचायत करंतु प्लास्टिक फ्री पंचायत कर परिबे एंड कलाहांडी रे जेते प्लास्टिक अछि ताको रोड रे यूज कर परिबे राइट आपन अछंती प्रेसिडेंट पूरा जीपीसीपी कथा कहले सो एटा तो पुराधिकारी अछि किछि बना नै भाबे तो मु देखुछि पुरा पंचायत रा टंका अनस्पेंड के फाइनेंस कमिशन रा अछि मनरेगा रा अछि सो
सो अपना जो जिनिस गोटे प्रायोरिटी प्लानिंग करूँ निश्चय करें बुझले कि नहीं हमर जो अछि ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार दे जाय किंतु आजि काली ग्राम सभा रो 1% काम सर शुणु मो आपण को जरिया रे सबु मोर सरपंच बा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो भाई बहनी की कहा जाउछे कॉन्स्टिट्यूशन आपण मान को पावर दे छे आपण माने जदि निजर पावर को एक्सरसाइज करि परिबेनी ताहले केही आपण को सहायता करि परिबे एटा आपण समस्त मन रखन व्हाटएवर मे बी द रीजन मो रीजन रे जाउनी कारण मो भी तृणमूल रे काम करे करूची करबी भी जुजा बंची छे मो रीजन जानि छी किंतु आमे माने जुजा निजर एक्सरसाइज करबनी पावर आ रिगार्डिंग मद कथा कहूँ आपड़ जाणिक खुशी हे बा दुखी हे मुझे जानी एवं गोटे रिसेंट सर्वे बाहर 2021 किंतु पब्लिश होते नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे से ओडिशार प्राउड पोजिशन होची आंध्र महाराष्ट्र केरल पंजाब दिल्ली ठू भी अधिका मद आम पीऊचु 15 वर्ष रु ऊपर पॉपुलेशन एटा NHFS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो सर्वे कहूँ जोटा 21 मसीह आम 16.8% 15 रु ऊर्ध्व पॉपुलेशन मद पीउछन ओडिशा रे व्हेरेज पंजाब रे 12% जोटी आम भाबू पंजाबी समस्ते पियंती दिल्ली रे 11% महाराष्ट्र आंध्र केरल तमिलनाडु से माने समस्त आम तले आम ऊपर किए ना तेलंगाना छत्तीसगढ़ झारखंड आउ मणिपुर आउ नागालैंड एतिक प्रदेश व्यतीत अन्य मानक उपरे आमे मद पीबारे बहुत भल अवस्था तेणु पंचायत राज इंस्टीट्यूशन मेंबर हिसाब से आपणकर बड़ गुरु दायित्व होची जे मद पीबाटा आपणकर जो इलेक्टोरेट अच्छी कमेबे कारण अनदर साइंटिफिक स्टडी आपण माने जानी थिबे तथापि मो रिपीट करबा के चाहूची जे एनी स्टेट व्हिच गेट्स 1 रुपी एज एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्टली बा डायरेक्टली टंके 82 पैसा से स्टेट पर पर्सन खर्च करे तांकर ट्रीटमेंट डोमेस्टिक वायलेंस लॉस इन वेजेस आउ जहां सब किछि तेणु आमे ओडिशा गवर्नमेंट टंकाटे जेता बेले पाउची पर लोक पिछा मदरु टंके 82 पैसा खर्च करूची एटा भी ध्रुव सत्य थैंक यू सर लास्ट क्वेश्चन सर आपण जो कहले कॉन्स्टिट्यूशन हमको जो राइट्स देछि सेटा ऑल द स्टेट्स सब स्टेट्स से माने राइट्स को पालन करा जाउनी एज फॉर एज माइक अछि भाई प्लीज गिव मी अ माइक सर हमें एठी पॉलिटिक्स बा गवर्नेंस ऊपर बसी ने मु खाली जेते देली माय सर ओपिनियन हां जे प्रथमे तो धन्यवाद दूची एनसीआई को जे भले को आयोजन करछंती एवं ए टॉपिक ऊपर मोर गोटे ओपिनियन चंदी किछि रियल लाइफ एग्जांपल सहित खाली स्पीच देई नांती बट कनेक्ट करके आपन को बुझेया को चेष्टा करछंती आई एम श्योर ताको वार्ता आपन को मन रे कोठ ना कोठ छाप छाडी थिबो कि आगो केमति भलो काम करी कि परिवर्तन आनिबा And now I would request on behalf of everybody, Shrikant Shekhar Sahu Mahoday ko Chief Executive NCI ki मंच को आसिकी to present a memento, a token of appreciation to Srimati Padma Mahanti Madam, our Deputy Inspector General for Forest, Ministry of FE and CC Government of India. Mo Shrikant sir ko bartaman anurod karibi to present a memento to Dr. Chandrasekhar Kumar, Additional Secretary, Ministry of Panchayati Raj, Government of India. And now we would like to present a memento to Shri Kirod Chandra Mahapatra sir, Registrar, National Institute of Science and Technology, Ganjam. And now to our esteemed moderator of the session, Musan Conrad Koribi, to present a memento to Shri Jyotiraj Patra, Climate Change and Adaptation Specialist, GCF Project, UNDP India. Thank you so much for the session, Grassroots Leadership and Climate Action. Thank you so much. टिके 0.12 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हुए हमें ज्वर फील करू सेमती पृथ्वीर टेम्परेचर गोटे कांस्टेंट टेम्परेचर थाए स्थिरता थाए किंतु तार जो जलवायु परिवर्तन एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर जिओस्फीयर
ये सब गोटे समन्वय रक्षा करिकी ए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखी थांती सेतिरे जदि किछि व्यतिक्रम आसे ताले आमे ताको कहू जलवायु परिवर्तन होउची आ पृथ्वीर तापमात्रा बढ़ुची। वर्तमान आमे साइक्लोन विषय कथा होतले मु आपन गाव गुडी इन्फॉर्मेशन दबा को चाहूते जो माने पंचायत राज पर्टिकुलरली उपकूलवर्ती डिस्ट्रिक्ट्स बालेश्वर गंजाम आ तांका पार्श्ववर्ती डिस्ट्रिक्ट्स रो आसीचंदी से माने सेही भलिया परिस्थिति हमर अक्टोबर 22 रु 25 भितरे एक्सपीरियंस करि पारंती सेति पई कि भी रेडी होंतु साइक्लोन सितरंग भी हमर ओडिसा आंध्र को इंपैक्ट करि पारे अक्टोबर 22 रु 25। हमर पैनलिस्ट मानकर भितरे हमर समस्त बहुत एक्सपर्ट अछंती विभिन्न एरिया रे डॉक्टर सुतापपति से सस्टेनेबिलिटी रे काम करंती श्रीमती आभा मिश्रा जे कि यूनाइटेड नेशन रे बहुत एडाप्टेशन काम करंती डॉक्टर गोपाल रॉय जे कि वाटर रिसोर्सेस पानी विषय रे बहुत काम करचंती आ डॉक्टर स्वागत महापात्र जे कि एनिमल वेटनरी साइंस रो आछंती ओयूएट रो माई सेल्फ संदीप पटनायक आमे क्विकली डिस्कशन स्टार्ट करिबा मो समस्त को रिक्वेस्ट करबी जे बहुत संक्षिप्त रे निज निजर मतामत रखिबे कारण ऑलरेडी समय कम अछि मो मैडम सुतपपति को स्टार्ट करिबी मैडम टिके आपण हाइलाइट करिबे जे वर्तमान हमर ओडिसा रे को एरिया रे हमर गैप्स अछि सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट रे आउ आमे शॉर्ट टर्म रे माने 3 वर्ष रु 5 वर्ष भितरे कोन करि परिबा मैडम। थैंक यू। सकाळु हमें सबू टॉपिक्स कवर हो जाए दीटा मो पॉइंट कहबी कहीं आम यूनिवर्सिटी रु एकेडमिशियन दीटा ओडिसा रो जियोग्राफी और जियोलॉजी एमती जे आमे टिके बेसी ससेप्टेबल और वल्नरेबल आम बे ऑफ बेंगल रे जो आम समुद्र कूल रे आम जो कोस्टलाइन अछि आउ एठी सेति पय आम रिपीटेड साइक्लोन्स आसीबा संभावना बेसी आउ जेंती सकाळे कहले जे क्लाइमेट चेंज पाई आउरी तारो बढ़ी जाइए केमती वेस्टर्न ओडिशा रे ड्रॉट कथा भी आम हेलु मु एज एन एकेडमिशियन गोटे कथा कहबी इज अबाउट डेटा आम पाखरे आज सकाळे सार संगे कथा होतिलु जे आमे जे फोरकास्ट करबा जे बात्या को समय रे लैंडिंग होबो केमिति कोठी टेम्परेचर केते चेंज होची तारो डेटा एट स्टेट लेवल हो नेशनल लेवल आमे भलो रिसर्च करबा पई डेटा करेक्ट डेटा रो बहुत कमी अछि आउ आज गोटे एग्जांपल दोची आमे क्लाइमेट जो ओवरऑल हमर जते टेम्परेचर सब जिनस कोन डिस्कशन होती बोली मु भावुଥିଲି बोधे भेटनारी पर मोर एग्रीकल्चरटा पड़े आप मते आगु डाकी देले भेटनारी को पछरे रखी देले कारण एग्रीकल्चर गोटे जिनस फॉरमोस्ट आम कहूँ एग्रीकल्चर इज द कल्चर ऑफ ऑल द कल्चर समस्ते कहूँ किंतु जो डिस्कसन को आसे कि कौन किसी आलटमेंट जिनस उठे से एग्रीकल्चर को लास्ट रखा जाए तो से आज मत आशा कर लास्ट बसी लास्ट ही कहबी सार डिवेट करदे काले मु खराब भावी बोली तेणु आप समस्ते रियलाइज करेंगे एग्रीकल्चर इंपोर्टान्सटा निश्चय उपर अच्छी रुटी कपड़ा मका को दिन आम फिल्म शुणी समस्त सोर्स हूँ एग्रीकल्चर तेणु एग्रीकल्चर ही आम बसी देखी जहाँ आराम थे कि जिते गोटे 30 बेलू गोटे किसी इनफर्मेशन गला जे सेपटा खोला हो गला लेफ्ट पट्टा आप देखी केते भीड़ रही से पट्टारे किसी या सहित संपर्क नाला जहाँ बहुत भीड़ पर मैनेजमेंट कमिटी गोटे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी को थैंक्स देवी समाउ दे हैव मैनेज दी रस बहुत रस थिला ता भितर मु भी जन छा रही नहीं खाई आई हैव टेकन माय वे नो प्रॉब्लम मो पई किछ असुविधा है तेणु एग्रीकल्चर को जो आलोचना करवा आम जिते जाऊँ मीटिंग कहूँ प्राय तो देखुवे ओयूटी आम ओडिशा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी तार 30टा केवीके रोचे विभिन्न जिले में एवं प्रति मसरे 2-3 थर मीटिंग हो जोटि कि आपण कि आपण सहायता से मीटिंग कर आपण मानक धन्यवाद देवी किए जड़े कही किए कही मुझे जानी जय विज्ञान जय किसान तापर जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं कहला जय अनुसंधान बोली सेमती जड़े आम डॉक्टर एच.के. पाठक जानते डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर आम अपेक्स बॉडी इन एग्रीकल्चर दिल्ली से कहले इफ climate goes wrong then soil cannot be right and if we both
climate and soil go wrong, then agriculture cannot be right. And for Indian condition, and Odisha to our particular, if agriculture goes wrong, then nothing can be right. तेणु या जब आम आलोचना करवा या क्लाइमेट कौन इम्पोर्टान्स अच्छी और सॉइल किसी इम्पोर्टान्स अच्छी बारंबार आज आम आलोचना करूँ मैडम तो केते थर कही मो कटक माइंड कर प्लीज मैडम बारंबार कही मो कटक आसी कटकर कल्चर भल बहुत भल महानदी अच्छी माँ अच्छे समस्ते बहुत किसी शुणुची से कथा तापर सार सेपटे बस सी कहले मो गंजाम रु मो कथबार्ता आप जानी सारी मुझे ढेंकाणु तेणु प्रतिज जिलार सार कहले मो जाजपुर तेणु आम कहू ये जाजपुरिया ये आंदपुरिया ये पुरिया ये गंजामिया ये ढेंकाणिया तेणु प्रति सॉइल किसी गोटे इम्पोर्टान्स अच्छे और प्रति सॉइल इम्पोर्टान्स अच्छी आम कल्चर उपर नुह प्रति सॉइल इम्पोर्टान्स अच्छी बिकज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल आम जानी 70% ऑफ सॉइल आवर सॉइल इज एसिडिक एसिडिक में अम्लीय माटी आम 70% माटी है अम्लीय आप जेकोसी डॉक्टर पाक जाकू सी निश्चय कहे आगुल आगे जो कहते आम तो आगुरी डॉक्टर नाला गाँव को गला कौन से छूत मूत देखिक जहाँ किसी नाड़ी देखुले परिश्रा देखुले से कहते वैद्य कहते प्रथम से आपणकर अम्ल दोष अच्छे अम्ल मान है एसिड तेणु जब 70% सॉइल आम रोज अम्लीय तेणु दोष निश्चय आम अम्ल दोष समस्त रोग निश्चय अम्ल बेस्ट तेणु खाଇବା ଯଦି ଦେଢ଼ଟା ଯେ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ଦୁଇଟାରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାର ଅମ୍ଳତା ବଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ଶୁଣିନଥାନ୍ତେ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଖାଇବା ଠିକଠାକ ହେବାର ଅଛି ଅମ୍ଳ ଦୋଷ ଆମର କମ୍ ହେବାର ଅଛି ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ଯିବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିଜିନ୍ ରହିଛି ମେନ୍ ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସବୁଜ ଗୃହ ବାଷ୍ପ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ରହିଛି कार्बन डाइऑक्साइड रही मिथेन रही नाइट्रस ऑक्साइड रही क्लोरोफ्लोरो कार्बन रही एमती चारिटा गैस मेजर कंपोनेंट ता भितर कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी 60% और 70% जहाँपर कि आज विशेष भाव में आलोचना है इंडस्ट्री सेक्शन हो एनर्जी सेक्शन हो ये सब बेसी कंट्रीब्यूट करती कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड आम एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 50% टू द ग्रीन हाउस गैसेस जब आम फूड सिस्टम देखिए एंटायर प्रोडक्शन रू आरंभ कर डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन पर्यंत ताले कंट्रीब्यूशन होची 26%। तेणु चारि भाग भागे गैस जी क्रिएट होची एग्रीकल्चर दायी और एग्रीकल्चर आउ गोटे लाभ अच्छी से मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से यूज होमर जो फोटोसिंथेसिस जो आज आम खाना खाऊ बंची निज निज सहित देखा कॉन्फ्रेंस चलती सेमिनार चलती एनिमल्स को ऊपर कई किसी कही ना पर्यंत जड़े भाई से गंजाम आसी सी गोटे पदे कहले गोबर गैस प्लांट विषय ना तो जानी कि कहते एज है 28 वर्ष विषय मुझे कहीं आम एनिमल्स को क्लाइमेट चेंज परव्यू को आने दरकार फर्स्ट जिनस आप रिकलेक्ट कर दिंतु 2 घंटा पूर्व कौन है आम रूम रू बाहर को गले खावाई देखिले बढ़िया बढ़िया सब आइटम्स अच्छी पनीर बटर मसाला हांडी चिकेन एंड पुडिंग आइसक्रीम्स 2टा फ्लेवर आइसक्रीम बेक्ड रस होची सेथिबाई आमे सब मिल्क प्रोडक्ट्स को अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को आमे प्रोड्यूस करि पारछु चिकन कमिंग फ्रॉम द पोल्ट्री इंडस्ट्री मीट इज कमिंग फ्रॉम द मीट इंडस्ट्री चिकन एंड मटन ऑल दिस थिंग्स आ इधर गोटे मु क्लैरिफाई करिया चाहूची हम जो मटन कोचे दैट इज एक्चुअली द मीट ऑफ द शिप चिकन हैला इट इज द मीट ऑफ द गोट बट एबे भी सर रजिस्ट्रार सर ऑनरेबल रजिस्ट्रार सर थिले सी कहते कि समस्त वेजिटेरियन हो जातु नॉन वेज खातुनि बेसी कारण बीफ और कैटल रू बहुत मिथेन एमिशन होची किंतु मते जदि गोटे ऑप्शन दिया जिवो कि आपण कार ड्राइविंग छाड़ दियंतु नहले आपण चिकन और मटन छाड़ दियंतु मो कार ड्राइविंग छाड़ कि मो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सनी देओल रो इवन आपण देखिबे बजरंगी भाईजान ऑफ सलमान खान रो आपण देखिथिबे इंडो पाकिस्तान जो बॉर्डर रहउची से सब जो पेट्रोलिंग करिया को जाउछथि इंडियन आर्मी रो सोल्जर्स माने ऑन द बैक ऑफ अ कैमल इज बीइंग रैम्पेंटली यूज्ड इन डिफेंस सेक्टर हमर स्निफर डॉग्स भी रहउछथि स्निफर डॉग्स को काम होला आपण जते सब माइंस रहिला जे पर्सन बॉम्ब्स रहउची दे आर गोइंग एंड स्निफिंग इट आउट एंड हेल्पिंग द डिफेंस फोर्सेस सो एनिमल्स माने हम पे एते कंट्रीब्यूट करछथि सो इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग देम अंडर द पर्व्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज व्हाई बिकॉज़ क्लाइमेट चेंज इज आल्सो इंपैक्टिंग देम how it is impacting them I am telling about as sir said on the Odisha context if you are saying
दैट आमर बहुत टेम्परेचर रोची ह्यूमिडिटी रोची साइक्लोन भी आसी चलची एंड आप जानते फनी रे जो लास्ट साइक्लोन आसीथिला अराउंड 4.6 मिलियन पोल्ट्री बर्ड्स वर किल्ड इन दैट साइक्लोन एंड अराउंड 6000 लाइवस्टॉक वर किल्ड कहीं समवेयर आमे कोडी ना कोडी मैनेजमेंटल फेलियर हेची बोली हमर एते सब कैजुअलिटीज हैला सो डेफिनेटली आमे एनिमल्स माने को परिवेश को आनिया दरकार कारण आमे बुझिबा दरकार कि क्लाइमेट चेंज जो होची ता पे एनिमल रा मिल्क प्रोडक्शन अफेक्टेड होची मीट प्रोडक्शन अफेक्टेड होची ग्रोथ अफेक्टेड होची ताकरा जो डिजीज tolerating capacity that is immunity is also getting affected as sir said there are many diseases that are creeping in because of high humidity and high temperature like you can say anthrax you can say theileriosis trypanosomiasis anaplasmosis and blue tongue we can also say about mastitis these are all the diseases the animals are getting affected and that is because of this climate change so we need to decrease the stress in animals which the climate change is inflicting on them that is why that should be done and fourthly hame kemiti recognize kariba am pakhre animals achhati je ki koi paru na animal kebe koi dobani आगे आगे आपण के फैन टा लगे दियंतु मते गरम होछ कहि परिबनी आपण की इच्छा हला आपण को ठंड गरम लागिला आपण पानी पी देले किंतु एनिमल टा पानी पीवा पे भी आपण को ऊपर डिपेंडेंट राइट तो सेति पे आपण को देखिया पड़बा आपण जेमति मैडम कहउतले कि अलगा डेलीगेट्स माने कहउतले कि कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन टू ह्यूमन सिमिलरली आपण जो एनिमल टा रखिजन ताक संगे यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ एनिमल विल शो साइंस एंड सिम्पटम्स ऑफ हीट स्ट्रेस नंबर 1 जेतिक समस्या सोई के रहउतले अबे बेसी टाइम ठिया ही के रहइबो द रेस्पिरेशन रेट विल गो हाई the rectal temperature or the body temperature of the animal will go high and farmers need to realize jodi gotte degree bhi body temperature animal ra adhika hela then that will lead to decrease in 2.5 kilo of milk 2.5 kilo milk per दिन gotte दिन हिसाब रे कमी जिवो जदी animal रा temperature gotte degree भी rise गला above its recommended body temperature so सेटा को हमको देखिया पड़िबो ଆଉ lastly I will talk about this mitigation strategies first thing is awareness हमको फर्स्ट अवेयरनेस स्प्रेड करिया को आके आसीबो आ सेठी भाई माने पछर कहउतले कि अवेयरनेस कैंप्स करिया पे हम पखरे बजट नाही ऑल दिस थिंग्स हमें जा बुझु छु कि सेटा गोटे बड़ लैक्यूना कि हमको भाई अवेयरनेस कैंप्स में बजट नाही किंतु अवेयरनेस आ गया संगे आपण चाहिए इंटेंशन थिले आराम से स्प्रेड कर जिवो आपण देखंतु गोटे फॉर एग्जांपल गोटे जरी विलेज रे कटरीना केफ आ विकी कौशल आजी मैरिज हला आजी जदी गोटे गां लोक जानि छि काली सकाळ को सब दग गां लोक जानि छि आगे नहीं बोलतो सेति के फास्ट इंफॉर्मेशन स्प्रेड करे तो जदी छोटा छोटा अवेयरनेस भी हम स्प्रेड कर दे परिबा फॉर एग्जांपल द एनिमल्स जेतरा तमे आपण गाय को की पोल्ट्री बर्ड्स को रखुचंती ताको टिके भला वेंटिलेटेड एरिया रे रखंतु वेंटिलेटेड शेड रे रखंतु ताको पाखरे ड्रिंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल करांतु वेटनरियन लोकल वेटनरियन संगे कंसल्ट करंतु कि कोन स्ट्रेटजी हम नहीं परिबा हाउ टू मिटिगेट हीट स्ट्रेस इन एनिमल्स एंड फाइनली वी आर स्ट्रेसिंग ऑन द वन हेल्थ कांसेप्ट नाउ one health ray there must be seamless interaction or there should be high interaction between the healthcare professionals or human healthcare professionals as well as the veterinarians so that everything can fall in place and we can have a good GDP growth and we can curtail down the diseases and all these things so kindly take my words into the छोटा छोटा जिंस जेमति एनिमल पाखरे टिके ड्रिंकिंग वाटर सुविधा थिवा दरकार एनिमल आपण देखुथिबे उदुदिया खरा होतुबो प्रबल खरा होतुबो एनिमल्स को छाडी देथिबे ग्रेजिंग पाई तो सेटा को टिके अवॉइड करंतु कारण आपण जानिचंती कि आपण एनिमल बाहर को पळेला सी कहि परनी ताको खुशी लागु सी बाहर बोली के आसला बट सेथरे आपनकर द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द कैटल गोस डाउन तो सेटा आपण जदी करि पारले ताले एटा बहुत होबा मु जानिछे सारा अवश्य टाइम हो पाके नाही आई विल कंप्लीट सर थैंक यू बहुत धन्यवाद सब पैनलिस्ट मानन को जदी टाइम रो टिके कम लिमिट रहिला इस सेशन पई बहुत तथापि बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स मिलिला मु ताको समराइज करिया चेष्टा करबी फर्स्ट ये जलवायु परिवर्तन जो एक्सट्रीम इवेंट्स बहुत बढ़ी जाइए गोटे डाटा आसूची जे 36 डेडली साइक्लोन जदि वर्ल्ड ओवर होता है 27टा साइक्लोन हमरो बे ऑफ बंगाल रे ही केवल होईची एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट डेज जो ई वर्ष गला 2022 रे 1874टा हेवी रेनफॉल इवेंट्स होईची करस्पोंडिंग टू 2021 रे 1332टा कैजुअलिटी हमरो ओवरऑल इंडिया रे almost 1333टा कैजुअलिटी हेची ओडिसा रे 65 कैजुअलिटी हेची आई एम टॉकिंग अबाउट जून जुलाई अगस्त सितंबर दिस ईयर कमिंग टू अदर पैनलिस्ट इनपुट्स मैडम सुतवा मैडम कहले जे डाटा रो प्रबल लैक अछि हमें पाखरे डाटा नाही आउ जो मल्टीपल रिसर्च चलीची कि कोलैबोरेशन चलीची
तार कन्वर्जेंस रे बहुत प्रॉब्लम अछि माने लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट राइट हैंड डूइंग और एडमिनिस्ट्रेशन वन एडमिनिस्ट्रेशन डजंट नो अनदर एडमिनिस्ट्रेशन करेक्टली आबा मैडम बहुत इंपोर्टेंट कथा कहले जे हमको लोकल लेवल रे अडॉप्टेशन स्ट्रेटजी टेक हेल्प ऑफ सीनियर एल्डर्स इंटेलेक्चुअल पर्सन ताको एक्सपीरियंस आउ टिके अडॉप्टेशन डिस्कशन करिबा लोकल नॉलेज को शेयर करिबा जहा हमर ट्रेडिशनल नॉलेज अछि प्रोफेसर गटनायक बहुत एलाबोरेटली डिस्कस करले हमर किछिटा जिंस रे से कहले जे हमको लोकल फार्मिंग पॉन्ड टाइप रो वाटर कंजर्वेशन ऊपर स्ट्रेस दवा पई सॉइल हेल्थ ऊपर स्ट्रेस दवा पई की आ तापर किछिटा जो क्रॉप रोटेशन और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी ऊपर एम्फासाइज करले थैंक यू वेरी मच सर रॉय सर वाटर रिसोर्सेस ऊपर बहुत एक्सपर्ट आई थिंक सर हमें आपन को बहुत हेल्प होबा फ्यूचर रे भी सार कर कहबा गुडा जिंस हमर नुआ टाइप रो होउची कारण हमें ताको अडॉप्ट ठीक से करि परनु जदियो सिचुएशन ता एते एग्रेसिव नुहे किंतु जेहेतु हमर अनरिलेंटलेस एंड केयरलेसनेस ग्रोथ होउची आउ टिके मैनेजमेंट रे प्रॉब्लम होउची सेति पई हमें जो जिंसटा एते फ्लेयर अप होबा कथा नहीं सेही टाइप रो फ्लेयर अप देखा जाउती ता सहित भी सर फोरकास्टिंग रो भी चैलेंजेस को आके हम पागरे आनिले जे वेदर फोरकास्टिंग रे भी आउरी केते प्रिसिजन नहीं परिबो जा फळे कि डैम मैनेजमेंट फ्लड मैनेजमेंट ऊपर ध्यान दिया जाई परिबो डॉक्टर स्वागत बहुत शॉर्टली कहले कि बहुत इंपोर्टेंट कथा कहले कि नथिंग कैन बी वी कैन नॉट इग्नोर एनिमल्स वी कैन नॉट इग्नोर आवर लिविंग हैबिट्स मु जदी पैसा कमाउची ताले मोर एटा राइट होची जे हाउ आई विल एंजॉय माय लाइफ ओके आई एम एनवायरमेंटल फ्रेंडली बट मु भी मो एंजॉयमेंट को कॉम्प्रोमाइज करबिनी ता भीतरे गोटे मिडिल पाथ काढीबा को अछि जे कोटा हमें छाड़ी परिबानी आपण मे बी एसी रे रहया को भल लागति मते एसी रे भल लागे तो सही जिंस भीतर वी हैव टू फाइंड ए कॉमन पाथ जेमिति कि डेवलपमेंट आउ आ भीतर हमको गोटे समन्वय रक्षा करिकी क्लाइमेट मिटिगेशन अडॉप्टेशन ऊपर ध्यान देबा पड़िबो अब ये क्लाइमेट एस्पेक्ट रे केवल ह्यूमन बीइंग नाही एनिमल हेल्थ आउ प्लांट हेल्थ ऊपर भी इंपैक्ट करिबो जेटा अल्टीमेटली हम फूड चेन को इंपैक्ट करिबो ता प्रति भी ध्यान देबा पड़िबो आ इंटीग्रेटेड हेल्थ विषय भी से कहले सेटा भी बहुत इंपोर्टेंट जिंस धीरे धीरे आ ऊपर एटा गोटे फर्स्ट समिट हम ट्राई करछु ओडिसा पई आ हमें आ ऊपर बहुत आगु काम करिबा मु धन्यवाद देबी हमर ऑर्गेनाइजर नेशनल केयर इनिशिएटिव को ये अपॉर्चुनिटी देतिबारु आ मु धन्यवाद देबी सब एस्टीम गेस्ट माननकु एते आपन जदी इनकन्वीनियंस हेछि आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बट थैंक यू वेरी मच आपनकर बहुत वैल्यूएबल इनपुट पाई थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस ऑडियंस भितर के जण के क्वेश्चन पचारे को चाहतुवे बट अपॉलॉजीज एज वी रनिंग शॉर्ट इन टाइम तेन पर हमें प्रश्न नहीं पारनु बट एवरीबॉडी इज हियर आपण वन ऑन वन ताको अप्रोच करके जति किछि आपण का थॉट्स शेयर करे को चाहे यू मोर देन वेलकम फॉर दैट बट एते इनसाइटफुल एते प्रैक्टिकल सेशन पाई हमें हम पैनलिस्ट को मॉडरेटर को धन्यवाद खाली शब्द रे नो ताको सम्मानित करके मध्य करबा को चाहेबो एंड फॉर द सेम आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर श्रीकांत शेखर साहू चीफ एग्जीक्यूटिव एनसीआई टू काइंडली कम ऑन स्टेज and felicitate Professor L.M. Gadnaik sir, ex-Dean College of Agriculture, OUAT Bhubaneswar, sir, please. Again, from the start of the civilization to Ajya. Thank you very much, Professor Gadnaik, for your insights. Thank you so much. श्रीकांत सर को वर्तमान अनुरोध करेंगे टू फेलिसिटेट डॉक्टर स्वागत महापात्र। धन्यवाद सर को वर्तमान अनुरोध श्रीमती आभा मिश्रा। वर्तमान सर को अनुरोध करेंगे टू थैंक एंड फेलिसिटेट डॉक्टर गोपाल प्रसाद रॉय, former Chief Engineer, Water Resource Department, Government of Odisha, Bhubaneswar.
एंड वर्तमान आमे आंतरिकतार we are indebted to you for your presence, for your thoughts, so we would like to definitely thank you again. आज दिन आपण समस्ते मो सहित सहमत हेबे कि बहुत फ्रूटफुल रही छी बहुत मंच पर स्वागत करूछु मो स्वागत जणाय को चाहिबी the meeting will be presided over by Mr. Trilochan Jena Sangu, research scholar, Ravenshaw and senior journalist. Sir को मध्य स्वागत एवं अनुरोध मंच पर मंचासीन हेबे. And with that, before we begin the valedictory session, Jemki Mohili, it's an honor that we are honored. I can't thank him enough. We have the presence of Justice A. Suryanarayan Naidu, former acting chairman, National Green Tribunal, as our chief guest. So once again, a very, very warm welcome. As our guest of honor this evening, for the summit, for the valedictory session, we have Shri Madhusudan Das, Additional Secretary, Department of Forest and Environment, Government of Orissa. बहुत स्वागत सर आपको. Ebong the valedictory session is being presided. Indeed. I would request Mr. Jena to give the opening. आम सम्मुखें उपस्थित नीलाचल नायक जगन्नाथ पाखे मोर भक्तिपूत प्रणाम. तापरे आम मंच रे अछंती न्यायाधीश ए सूर्यनारायण नायडू न्यायाधीश जी एवं आम सहित अछंती मधुसूदन दास फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा और सामने थिबा समस्त पंचायत समिति आसीथिबा प्रतिनिधित्व एवं अनेक समाजसेवी संगठन विशेष करी शक्ति प्रसाद नायक सार एवं श्रीकांत कुमार साहू सार ये जो प्रोग्राम को रंग देइछंती ए गाँव रो प्रत्येक जिलार लोक मानू डाकी प्रतिनिधि मानू डाकी तांको अंचल समस्या शुणा सहित ए मंच रु कौन वार्ता ग्रास रूट को तृणमूल स्तर को जीव ए प्रयास टी मो शक्ति प्रसाद नायक सार एवं श्रीकांत कुमार साहू सार को धन्यवाद न दे मो अंतर मो केबे ए मंच रे ठिया हेबा असंभव. वर्तमान आमे गोटे पटे शिल्प विप्लव आ गोटे पटे कृषि विप्लव आ भितर आमे गति करूछु आगु को ए ता भितर पुणी आ बड़ दायित्व ग्लोबल वार्मिंग जो आमर सबू काम हम ता भितर आमको आधुनिकता दरकार मेकानिज्म दरकार एवं मेसीन काम करिवो ता भितर आमको जो प्रक्रिया आगु जीवा कथा जीवो जहाँ नष्ट हवा कथा हबो किंतु आरंभ शेष पर्यंत जो जो पैनलिस्ट माने थिले एते सुंदर चमत्कार आलोचना करिसेंती जहाँ आपण मानकु ए पर्यंत सफलतार आगु आगु नहीं चली सबुठ बड़ कथा हला जो आम एग्रीकल्चर सार कहते मु जंतु जड़े कृषक परिवार आसी ना मो परिवार के सरकार चाकरी अच्छा ना मो परिवार के नेता के बिल्डर अच्छा मु जड़े संपूर्ण चाषी गोटे कृषकर पुओ रेभेन्सा पाठ पढ़ी पारी आज आपण मान पाखे ठिया पारी. तो आम या कहवाक चाहूँ जदि गोटे चाष कर तार गाई रखला मिथेन गैस हम जड़े जदि कृषि विप्लव करने चाहूँ कौन शिल्प कारखाना कर प्रभाव पड़ो समाज उपर आम कौन कले संतुलित हम से विषय आम दिन सारा शुणुले. बर्तमान आम बहुत सुंदर भाव शुणा आमर मधुसूदन दास सार को सी जहाँ अभिज्ञता अच्छी जंगल एवं एग्रीकल्चर सॉरी जंगल विभाग उपर एनवायरमेंटल उपर सी आमको बहुत सुंदर भाव बुझे. नेचर केयर इनिशिएटिव तरफ आयोजित क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपिंग resilience in Odisha
ये जो उद्यापन दिवस मुख्य आकर्षण मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति ये सूचना राउत महोदय संयोजक बंधु उपस्थित मोर प्रिय समस्त पंचायत स्तर लोकप्रतिनिधि एवं सज्जन मंडली सांबादिक बंधु मो पैनल डिस्कशन शुणुली ता सहित शुणुली भाई भौणी मानकर अनेक प्रश्न जार उत्तर स्वयं तांकरी पाखरे ही थिला सरकार सरकारी योजना तार रूपायन पीआरआई मेम्बर सेतेरे भागीदारी ये सब कथा आलोचना करा जाई आउ किछि बाकी नहीं मो मन को सत प्रश्न आसे आम मान को जो दायित्व दिया जाइछि आमे ताकू केते दूर निभाउछे गोटे कथा कही आसुचे दिन सारा कह जाउछि जे जलवायु परिवर्तन होउछि परिवर्तन भितर आम मानकर जेतिकी परिवर्तन हवा कथा सेतिकी परिवर्तन हो ना आम भावुचे यही परिवर्तित जलवायु भितर आमे जेतिकी खाप खुआई चलवा कथा बात्या आसीबो बन्या आसीबो दुर्भिक्ष आसीबो पिला बेले आसुथिला एबे मध्ये आसुछि एवं आसंता दिन मानक आसीबो किंतु ताकु केମିତି ଆମେ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଅପଦମିତ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ସାହସ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ଏ କଥା ପାନେଲିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏଠି କହି ରଖେ ଏ ରେଜିଲିଏନ୍ସ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଜିଲିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାନେଲ ଡିସ୍କସନ୍ ଶୁଣିକିରି ଯାହା ମୋ ମନରେ ଅଛି ଭାବାନ୍ତର ମୁଁ ତାକୁ ଦଖାଣିବି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ 21 ରୁ 30 ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ उच्च पदाधिकारी प्रशंसा करिसेंती एवं ये जो स्टेट एक्शन प्लान आम क्लाइमेट चेंज उपरे करिछु सेतरे आम 11टा डिपार्टमेंट को नहींछु सेमाने होचंती हमर डिपार्टमेंट पार्टनर आपनकर कृषि अछंती सेतरे आपनकर अछंती मत्स्य एनिमल रिसर्च डिपार्टमेंट से भी अछंती स्वास्थ्य अछंती आपनकर अर्बन डिपार्टमेंट अछंती 11 डिपार्टमेंट को नहीं आम करिछु कन्वर्जेंस मोड्रे आम करूँ से केते पैसा देवे एवं टोटाल पूल ऑफ फंड रे केते पैसा आम रिजिलेंस काम करा सरकार से बाबद करते सबू राज्य स्टेट एक्शन प्लान मासे तले उपस्थापित करागला वर्चुअली दि स्टेट एक्शन प्लान सबमिटेड बाय दि ओडिशा वाज अप्रिशिएटेड हाईली बिकॉज ऑफ दि कन्वर्जेंस आमे केबे सेतरे कहि नथिलु आमे केते पैसा आनिबु आमे सेतरे बरात करथिलु जे केते टंका आमे 21 ରୁ 30 पर्यंत खर्च करिबु अनवरत ओडिशा सरकार क्लाइमेट चेंज उपरे काम करि आसुची आपण माने जानिथिंती आगुरु फॉरेस्ट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट थिला एबे नूतन भाव रे फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एवं क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट आपण मानकर नामित होती एवं फॉरेस्ट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट रे एक क्लाइमेट चेंज सेल काम करुच्ची से 2 जन सीनियर साइंटिस्ट अच्छा 2 जन जूनियर साइंटिस्ट अच्छा अनवरत भाव काम कर सब डिपार्टमेंट सहयोगितार सहभागितार काम होगला सरकार योजना रिजिलियंस जब रिजिलियंस कथा उठब तार जब डिक्शनरी मिनिंग आम देखा
ability to recover from the setbacks. Ability to recover from the setbacks. आसीबो दुर्घटना आसीबो आपन पाखरे सब नेचुरल कैलामिटी बा आपनकर विभिन्न पर्याय रे बन्या आसीबो बात्या आसीबो ताकू केमि सम्मुखीन हबा जणे भाई कहउतिले जे सेमाने पंचायत स्तर प्लान तैयारी कर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयारी कर ब्लॉक स्तरीय होउची एवं जिला स्तरीय होउची राज्य स्तरीय होउची सेथरे यो कथा पैनल डिस्कशन करी कहउतिले जे डाटार अभाव होउची डाटा अभाव अछि किछि मात्रा रे किंतु आमे जति मनोनिवेश करिबा डाटार अभाव रहिबो नाही एवं ए जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयारी होउची आबा मिश्र अछथि आबा मन रे आकु जति ठीक भाव रे करा जिवो जेते बळे गोटे डिजास्टर घटिबो सेते बळे ए डाटा हमकु सहयोग करिवो। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मो गाँ मो पोखरी मो रास्ता ये मोर आपणीयतार लगे श्री मधुसूदन दास आपण मानक जो बुझेले जो खबरटी गाँ को जीवा कथा जो खबर पहुँचेबा कथा से अति सुंदर भाव में बुझाई पारे एवं किभली भाव में गाँ तो दूर कथा घर प्लास्टिक मुक्त हम सिंगल यूज प्लास्टिक गोटे गोटे परिवार यदि मुक्त हम तेज गोटे गोटे गाँव मुक्त होते सुंदर प्रांजल भाव में बुझेले जदि आम यह शुणी बुझी आम घरे आम गाँव में कम लगेगा ताले श्रीजुक्त मधुसूदन दासंकर श्रम आउ एठिक आसी समय नष्ट कर आपण मानक बुझेबार किसी सुफल मिल एवं एनआईसी को आहुरी आगक नब। बर्तमान आम जहाँ को अपेक्षा करूँ सकाळु ए पर्यंत पूर्वतन न्यायाधीश ए सूर्य नारायण नायडू साहब से आपण मान आगे आउ किछि सेकंड पर आपण मान कहिबे से आम गर्व एवं गौरव आमे तांकु अति नीरव रे सुनिबा आमे आम आसन रे बसी आमे तांकु से आमको कौन उद्बोधन देवे आमे टिके धीर स्थिर चित्तरे तांकु सुनिबा। जय जगन्नाथ। मंचस्न श्रीजुक्त मधु त्रिलोचन एवं अन्य समस्ते आम आगे बसवा भारतर समस्त सचेतन नागरिक ये सचेतन नागरिक कहली जे आपण मान बर्तमान भारतवर्ष निर्भर कर भारतर एनवायरनमेंट कहतु परिवेश कहतु कि जलवायु कहतु क्लाइमेट जहाँ कहते एवं अन्य जिनस प्लास्टिक निरोध कहतु समाजर जहाँ कि बर्तमान दुर्गुण चली पल्यूशन चारिड़े माति चली ये सब गुड़ाक निर्भर कर धन्यवाद देवी शक्ति को और श्रीकांत को मत कि समय देवाई आजिकल तो क्रिकेट युग मोर बयस नहीं 5 दिनिया क्रिकेट खेलवा 50 ओवर क्रिकेट मु खेली पारि बोधे से कथा भावी शक्ति ठीक कले जे आपको 20 ओवर में देदेवा मारे जदि चक्का मारे ना घर फेरवे से हिसाब से मुझे आसी पहुँचली आप किसी समय है आज दिन जाक आप जहाँ कहते इंग्राजी ब्रेन स्टॉर्मिंग डिस्कशंस मन को मंथी देला भाया अनेक गुड़े कथा शुणी शुणी विरक्त होगी कि अति खुशी है आम ओडिया कहू सब जे मधुर न समय पे जहाँ खाଇବା ହେଇଥାଉ जदि शेष बेल को डेजर्ट टिके न आसला टिके मीठा टाका पार्टी न पाटिला ताहले से खाइबार मूल्य किछि रहना आउ से ही डेजर्ट परिसेवा पाई मु आपन मान पाखरे आज आसी ठिया है मेन कोर्स सरी जाइए तेणु मेन कोर्स भितर को जीविनी मधु को शुणुली खूब सुंदर भाव में ये आम फरेस्ट मैडम बस गछलता पशुपक्षी समस्त मालिकाणी जहाँ कहती एवं परिवेश को सुधार चेष्टा मुझे शुणी विषय अनेक आपण मैंने तेज गोटे कथा मु
जानीपरुनी ये पिलाने अच्छा पिलाने ये आस आग को बस मुझे आसी आपण आगे ठारे जो मैंने बस पड़े समस्ते कहते क्लाइमेट 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 चेंज हो परिवर्तन हो पृथ्वी में बहुत किसी घटवा जाऊँगी घटी जाऊँगी क्लाइमेट माने कौन आज दिन में आप डिस्कसन कि क्लाइमेट माने कौन ओडिया जी कहवा क्लाइमेट माने कौन परिवेश तो नुह परिवेश माने आप एनवायरनमेंट को चली जाए क्लाइमेट माने आपंकर जलवायु आप देखुए घरे आमर अजा जिते थे देह खराब हो पड़ता डाक्तर आसिक कहले हमको जलवायु परिवर्तन निहाती दरकार ये खरा दिन में ये समुद्र कूल रही लुणिया पानी रे लुणिया पवन रे देह खराब हो किसी दिन शुखिला जगह को नहीं जातु आइदर दिल्ली नहीं जातु कि ना ठंडा जगह को नहीं जातु जलवायु परिवर्तन जलवायु माने कौन द्वितीय प्रश्न हूँ जलवायु माने कौन ये जलवायु पर बहुत किसी तर्जमा तर्जमा है आपंकर देखिए आपंकर जलवायु गोटे जगार जलवायु आगु ऋतु थिला आमर ऋतु अनुसार वर्षा दिन थिला तापर खरा दिन आसूला तापर शीत आसूला एमती आजिकल जो खरा वर्षा शीत ये जो ऋतु गोटाक पर गोटे आसूला होता तार परिवर्तन 30 वर्षर जदि रेकर्ड रखा जाए जे गोटे जगार केते वर्षा होची केते डिग्री खरा होची केते शीत होची एही समुदाय को लेकिन से जगार आपणकर क्लाइमेट कि आपणकर जलवायु सिद्धांत होता आजिकल से सिद्धांतटा धीरे धीरे बदली जाए जो चारिड़े देखाला सिद्धांत बदली हो समस्त मन है सिद्धांत बदलवा द्वारा लोक मान अनेक क्षति हो कौन क्षति होची ताको मु कहिबी किछि समय पर तबे गोटे कथा कहिबी ए सब कथा बुझिबा जिते चिंता पड़ला जे कहीं एगुड़ा होची मन रे गोटे कथा आसे जदि उन्नति करने गोटे देश चाहे ताहले समृद्धि ही उन्नतिर लक्षण कि आप कहीपारती प्रकृति कौन सा प्रगति ही उन्नतिर लक्षण आ उन्नति केमती हम प्रगति कले उन्नति प्रगति केमती हम प्रगति हम जदि आपणकर प्रोडक्शंस बढ़ माने केमती आपणकर जिनपत्र जहाँ किसी करवा कथा से कारखाना जिनस हो मोटरसाइकेल हो मोटर हो आप सकाଳେ शुणिले अश्विनी बाबू आसते सुंदर भाव में कहते मंत्री महाशय शुणिली जे रेलवे विषय आप रेलवे चेंज देखूँ आप हाईवे चेंज देखूँ मोटर गाड़ी देखूँ इलेक्ट्रिकल मोटर गाड़ी देखूँ तेल देखूँ पेट्रोल देखूँ डीजेल देखूँ सबुआड़े गोटे परिवर्तन चिंताधारा चली से परिवर्तन जो आपणकर किसी किसी उन्नति होती आप जिन प्रोडक्शन कर एक्सपोर्ट कर से प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टेशन जो क्षणिक जहाँ रोचे से आपणकर उन्नति हो तेरे ये उन्नति करने आम सब आप देखुं गोटे जिनस पाइबा कि आम देदेव पड़े किसी न पाई किसी न देकी किसी जिनस मिलबनी आप जहाँ कहते पाठ पढ़ा जाऊँ स्कूल को जी बेतरे दी चोट पाइले ही पाठ पढ़ा हम जो जातु आप पैसा दे किणवे जहाँ दे कले तेणु यही उन्नति प्रगतिर मूल में आपंकर आसला पल्यूशन कि क्लाइमेटिक चेंज आ क्लाइमेटिक चेंज पल्यूशन जिते आसला से कथा पड़ा जे कौटी कौटी क्लाइमेट चेंज हो दी प्रकार पृथ्वी में दी प्रकार देश रहा गोटे डेभलप्ड कंट्रीज आ गोटे डेभलपिंग कंट्रीज डेभलप्ड कंट्रीज किए डेभलप्ड कंट्रीज जो मैंने आगू चलिए यूरोपीय मैंने आगू चलिए कमी भारत उपर अन्य शह शह वर्ष धरिकी से राजनीति करते जहाँ किसी अन्याय करने कथा आम काठ चिरे आम सब कले बर्तमान उन्नति होगी से उन्नत देश परिणत है कि जो आम उन्नति आड़ को जाऊँ से कहते ना ना तुम्हें डेभलपिंग कंट्रीज तुम्हें आगू जापरि तुम्हें या करें ताकि विभिन्न प्रकार चिंताधारा मन को आसी सबू नहीं आसला गोटे चिंताधारा जे जो प्रगति जो असुविधा होती प्रगति मूल में जो मकदमा सब आसूँ प्रगति को बाधा देवाई विचार करने कौन कर आगुरी कोर्ट कचेरी जाते जहाँ कले सब तो कोर्ट को जावाक पड़े तेणु कोर्ट रे ये मकदमा गुड़ाक अनेक दिन धरी रहे आर ठीक भाव में प्रचलन हो पाए से गोटे चिंताधारा है गोटे एनवायरमेंटल सुरक्षा परिवेश को सुरक्षा करने गोटे अलग प्रकार
मकदमा कि क्षेत्र प्रस्तुत कराऊ जहाँ ना देवाई बहुत चिंता पर ठीक है जे सबुज अदालत भारतीय कि जातीय सबुज अदालत जहाँ को आम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहूँ जगन्नाथ अपार करुणा मु एनजीटी प्रथम ओडिशार प्रथम मेंबर जे जाकि जॉइन करूँ आज जाए कारण एनजीटी मेंबर हाँपे आपको गोटे रीतिमत इंटरव्यू देवा पड़े जज हेपारे रिटायरमेंट कलापर जज रु इंटरव्यू देकी सिलेक्ट होगी एनजीटी जाकि पशिबा यहाँ गोटे काठिकर पाठ तेणु ओडिशा मु प्रथम आ बोधे बोधे जज मान रूप में शेष मैं आगे भी जाना कारण आरंभ शेष आज पर्यंत कहीं एनजीटी को जापार ना सेमती ठीक एनजीटी गोटे एमती कम्बिनेसन जो जड़े जज रे सागर जड़े एनवायरमेंटालिस्ट रे जो मैंने साइंटिस्ट थे एनवायरमेंट काम करते मैडम भाया फरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत लोग से सागर अच्छे जो मैंने फरेस्ट डेवलपमेंट्स कि फरेस्ट अवनति जो होती देखापी एमती गोटे कम्बिनेसन गोटे 3 जणिया 4 जणिया बेंच आम बसे जो थी कई एक्सपर्ट मेंबर था फरेस्ट मेंबर था जुडिशियल मेंबर था समस्ते बसिकी ठीक करती कौटा डेवलपमेंट कौटा न डेवलपमेंट हुए साधारणतः डेवलपमेंट नहेले गोटे देश आगू जापर आम कौन से मागुणी शगड़े सबुदिन रहा केते जन जानी मागुणी गप फकीर मान को पढ़ी कहीं वाह गुड तो किसी ओडिया साहित्य विषय में ध्यान रोचे से मागुणीर शगड़ बहुत दिन गलानी आसला भंगा ट्रक आम भंगा बस पेट्रोल चलता कि बेले बेले आम जो नुआ नुआ थी से आप देखिए बस सब कोईलार भी चलता ठीक अच्छे से बस गई कड़े जाई आम कोते बाट को प्रगति करगलु आगे गलुँ के डेवलपमेंट हो गलु किंतु डेवलपमेंट करने पुणी आउ गोटे पुणी से मूल को चली आसिले आम डेवलपमेंट करवा डेवलपमेंट कले कि गछ काटा कि फैक्ट्री बसैवा कि नुआ नुआ जिनस करवा आगुड़ाक जो डेवलपमेंट करने द्वारा प्रगति कि जो मानने जलवायु जो क्षति घटुची कि परिवेश जहाँ क्षति घटुची ताकू केमती रखा जाए मैंने संतुलित डेवलपमेंट आम कहू डेवलपमेंटा आम संतुलित हम इट शुड बी बैलेंस डेवलपमेंट बैलेंस डेवलपमेंटा केमती हुए आपने समस्त देखिए जेको जगह डेवलपमेंट है आपन पाखे खनि हो सब खनि लिज दिया हो अनेक पाखे फरेस्ट लिज दिया हो सेठी कौन हुए सेठी गोटे आग लोक मान सागर ऑब्जेक्शंस कॉल्फर करा जाए समस्त को देखा जाए शुणा जाए गोटे कमिटी करा जाए से कमिटी समस्त को शुणी सारापर गोटे जिनस डिसाइड करे जो गोटे डेवलपमेंट कले गोटे फैक्ट्री बसले सीमेंट कारखाना बसले इलेक्ट्रिसिटी कारखाना बसले कि अन्य किसी कारखाना बसले देशर लाभ केते हम लोकंकर क्षति केते हम यहाँ हूँ जो बैलेंस डेवलपमेंट संतुलित ये सबुतक दुईटाक जिन देखी सारापर से करेंगे जदि प्रकृत में डेवलपमेंट द्वारा लोक मान बेसी लोकंर उन्नति हम आउ जो मान अवनति होती क्षति होती अन्य भाव में परिशोध करहब ताहले आप डेवलपमेंट करा जमी आप कलिंगनगर देखिए कलिंगनगर डेवलपमेंट अन्य डेवलपमेंट सब बड़े ट्रेडिशनल डेवलपमेंट हुए एवं मुझे टी अन्य आड़ को चली जाऊँ ये जो जलवायु परिवर्तन कहीं हुए किए कह कि मत साहय करें जलवायु परिवर्तन कहीं हुए आप जलवायु परिवर्तन हुए जो आपणकर थर्मोडायनामिक सर टिके क्षमा मागी नउची Before we officially propose the vote of thanks, how can we not thank our dignitaries, our chief guest and guest of honor, जी आज समय बाहर करके आम घर उपस्थित होती तेणुक एनसीआई तरफ आम समस्त तरफ आम निहाती भाव में धन्यवाद जनइबा एवं सम्मानित करवा से श्रीकांत सर को अनुरोध करी टी प्लीज मंच उपरको आसबे एवं आम समस्त तरफ प्रत्येक एवरी इंडिविजुअल सिटीजन जे क्लाइमेट चेंज को लेकिन अवेयर हवाई चेष्टा करुँच उपस्थित अच्छा पर यही कथा जानवे समस्त तरफ आम आम गेस्ट मान को धन्यवाद निहाती भाव में जनइबा मो रिक्वेस्ट करी श्रीकांत सर को टू काइंडली थैंक एंड फेलिसिटेट आवर गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द वैलेटरी सेशन श्री मधुसूदन दास एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा।
संध्या हे गलानी भोक भी लागिलानी बट टिके जोरदार ताड़ी दबा फॉर अ ग्रेट डे वी हैव मेट एंड अ ग्रेट क्लोजर एंड विद दैट वर्तमान महोत्सव को अनुरोध करें टू डिग्निटरी to please felicitate our chief guest of the session, Justice A. Suryanarayan Naidu, sir, former acting chairman, National Green Tribunal. एटी मैं आपको कहि रखिबा चाहे जे वर्तमान फॉर्मल वर्तमान श्रीकांत सर को अनुरोध करेंगे टू थैंक एंड फेलिसिटेट श्री त्रिलोचन जेना सर, our research scholar, Ravinsha and senior journalist. Thank you so much. So before we officially propose the vote of thanks, let me also tell you that it's going to be an official proposal. But आज रो दिन सॉरी को नहीं कारण आज बहुत सीरियस कथाबार्ता हेची, इंटरैक्टिव सेशन हेची, बट आपण समस्ते मो सहित सहमत हेबे जे द मोस्ट पावर अरे
जाइके एसीटा ऑन कर दे बसी मोबाइल देखिबा आ कोन किछा काम रे काम धंदा तो किछि नाही अरे चंदू बाहर कुटी आसी आपण को मुख दर्शनटा दब की बाहर भितर पछियो आसो हे ओहो जे তুমি তো জানি পারো না বাহিরে এতে গরম আমি ভিতরে এসে লোকে বসবি তো খান করবি देख रे इंग्राजी गुड़ा का पनिक धारा बई पालू पालू करी पकौ अरे बेटे बुढ़िया कहो बाहर पासे सबू सारी दे सालणी एसी चले चले सबू ध्वंस करी दे सालणी रे ओहो व्हाट इज योर प्रॉब्लम मैन काय तमे इफ टाइम ऑफ रिफ्लेक्ट करूटा कोन तमे चाहता मुई खरा गरम रे एमती एसी न चले ये तू आफसिबी ओ बुझी पारली माने तमरो এই সুখটা তমো দিহকু যাওনি রাইট নো রিস্ক মো ড্যাডি কো কইলেবি তমে যেতে ইলেকট্রিক বিল হইছি তমো দেই দেবে কোন কইলু আর সব গুড়া কোনি স্বর্গ কোনি কি দিব কি इलेक्ट्रिक बिल होरे ए से इलेक्ट्रिक बिल कथा मते कहू अरे मु से इलेक्ट्रिक बिल पाई कहूनी रे मु एसी पाई कहूची रियली रियली ए एसी पाई कहू जानी कोन पे आगो काल रे हम जेते बळे छोट थु ओ या 12 मास रे 6 टी ऋतु खरा वर्षा शीत काकर खाई बॉडी पूरा पूरा स्ट्रांग आउ आजी गालिया तुमे माने सब मेंचर टका सुद ब्रॉयलर कुकुडा आ खरा टिका देखिले ता बात भाईला बळी होउछ गुड़ चिनी गुलकंडी पानी दही दरकार तुम हां देखौ तुमते So you were expecting that I will become a Korea sita dine choice khana bori habu au garam dine zara zara bori soibu right तोते केते थर कहली बा उड़िया को ए तोरे खुशीटा मो आखी रे जाउनी मु से कथा कहूनी रे तोरे छोट छोट खुशीटा तो कोई भविष्य रे को विराट बड़ क्षति पहुंचे मु सेही कथा भाबुछि खाली तो पाई नुहरे तोरी ए नूतन पीढ़ी मानक मध्य पाई मु चिंतित सब बेले जानिछु आगो काल रे आमे जते बेले छोट थी वर्ष का 12 मास 6 टी ऋतु केते सुंदर हम अतिबाहित करूथु से दिन काहे से बेड़ आउ काहे सबु सारी देलणी रे तमे सबु सारी देलणी you know saying this is the problem माने एटा ही problem तमे मूर्ख लोको मो सब ठीक कहले पाठो साठो न पढ़ले जा हुए इतने तमर किसी भूल नहीं ओके जे just tell me one thing मो जदी मो घर भीतर एसी लगे बसली दिन से रे घरे बस खेते दूसरा होला ठीक कथा कहली रे बापा और तो पाठो साठो घर सुनो अलप बुद्धि की अलप ज्ञान तू तो कोन गुटा नठरू पाठ पढ़ी जाई what oh shit that is not lantana that is a very beautiful study full of luxury that is London औ हेला तोर से लंदन हेला अरे होय तोर जे लंदन रे तो पाठ पढ़ी आई मते दिके बुझाई दे ए छोट कठोरीटा रे तोमर कोन गटे एसी लगेई दउछो ये मानो पूरा हिमालय ए मु थरे पसी गला करबू पूरा हिमालय पर्वत बरफ ए होय रे सेटा केमिति ठंडा हेउची मते के बुझाई दे बुझा I can't explain say first of it go for Gura. Let me explain. Babana, first thing, then था भीतर condenser and frame आसी. ता भीतर देखी तो खबर आसुची. तापरे my God, ठंडा ओला ठंडा पवन. भाई, कोन कहि? ते ठंडा पवन जाई कठोरीटा को तुमरा ठंडा हिमालय करि दउ. हाउ मु बुझिली हेले मते आउ गोटे कथा बुझा ए जे हम बाड़ी पछ पारे गोटे जे बाक्स लागि से बाक्स भितरे गोटे पंखा खाली घिड़ी हे बुलुची सेतिरे कोन भारुची को ग्यास भारुची मते दे बुझा मु जानी आ जानी को जानी जी हां कोन सेटा कोन KFC KFC
देख ताकू देख हां हां पचार मोबाइल पचार हां ए आजि कालिया तो सब मोबाइल ना कौन है ना काली मोबाइल टा भी कौन होची अरे पासांडो सेटा केएफसी नुहरे सेटा सीएफसी I know that I know नो ए आगर तो कहू नथिलु फ्लोरो कार्बन I know that actually mo mind रे हैंड रे तो कॉल ए सुन से ग्यास हम पाई केते विषाक्त केते हम मानकर से ध्वंस करिछु तू जानिछु तू जानिछु हेले तते मु आउ थरे मने पकई दउछि या प्लीज हम पृथ्वी रे जो ओजोन स्तर नाही जेडा कामे पे ओजोन लेयर से हम मानकर सूर्यर आसुथिबा अति बाइगण रश्मि अर्थात अल्ट्रा वायोलेट रे को हम पृथ्वी पृष्ठर रक्षा करछि किते तमे माने सब सीएफसी गैस रे जानिछु कोन करूछु से ओजोन स्तर को सब छोट छोट क्षुद्र कणिका करि देई सारिलणी रे जहा फल रे हम मानकर सब एई सब बाग सब आसुची तमको होसी हां तू तो लंडन राइट सियाडे ओजोन स्तर नाही अरे जानिछु सेतिग्रा कोन होउची अरे केते बेले बुझिबो विराट बड़ बड़ गछ सब काटी तयारी कर दउछ कोन ना अपार्टमेंट बड़ अपार्टमेंट होय रे केबे बुझिबो ए जे मोबाइल चलाउ कोन ला मझिर भाला 2G 3G 4G एबे कोन गोटे आइलानी 5G अरे केते पक्षी मरी गले रे ता भाई तुमरी शौक पाई रे तुमरी विलास व्यसन पाई बिचारा पक्षी गुडाकर जीवन गला रे थरे भागो थरे चिंता कर रे बेळ थाउ थाउ सुधुरी जाओ जानिचु आ फल रे हमर अमल वर्षा ठीक समय ठीक ऋतु होउनी खरा वर्षा शीत दिने खरा दिने शीत तो वर्षा दिने खरा सब ऋतु राजा परिवर्तन घटुची जानिचु आमे जते बेले पिला बेले थी एते छोट छोट थी ठीक भाद्रव आश्विन मासरे आमे सब पर्व पर्वाणी बुलिबा को जाउ पर्व पर्वाणी सरू सरू कार्तिक मास आसी पहुंचाउ इरो पापा लो की शीत सिहे मो मने पड़िला बेले कि मो देह मुंड कोन हे जाउची ए आमे सब शीत धाउ रक्षा पाइबा पाई आमे सब बुधुड़ी तळे रेजे तळे गदी तळे आमे सब जाई कुकुड़ाई बसु सेंती कोन निया कहउथलो आज काली तुमे सब जे कहउछ पोर्न फायर हां से सब भी करूथलु आ वर्षा दिन कथा कोन कहिबि रे नातिया आ कहिबु कोई पुत्ररु सब कागज गुडा गुचिरियानी छोट छोट डंगा करी एही मिति आमे सब डंगा पानी रे डंगा गुडा को खसोइथलु जा जा रे मोर भासी जा नौका मोर भासी जा महानदी रे नील तरंगे जा जा रे मोर भासी जा I don't like this. Like this. Oh. अरे Now I get it. हां तामाने तमे सब एंती पेपर गुडा नष्ट करतो राइट होय रे कते मु बुझौची ना पेपर गुडा को नष्ट करूची बोली कहउची रे करूथिलो करबी करूथिले जानिछु से दिन गुडा को मने पड़िला बेलकू हे प्रभु से दिन को टिके फेरई दियो रे से दिन को टिके फेरई खाई या सीता दे खाई अच्छा गरम बच्चे देजा डिसेंबर मासरे को धरण सीता होगा कथा और को धरण गरम होची अच्छा जी आम्ही आपणकर समस्त कथा बुझी पानी एवं समस्त कथा बुझी पानी ताको हृदयंग मकई मस्तिष्क रे सेट कर दे हां एबे आपण मते गोटे छोट कथाटे कहन कोन शीत दिने माने डिसेंबर বা জানুয়ারি মাসে जो धरण शीत होगा कथा एबे को धरण गरम होची देखो ना ओ हाफ पैंट टी-शर्ट पिंदी के बसची आ घरे मु एसी लगे बिथाओ का करबे अरे पासांडो जदी एई कथा प्रथम रे तू भाबी थांतु ना आज ए दशा हेई न थांता माने ठीक जदी 50 वर्ष तळरु जदी आपण माने सब ए कथा भाबी थांते ना आज एमिति हम पृथ्वी ध्वंस आरे को जाई न थांता दरकार थाउ कि न थाउ देखो समस्त को घरे दुई दुईटा गाड़ी अरे कोन हो अब चल चली जिबे आ चाली चाली जिबुनी आ कोउथिरे जिबो अरे गाड़ी रे
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାପା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ। ଗୋଡେ ଚକ ଲାଗିଥିଲା ଚକ ହଇରେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ହେଲେ ଆଜିକାଲିଆ ତୁମେ ସବୁ ସାହେବ ସାଇଆଣିଆ କଣ କାର ଗୋଟେ କିଣି ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଏସି ନହେଲେ ହବନି ଗରମ। ଆରେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଗାଡିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ପରି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଆମ ପରିବେଶକୁ କେତେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଜାଣିଛ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କଣ I know a little bit ମାନେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜାଣିଛି ଟିକେ ଜାଣିଛୁ ପୁରା ଜାଣିନୁ ନା। ଏଇଗୁଡ଼ା ତୁମେ ସବୁ ଆଜି କାଲିକା ଟୋକା ସବୁବେଳେ ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲ। ଆରେ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଟିକେ ଚାହଁରେ ଟିକେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚାହ। ଏ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ପରି ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ସାରିଲାଣି ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସିଡ ରେନ୍ ଯେଟା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ସବୁ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସବୁ ସୁଧୁରି ଯାଅ। ଓକେ ପ୍ରକୃତରେ ଦିଦି ତମେ ଠିକ କର। ଏବେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ନିଜକୁ ବିଧ୍ୱଂସ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉ। ଏଇ ଦେଖିଲେନି କି ଜେଜେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୋରୋନା ଭାଇରସ କେମିତି ଏତେ ବଡ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଲା କେତେ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କଲା କେତେ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଛଡେଇ ନେଲା ଆଉ କେତେ ପିଲାଙ୍କଠୁ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛଡେଇ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଅନାଥ କରିଦେଲା। अरे ଭଲ ଧନ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଆ ନିଜ ମାନଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନ ଭୋଗିବା କିଏ ଭୋଗିବ? କିଏ ଭୋଗିବ? ଦେଖିଲନି ଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରୁ କରୋନା ସମୟର କେତେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। ନାଟିଆ କେବେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଅକ୍ସିଜେନ କାଳେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ବୋଲି କେବେ ଶୁଣିଥିଲୁ? ଏ କରୋନାରେ ଦେଖିଲୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଙ୍କିରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲା ତଥାପି ଅକ୍ସିଜେନ ପଳେଇଲାନି। ଆରେ ଏ ସବୁ କାହା ମାନଙ୍କ ପାଇଲେ ଏ ସବୁ କାହା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସବୁ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ତମେ ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛ ଆମେ 2 ଜଣ ତ ବୁଝିଗଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଜେଜେ କହିଲ ତମ ପିଲାବେଳେ କେମିତି ଥିଲା? ଆମ ପିଲାଦିନ ହଉ ଆସ ଧର ବାସ ବସ ବସ मोर गाड़ी भूगोल पोथी पतारे पछे भूगोल पोथी पतारे पछे नथाउ तार नाटी छोट मोर गाड़ी छोट मोर
ପଡ଼ିଛି ଲକ୍ଷରେ କୁଣ୍ଡା ମୋର ମୋବାଇଲ ଖେଳିଛି ମୋ ଗାଜି ସହ 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 ବାସୁଛି ମୋ ଗାଜି ସହ 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 ବାସୁଛି एठी जनकु जनक प्रति समय भी नहीं बापा पुओ प्रति माँ झील प्रति स्वामी स्त्री प्रति आउ भाई भाउनी काहारी पाखरे एठी टिके समय नहीं सते जमिति एठी समस्त गोटे गोटे जंत्र पालटी जाइछो आज्ञा जमिति निश्वास नउथिबा गोटे गोटे रोबोट हाँ आज्ञा आउ कौन कहबी आज्ञा मोबाइल आमे विदेश रे अनेक बंधु को रखीचे हेले ए ओडिसा घरे गोटे लोक अछि से कथा भूली जाइचे हाँ भूली जाइचे आउ रहिला कोन पर्व परबाणी हेले जेजे आमे तो पर्व परबाणी पाळुचे अरण्य दिवस पाळुचु वृक्षरोपण दिवस पाळुचु राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी पाळुचु परिवेश सुरक्षा सबु दिन दिवस सबु पाळुच सत हेले ये सबु बा मोबाइल स्टेटस पाई अरे ये सबु मोबाइल स्टेटस पाई अरे महाराज कुआडे चललो करेंट आसी गला परा एसी टा बंद करिवा पई एसी टा बंद करिया पई जा हो मो नातिया टकाला थाले बुझी गला ना बुझी पाली दे हां अरे वर्ष को से गोटे दिन वृक्षरोपण दिवस वर्ष सारा नाही गछ लगेवा से गोटे दिन आसी दुई तीनटा गछ लगे दे दुई तीनटा फोटो लगे देले हेई गला कोनडा वृक्षरोपण दिवस बा बारे तुम मनुष्य पड़िया बा मते छिए जा 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 एसीटा बंद कर दिया फोन दीजिए बुझिलु केड़ा थाउ थाउ समस्त सुधरी जा काहे ना ये समय आउ आसीवनी वर्ष का 12 मास 6 ऋतु हेइछि काहे कि ना 6 जाक ऋतुर जलवायु को हम देह सुआ करबा पई हां हेले सेति को बुझिबा पई एमाने नाराज निजर विलास रसन आमोद प्रमोद पाई निजर सौग पाई निजर ध्वंस को निमंत्रण करूछ हां निजर ध्वंस को आज्ञा तुमे निमंत्रण करूछ अच्छा जेजे कहलो प्रकृति रे से दिन बहुत सुंदर थिला से गोटे छोट गाँ ता भीतर गोटे छोट घर आ गोटे छोट परिवार प्रकृति रे जेजे से बहुत सुंदर थिला अच्छा जेजे मते कहलो केमते हम कोन तरह से सुंदर दिन फेरी पाइबा अरे सबु हबो प्रथमे जदि आपण माने घर एसी को छाड़ी प्रकृति रे एसी कर बंचिबा चेष्टा करिवो ताहाले सबु किछि संभव हेई पारिबो आज्ञा सबु किछि संभव हेई पारिबो अरे सुधुरी जाओ रे सुधुरी जाओ निजर विलास बसन पाई ए परिवेशटा को तुमे नष्ट करि देई सारी लड़ी सतरे निजर आमोद प्रमोद भाई ये परिवेशटा दिन को दिन को क्षति पहुंचुछि
ସେଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜେଜେ ତମେ ଆଜି ମୋ ଆଖି ବୁଲିଦେଲ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲି। ଆରେ ଚନ୍ଦୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ତ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିଲ। Thank you very much. What a powerful message. मैं आर्टिस्ट को रिक्वेस्ट करी भी स्टेज ऊपर रहिबे एते सुंदर सुंदर नाटक को आपण माने आउट के दुई हाथ ऊपर करी जोरदार ताली दे दियंतु। आपण जोरदार ताली दबा को मो मंच को आमंत्रण जणाइबे जस्टिस नायडू सर को, श्री मधुसूदन दास सर को एवं डॉक्टर संदीप पटनायक सर को जे आसीबे एवं इंडीड शुभंकर म्यूजिक रे अछंती जगदीश एंड सूर्य मो समस्त को ताको पूरा टीम को इनफैक्ट स्टेज को इनवाइट करे को चाहिए भी एते बढ़िया नाटक को प्रस्तुत करबा पई अनेक लोकंकर एफर्ट्स रही छी, समस्त को हम रिकॉग्नाइज करबा, धन्यवाद जणाइबा एवं मंच को स्वागत करबा। मो रिक्वेस्ट करबी डॉक्टर सुतपा पति को मध्य किसी प्लीज मंच को आसीबे टू फेलिसिटेट आवर amazing stars here and Mr. Patra sir ko madhya. And तांकर ए सुंदर प्रयास पाई, ए सुंदर उद्यम पाई, सुंदर मेसेज पाई आमे तांको पुष्पगुच्छ सह धन्यवाद जणाया को चाहिबो। जमा देखि कि लागिला नहीं कि दे आर नॉट ट्रेन्ड एक्टर्स, अपन माने बहुत बढ़िया कले, बहुत सुंदर एंड मैसेज was really heart touching, overwhelming for everybody. Thank you. Indeed, some of the Sangeeta Mahavitra are students, so now I know. Okay. आर्टिस्ट मान परिश्रम एवं ये प्रचेष्टा को आम स्वागत जनइबा और अभिनंदन जनइबा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग टूर्स एवरीवेयर। एंड दर्शक बंधु एति सुंदर नाटक देखिला परे आज ये दिन ये समाप्त है नहीं सरीबो गोटे आउ गोटे सुंदर डांस परफॉर्मेंस सहित ओडिशार गर्व ओडिसी नृत्य आज दिन में जदि आम न देखा ये कार्यक्रम ये समिट संपूर्ण हो पार नहीं। ए नाटक पर आम कलाकार जे ओडिसी नृत्य आपण सामने ये प्रेजेंट करेंगे तांको इनवाइट करी प्लीज स्टेज को पड़े आसबे। थैंक यू वेरी मच। मोहन मुरती
लो